might come and get your way. So just try it. I got the motherfucking punch up. I might come and get your way. So just between tulips, I be where the tulip is. Too legit, I might eat it, you to this. Even though I'm new to this, kinda this intuitive. Got the crudest vest, pulling fest, full of rap. Look with this, I might need a sushi set. Hey silly man, I'm more than a milligram. Getting sticky hand in a minivan with pretty fan, getting chili stand. Pray for you like Billy Graham, pulling puts out a crummy man. I can do what money can, synonyms, honest city man. Same race, we talking about, ain't game you round out. Bang bang with a cops out, Wu-Tang with a backdrop, click clack when the pops out. C'est la vie, let it be. Who them Batman that I be? You ain't got man of Marie, you ain't got guns shooting sprees. Look, rap game in my up, I just set it off. Judy, Judy, but booty, no manna, but buena. Fee, five for foodie, no manna, got goody. Judy, Judy, but booty, no manna, but buena. Blah, look, now set it off. Blah, look, now set it off. Blah, look, now set it. Hold on. Y'all be spewing peppermint to stay relevant. Y'all ain't melanin, it's evident. The kind of dissonance is plain you're ignorant. I fly among the pelican like a colored pelican. Paint the image that I pen, I be swerving on mine. I wash my utensils, my pen and my pencils. You'll write on stencils, my influences honor my medic expenses. Ooh, they spare that kid front shit long. And I'm making these baller songs and I'm butted like Iverson. You on the court side of the lawn, these benches I'm picking up picket fences. Like CB canceling Kansas. I write these things like answers while I'm measuring messages. Like the road Damascus, might even pass the piss. All I take my steady pace, now call it a vivid consensus. Rap game in my ear, but I set it off. Set it off. Right up on the floor, someone tell me what's the safe word. What's the safe word? You know that I been that bitch, don't call, I'm Medusa. WSS, plus you ain't doja. Mama, you bitch, don't speak when I'm closer. Set the bomb off and push like a soldier, And I mean, I told ya, no, you can never be major. The bigger me, I'd rather be the better than the rather be my ball and my battery lit. Tell me who these are. Put my track on top, on the ball track, that the graph can't plot. Levels to infinite, you can measure my spot. Lil' bitch, what you wanna BK dot, You ain't never been that shit stop. It's hip-hop, bitch, I don't do TikTok. Big boss, you could call me Rick Ross. Trigger on the gun, you done, I'ma set it out, blow it off top speed. Flames to the ether, blows to the brain, there remains no features. Hands on a cleaver, smoke me a reefer. In the street plan, but they call me the reaper. It's that you thought that I'm even the D-stars. Now I'm leaving the speaking with this bob or a headshot like Sidney Prescott. Yeah, you ain't never been that top breed. I'm boss, now they wanna cop these. When I'm so with the low, won't stop me. If you wanna get high, then pop these. Life is a keeper, blood on my sneakers, now what's the procedure? Wanna know my body count, but he don't know he only when I drop these. Say what? Judy, Judy, but booty, no manna, but buena. Fee, five for foodie, no manna, got goody. Judy, Judy, but booty, no manna, but buena. Blah, no, that's it. Cause baby, don't you want me for life? It's all good, it's alright. Cause baby, don't you want me for life? Yeah. I used to cut classes, my little miss without a clue and no asses. Didn't have a number I could phone. I was in my slumber, no cologne, but melodies the wonder. All my blunders I atone. What's a little doing all by herself, man? Crafted by desire, had no makeup by the shelf. We were built the broken dreams, built the broken homes. We were built the broken hopes, had to open, so I grow. Now we unbroken. Cause baby, don't you want me for life? It's so good, it's alright. It's alright. Cause baby, don't you want me for life? Cause baby, don't you want me for life? I love it when you smile, seen you struggle as a child. Mama told you stay a while, but love don't mean you shouldn't fly. Mean you shouldn't try. Love don't mean you gotta give yourself away, it isn't right. Baby girl, ooh girl, I beg you're confused. Don't know what you wanna do. Ooh baby, just let it loose, though. You will let it go. Let it go.
just like an alien. No fit these homo sapiens, they shake it subterranean. No grit, look at my radiance. I'm lit Mediterranean. I'm big, I'll make them Dane again. I'm Maven, I've been patient with this shit. Don't need no audience for this, it's not a stadium. There's artists beyond craniums. My talk is too big gain again. My fate to elevate, there's no abating. Now I'm sane again. No slating causes pain again. Can face me, more than digits indicate me. I'm still legend. Underrated, of course. You're jaded, no force. Bitch, I'm a dark horse. Magnificent art souls. I'm not petty. I'm still ready to spark fools. Won't be going back and forth addressing this. Now I ain't really gotta say shit. Zip that lip and skip that shit. Just hit that switch and flip that game. Don't skip that pain. I'll strip that rhymes. Don't trip this time. Don't quit that grind. This is your prime. Uplift your mind. No pseudo roles. Man, screw these shows. We stay bold. Pursue our goals till we grow old. The learning never stops. The learning never stops. The learning never stops. Never stops. Can only focus on that shit that pays off. Tell all of them haters lay off. To the world we ain't never gonna stop. To the world we ain't never gonna change. Lost talos when I read Beyonce. But I came back with the power. We put in work for hours. Now we take what is ours. Power. I make it rain again. Tell them bitches back off. This my rain again. No constraints. We keep making amends. Yeah, these skills are top notch. We don't alter the blend. No loose ends. I'm 100% content with it. No limits, bitch. I'm here to resent. Cause I came back with the power. We put in work for hours. Now we take what is ours. Power. I got the top view. I got the top view. I got the top view. Yeah, these skills are top notch. We don't alter the blend. Accelerate into the speed of light. We got it right now. There's no debate as long as we're alive. We'll over right now. Oh my god, Clifford. मेरे को वो है जो भी तेरे को सोबे या ना सोबे I go to every corner of the country and do a show there अगर मुँह खोले तो तू बे पूरा दे दे तेरे मुँह में हो में I'm from a south side certified, but it's in a flow. Na party with a ready konda one man show. Na podu one light feet la tic tac toe. Bandini ed photo. A kya bolte मामलो? खेलेंगे game अभी मुझे थोड़ा ध्यान दो. एलारो खाये तू कि मेरा अभी नाम लो. On tablet. I come from the land of the abyss. In a place where the sun rise against the rain and the storm. It's all written. I'll take on the roles of my forefathers' mission. From old traditions, we share the same visions. Until we perish, there's no rhyme without a reason. The world beyond is dark. I ain't never been that seen out. Look at that revive, bitch. I don't sleep while I'm at that green. I've been that bitch. These notes can't defile. Feel like this, I flow through sea miles. Whoa, and I mean that I'm G too easy. Hitters at the back can't see me. All of them balls fell flat on TV. If they won't beef, tell the bitch come meet me. Do it for the minimum tip to the fee. I never gotta pay for the drip. We freestyle dashing ahead, but you know it's never on a dirt track. Everybody go mad, go crazy. Ayy, we blaze. Power still double A's. From tribals to the nation, then we head to outer space. You OG, now the bitch can't beat me. Now yo me with a coat, come greet me. Hop on top of the plane, retweet me. Bite my flow, but it still can't read me. Be me, anytime sees me. They tryna breach me, bitch. I'm not a clerk, don't leave me. I put in the work like Riri. I don't give a fuck about big shots, it don't hit me. Ha. When I'm stepping on toes, motherfucker, I ain't repping these hoes. Silicon shapes, I ain't feeling those fakes, no sending them. I ain't like those, like nah. We be steady rolling. We come from a place of struggle, everybody knows it. We levitate. From the heavens to the grave, man, I swear I never did it for the spotlight. Cause all I ever wanted was to live like I'm alive. Now they wanna know how the fuck I'm always putting on good show. Every day you know I keep it on the low. Cause I ain't tryna navigate these foes. Now they wanna know. Bon ki broer, ang bon ki broer, klam bon ki broer, bodo ik vind. Here as the first match will
indeed start now. Right here, right now, we are ready to kick things off. In a big way, with the double plane path, like you're saying, a very little awkward one to start things off. Does create some interesting aspects in terms of where people are dropping here. So it's a little bit harder to get a grasp of things here on day one for Rondo, especially for teams. I think most teams would prefer the singular plane path day one personally, just so they can realize exactly where people are dropping. This throws a spanner into the mix, right? It really does change up where a lot of players are heading off to. But to start with, looks like there's a test track as well as New York. This is a lot of players in the area. Okay. Aquí pana ta, dito. Pop it off here as well. We got a hot drop already on our screens. There's scrapping going on through. Of course, not as deadly as it once was with those recall towers on board. Remember that you can get your teammates back up by getting to those recall towers, and that's what a lot of teams have been investing in right now. Arc scrapping back and forth with VP. The hit for me. Can't get an Aiden through there. Steps out though, and the spray is still good. Swaps to the micro Uzi for it, and Arc are running rings around VP. This is a great start for them. I'm still wondering what's happening over in Test Track though, because that did look pretty hot. Yeah, cheesy right, Truly Burst. Yeah, there's a lot of teams in there. Split dua jo. An interesting start. Vet dah. English stream ha le. Boleh busy apa vet dia. Busy as vet le. Truly Burst tam busy jo. Yeah. Insane player. He actually is insane. I think Arca had a bit of an upstart from their region, doing some pretty fantastical stuff already. Namu POV jo ma. Truly Burst lang vet sa. अच्छा नहीं मिला था, इसके कारण ये दूसरे चांस की तरफ अपने आप को लेके आया, लेकिन ट्रू रिपर्स थोड़ा सा सैंडविच सिचुएशन में लग रहा है कि फंस सकते हैं, क्योंकि राइट साइड से भी इंडिया आधी से दिंगा है चू मिन स्पेक्टिव देख सकते हैं कि जो कि फिलहाल लूट पे फोकस कर रहे हैं, और ट्रू रिपर्स PUBG मोबाइल ग्लोबल से PUBG लोगों को छो मगा PUBG से लो अच्छी खबर 3 ग्रेनेड की होके we were party की थूम तो ही मा मा दिंगा का कमेंटेटर be ya चो मा पे चाइना हो चो मा पे बा मा या ये की टीम जो इफ्तार वो भी डाउन है, जिमी वो भी डाउन है, और अब अलायंस के दोनों प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद है, और ऐसा मुझे क्यों लगता है कि जो प्लेयर टावर पर गया था वो डाउन हो गया। अब यहाँ पर अलायंस उनके लिए दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, पर टर्नी के बहुत करीब आई, टर्नी के माजी मौजूद है और सीधा वो नीचे फाइट लेने के लिए चले गए। पंप शॉटगन, माफ करिए, 12K का बढ़िया इस्तेमाल, आईजीसी का एक लौता मारती है। यहाँ पर वो रिवाइव नहीं करना चाहते, क्योंकि सामने से कॉल आया होगा कि प्लेयर्स की एचपी बहुत कम है, आप ये फाइट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर हमने पहले भी देखा है रावण की एक प्लेयर सिंगल एचपी पर भी क्लच करके जाता है अपनी टीम के लिए। स्पोर्ट्स एरिना क्वालीफाई ले होगा, करना है तो अभी करना होगा, अगर वो रिवाइव एग्जीक्यूट हो गया तो फिर बहुत ज्यादा देरी हो जाने वाली है, और उसके लिए लूट ये हेलो चिपाजा इस बात को शायद वो समझ चुके हैं कि यहाँ पे फाइट को कंटिन्यू करना वो रिस्की हो सकता है। बैक हैंड पे गए, थोड़ा सा रिकवर करना चाह रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सामने के पास, वो शॉट लेंगे और काफी बेहतर वो नतीजा यहाँ पे ढूंढना चाह रहे थे। सामने से डैमेज बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ सेकंड का डिले, और उसी के कारण उनका भी नॉक काफी आसानी से निकाला जाएगा। मुश्किलें हुई हैं, और ये कि जो प्लेयर्स हैं वो जरूर यहाँ पर खुश रहने वाले हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जरूरी ये मुकाबला है उनके लिए। अगर गॉन्टलेट से आप क्वालिफाई करके अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं, और वहीं पर ट्रू रिपर्स थोड़ा ईएमपी जोन में ये प्लेयर्स फंसे हैं। अभी तक जो लूट है वो इकट्ठा करी जा रही है, रेगनम के जो खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर रेगनम के वाइल्ड को देखा जाए, फिनिक्स ने 0 किल लाए लगता है कि क्यों लमा उनको पता है कि वाइल्ड एग्जैक्टली कहां पर मौजूद है। जली है जो अपनी टीम से काफी ज्यादा दूर होना बनता भी है, रिकॉल टावर पर वो प्लेयर जा चुका है। पर ट्रू रिपोर्ट्स जो वो सोच कर आए थे कि टेस्ट ट्रैक पर बहुत सारी फाइट मिलेगी, बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो मिलेंगे, ऐसा हुआ नहीं उनके लिए। फर्स्ट मैच बॉल होएगा ये जो ना मोमेंटम थे खत मतलब स्टार्ट ही लो लेवांग जा खुद लोंग कोरिया चाइनीज से मौज पहले लोंग कंप्लीट बॉल थे ओ जी सा का सोल जो है कि ओले से चे इंग पहले 3 स्टेज तक जी हो वांग लेकिन उसके बाद
Black Roy Last day, last day, last day, last day जो ना सर 200 कुछ मीटर की last day रोटेशन की की आवश्यकता है, suas. जिसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने सर्कल को ज्यादा महत्व दिया। Gay फाइट वाल था अभी जो बिल्कुल last भी day अपने ना सामने इन्होंने 40 रखा नहीं plus collect अपॉर्चुनिटी do कि ba इस he पहले wan स्टेज la में so फाइट की kan. तरफ जाए, लेकिन इन्होंने second सर्कल को ज्यादा यहाँ पे Sini fight dong ध्यान में रखा। hala ईस्टर्न dong साइड से वो kan. एंट्री बनाई जा रही है और Tai चलिए गेम के dong सिनारियो cho. में भी कोई टीम है नहीं, तो आसानी से इस पहले रोटेशन को भी अंजाम दिया जाएगा। और ये सही निर्णय भी रहा है ट्रू रिपर्स की तरफ से, क्योंकि वो जोन के अंदर थे भी नहीं जैसे आपने बताया, और जेली वो भी रिकॉल टावर की तरफ जा चुके थे। पर ये एमपी जोन है और वही इसका बोलते हैं खास फायदा यहाँ पर होगा नहीं, यानी नुकसान नहीं होगा ट्रू रिपर्स का, है क्योंकि ईएमपी जोन जिससे अफेक्टेड होती है वो गाड़ी इनके पास नहीं है, तो आसानी से यहाँ से जो प्लेयर्स हैं वो भी निकल जाने वाले हैं। इश्यूज बिल्कुल नहीं, पर DRX वो Din भी pare बहुत khat क्लोज में इन्फ्लुएंस रेंज, उनको भी आप आते din हुए pare देख khat सकते keu हैं। CMZ le na मल्टीपल official टीम्स हैं ho. जो ट्रू रिपर्स के आसपास मौजूद है, सेंटर ऑफ द सर्कल जाने की कोशिश रहेगी। Oh, geek ho गोल nam की जो top फाइट kin है ho वो na. गीक के साथ शुरू हुई। गीक एक और टीम जो सीधा गॉन्टलेट में मौजूद थे पर अपने आप को ग्रैंड फाइनल्स तक नहीं पहुंचा पाए। Nietas. Nggak predict nanti top 3. शुरुआत उनकी अच्छी नहीं हुई। DRX को इजी हाइड्रो को उन्होंने चलती गाड़ी से गिरा दिया, और हाइड्रो ही तो Weibo. मेन प्लेयर्स माने जा रहे थे। रोटेशनल DRX are easy. सबसे पहला खिलाड़ी उन्होंने अपना गवा Sedom दिया। si Finland do. और ये बहुत बुरी खबर रहने वाली है। अच्छी खबर ये रहेगी कि चली वो सर्कल के बाहर है, रिकॉल टावर के आसपास वो पहुंच चुके हैं, आसानी से वो फिर से हाइड्रो को अपने पास बुला लेंगे। लेकिन वो जो स्टार्ट की हम गुंजाइश कर रहे थे कि पहले स्टेज के आसपास आप बिल्कुल भी अपने ऊपर नुकसान नहीं करवाना चाहोगे, वो नुकसान हमें यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल चुका है। दूसरी तरफ लॉर्ड उनकी भी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल ट्रू रिपर्स बहुत पास से गुजर रहे हैं। इंफॉर्मेशन है कि सामने एक पूरी स्क्वाड है, उस एरिया में भी अपने आप को लेके जाना यहाँ पे मुश्किल है। आप लेफ्ट साइड जा नहीं सकते, सामने ऑलरेडी और मुश्किलें आपकी आंखों के सामने। ऐसे में ये बचे हुए दो प्लेयर जो सर्कल के अंदर है, इनके लिए भी ये रोटेशन बहुत मुश्किलों से भरी हुई मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मिनिमम कितने सारे Weibo, प्लेयर्स True अभी कुछ समय Reapers, पहले DRX. थे। ऐसे में वो हार्ड कवर्स को टारगेट करके जाना मुश्किल है, क्योंकि सारी की सारी ये वाला तो इमोशनल वाला हो गया भाई। जिसमें खेलना नहीं चाह रहे, Sorry pa और bang इसी के ya. कारण फाइट की Upayi ne. पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा 12, बढ़ती हुई पहले 14, स्टेज पे। 15. पर मैं सोच रहा हूँ रामन की ट्रू रिपर्स ये जो निर्णय उन्होंने बनाया है कि ज्यादा लूट इकट्ठा नहीं करेंगे और सीधा Mereka lang pernah सेंटर shy ऑफ द dia. सर्कल जाने की कोशिश रहेगी, Hari उसमें dia तो ko आपने ke कामयाबी ball हासिल sa कर ली है, पर alaw. लूट आपके पास नहीं है। हर्ष के पास एक Kita ग्रेनेड satu मौजूद है, low दो yang फर्स्ट एड है, masuk बूस्टर्स एक भी उनके Fight पास je नहीं sok है। yin leo. देखना है कि क्यों लमाओ उनके पास कितनी लूट मौजूद। जेली वो कहां पर है? इसी बीच हाइड्रो रिकॉल को मांग लिया हो ना, और रेगनम टेस्ट ट्रैक पर उनके साथ मुलाकात नहीं हुई, पर अगेन रेगनम के अगेंस्ट आ चुकी है ट्रू रिपर्स। हालांकि दोनों ही टीम को पता नहीं है कि ये टेस्ट ट्रैक में भी आमने सामने थे और अब भी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। लॉक्सी गाड़ी की आवाज सुनी है, प्लेयर्स को आते हुए देखा। सवाल अभी भी वही है कि क्या इतने कम लूट में ये सारी चीजें अभी भी संभव होने वाली है? Woi tu. जोन का शिफ्ट है, ट्रू रिपर्स डेड सेंटर में मौजूद है। बाकी जो Sangat center जोन amko. के बाहर आसान होगा उन दोनों प्लेयर्स के लिए जोन के अंदर आना। एग्जैक्टली वेस्टर्न साइड, बट थोड़ा लेट आना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी Oh, mini mazana center hai. फिलहाल एजेस पे हर्ष रोटेशन ले कर स्प्लिट रोटेशन है। फाइट की पॉसिबिलिटी रही तो एडवांटेज दोनों ही हाइड्रो तरफ इनिशियल टाइम पे रहेंगे। बैकअप जिनका पहले आएगा Kita वो ikyam kisi tu dio. ज्यादा फायदा होने वाला है। हर्ष एकदम कार्यान की आंखों के सामने ड्रॉप क्लैश भी आप देखिए एक साथ ली गई थी, वहां से रोटेशन की Boleh जब बारी आई Arizi तो va फिर भी pemain वो दोनों ही टीम एक Cika, साथ सेंटर पे आ Arizi. चुके। सोच बहुत ज्यादा मिलती जुलती VP है और दोनों ही Batas टीम्स के Pro लिए, वालों ने लेकिन बैकअप की जहां तक बात Buat करें वो bang. बेटर चल रहे हैं अपोनेंट के पास, तो Buat ट्रू क्या रिपर्स हुई? यहाँ पे Training फाइट dia बिल्कुल भी अभी नहीं करना चाहेंगे। बचे हुए दो खिलाड़ी जो अभी वेस्टर्न साइड से रोटेट करके आ रहे हैं, वो जैसे ही इनके आसपास आएंगे फिर जाके वो फाइट की शुरुआत ट्रू रिपर्स यहाँ से जरूर करना चाहेंगे। दूसरे स्टेज में Pau भी हलचल commentary कुछ in हद तक bolo देखने को Ricky मिल रही है, bhai. लेकिन No तीन bro. नाम है जो कि अभी He भी get new सर्कल के balls बाहर yahan. चल रहे हैं। दूसरे एंड पे DRX जिनकी शुरुआत Sampai अच्छी hari हुई थी, ini उनके ऊपर dah. भी अटैक What किया गया, उनके party पहले his खिलाड़ी को lim नॉक किया han जाएगा। zong do sa रिवाइव की hono. पॉसिबिलिटी वहां पे बहुत ज्यादा रहेगी क्योंकि दोनों ही टीम्स Aisa ni फिलहाल do अपने sa अपने हार्ड nante. कवर्स Ma में hoi इंतजार dong. कर रहे हैं। और देखिए काफी सारी ऑडियंस होगी, वो सोच रही होगी कि Camera बाकी and सारी जो sponsor हो, teams हैं, जो camera. fights हैं, Black वो इस Roro perspective umi में solo जो versus नहीं squad है, तो board. उनको बताना Ise चाहूंगा run. कि ये जो POV है, ये जो पूरी स्ट्रीम है, ये Ise. India audience ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको Roar tu Spurs ni. का perspective Roar भी ada देखने nama lo, को ha? मिलेगा। Tu ni sulung hela और lu अभी mengi के roar. हमने DRX के जो Sorry, एक abang जो sam हमने bang, में man. देखा था, और रेगनम के वो प्लेयर्स थे, Roar slot उनको वहाँ 25 पर at sangat to थोड़ी watch. चोट जरूर पहुंचाई। ETSH काफी करीब में है ट्रू रिपर्स के। जली और हाइड्रो एक साथ, क्योलमा Nun एंड lui हर्ष nu वो sini एक na साथ है। to dia. सेंटर ऑफ द Kadang सर्कल अभी भी ट्रू रिपर्स को उन दो प्लेयर्स के पास Coba है, tu पर ni जैसे मैं sulung कह hela रहा lu. था कि लूट की Kayak कमी थोड़ी IPZ हो aman सकती kan है, dia पर जली dia. को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि लूट की कमी कहीं से भी होने वाली है। नो डाउट वो एक ग्रेनेड है उनके पास, पर अभी Pasal भी solfa और vai, sob dia स्मोक्स kau को izin ni खोजना don. होगा।
चलिए 2 मोलोटॉव्स यानी कि हाइड्रो हैं जिन्होंने अपनी सारी लूट उनको दे दी है और ऐसा लगता है कि जली की जो अगली रणनीति है वो ये है कि कियोलमाओ और हर्ष के पास वो तुरंत के तुरंत पहुंचे। अगर वो डाउन हो गए तो हर्ष होंगे जो उनको रिकॉल यार कर ते सकते Aussie हैं। तो कोई ना माफ करिए, सोन वो जो हाइड्रो होंगे जो उनको रिकॉल कर सकते हैं। Sweepers का सोन जो रास्ते की है तरफ और जाने नहीं के कोई साथ सोन जो वहाँ पे दो गन फाइट टीम्स हैं आवाज जिनके का सामने सुन सिर्फ एक लो गुजरने उसके की जरूरत पड़ने वाली है और मुझे लगता है उसकी रीड यार हो चुकी है और इसी के कारण जो बहुत तेजी से वो अपने दो प्लेयर्स Tempat के पास Aussie सेंटर ऑफ ना द satu. सर्कल के बारे में जो Bukanlah जाने की सोच रहे थे Rupa अब sana. रुक चुके हैं। अगले Tempat स्विच yang करने का blood इंतजार iba किया na. जाएगा ताकि ब्रीदिंग स्पेस उन्हें वहां पे Zi मिल सके उस undom रोटेशन के माध्यम Kartu से। down नहीं होता ये अच्छी होई सोच GP हो होई सकती ला है क्योंकि किसी अगर तो आप लोला है ना एकदम से सर्कल के सेंटर की तरफ जाने का ट्राई करोगे तो एजेस में Rupa आपकी मुश्किलें sana बढ़ाई जा M4 सकती le है। ne bola जस्ट sana वेस्टर्न एज sa से ake. गीक की भी टीम है जो कि BMIC. इनके बहुत ज्यादा पास से गुजर रहे, एक स्प्लिट रोटेशन इनके एंड से De हुआ। bilo मुझे de नहीं sau लगता है chui कि अगले स्टेज gun का fight अपने di वाला bang. सर्कल यहाँ पे किस तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल जाने वाला कोई है। उठ लंग चुके पे हैं, प्यार इन्हें भी को पता वाला है कि अच्छी जल्दबाजी है करने की कोई आवश्यकता नहीं है और सर्कल का शिफ्ट आप देखिए मेजी नॉर्दर्न साइड जाता हुआ। ट्रू रिपोर्ट्स के दो Sigang खिलाड़ी एज पे और दो खिलाड़ी sama सर्कल के बाहर। अब ऐसे में सवाल वही कि किस ओर से जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या वो Hydro सेंटर le करने वाले या पहले Hydro फाइट le की तरफ kiolo जाना ba ko एकमात्र thana रास्ता। madan. पर अभी तो वोटिस प्रो उनके साथ वो फाइट की होने की संभावना Hydro थोड़ी सी ज्यादा है। Hydro Start ले ले. Roa इसका जो बहुत क्लोज Zanin है तो recall में लो हर्ष उन्होंने डैमेज बहुत ज्यादा दिया है, गाड़ी ब्लास्ट होने वाली है और होया और हर्ष उन्होंने बिल्कुल समय नहीं गवाया और हर्ष वो होंगे रोज सत्रो उनके जी खाते काम में जाता हुआ ये पहला फ्रैग। बढ़िया इंसिन अपन ना संगा छुट्टे ना जो मामू साथ भी मिला है वोटिस प्रो। वहां रुकने का कोई और मौका उनको दिया भी नहीं गया और जहां पर जा रहे हैं वहां पर पहले से ही जो ये के खिलाड़ी वो मौजूद है। जोकर उनको आप देख सकते हैं, साकुरा गाड़ी लेकर वो सीधा माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश। VP एनआरजी उनकी फाइट की शुरुआत हुई है, दोनों तरफ से किल बंग है वो आता हुआ। बट इस पॉइंट पे ये जो स्लैमिन किया गया है व्हीकल से बहुत ज्यादा बेहतर, लेकिन हाइट के एडवांटेज में खिलाड़ी अगर ग्रेनेड या एंगल मिल गया तो मुश्किलें बढ़ाई जा सकती है। जोकर ग्रेनेड करना चाह रहे थे अपने ही ऊपर, बहुत ज्यादा डैमेज, ये रिस्की कॉल हो सकता था उस पॉइंट पे, लेकिन खिलाड़ी बैकलाइन पे चले गए तो वो इन्फॉर्मेशन की कमी हो सकती है। वही वाह ARCU ये फाइट उतना आसान लग नहीं रहा है। एट द सेम टाइम फिनिश स्पीड मानो एकदम से चलना स्टार्ट हो चुका है। जो सदर्न साइड में मल्टीपल प्लेयर्स को हम देख रहे थे उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई, जिसमें उनका भी नॉक निकाला जाएगा। साकुरा स्मोक के कारण वो जो एंगल डिमांड करेंगे मेजी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, बट एकजुट एक साथ रहना वो रिस्की हो सकता है। बैकलाइन से वो कवर भी आता हुआ फिलहाल हम देख रहे हैं कि तरफ से जोकर उनके ऊपर स्प्लैश डैमेज, काउंटर ग्रेनेड, स्प्लैश डैमेज, लेकिन नॉक के लिए काफी रहा नहीं है। और जो बैकलाइन पे अगर आ गए तो मुश्किलें बढ़ेगी, बट पहली टीम एनआरजी वो इस मैच से 16वें स्थान पे बाहर हो जाएंगे। और क्या किसी ने भी रिकॉल का इस्तेमाल नहीं किया वहां पर? ये तो दिक्कतें हुई है, पर चलिए उसके बारे में बात करेंगे। पर दोनों साइड से जो ग्रेनेड्स हैं वो जाते हुए टर्न के वो भी आगे चले गए और उनको भी डाउन कर दिया गया। और अब साकुरा जो ऊपर बैठे हैं, एक सिंगल ग्रेनेड ये हो हमें सोनो ही ले हुए यहां पर किया जा सकता है। वो डाउन हो गए, किलो गया ये काप तो कंसिस्टेंट होगा चाहिए पहले वही तो फर्स्ट को डाई जाता हुआ pin chúng pa ni angle ni hoi ba le pin ya boi lo जो इस मुकाबले से बाहर हुई और ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं पाए। मात्र 2 फ्रैग्स निकाले उन्होंने इस मैच में। शुरुआत खुश और अच्छी हुई नहीं है इस राउंड। recall थे लो बताया था ये उन्हें कॉस्ट करेगा आने वाले मैप में, जहां पे थोड़ा रिकॉल हो गई ना अपने आप को करना चाहोगे। कितना ही चैनल कॉल थे इजाद भी है ऊपर की तरफ चले गए, नी वे है बचे हुए खिलाड़ी बैकलाइन पे थे, वो सपोर्ट सही वक्त में आया, लिमिटेड सही वक्त में आया, इनिशियल रोंडो आयो करके गया और इसके कारण क्लासिंग हो ममा तो ना ओ किसी तो होता बोला जो 2 खिलाड़ी है मेजी अभी तक एकजुट एक साथ हो नहीं पाए, बट गीक जो सर्कल के बाहर से रोटेशन कर रहे थे उनकी फाइट की शुरुआत इनके लिए भी यहाँ से मुश्किलें बढ़ने वाली। नॉक और कंफर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा और साथ ही साथ रिवाइवल भी वहाँ पे काफी आसानी से एग्जीक्यूट करने वाले हैं। थोड़ा सा तो वहाँ पे डिस्टेंस बढ़ता हुआ, बट इस पॉइंट पे ग्रेनेड क्या वो कनेक्शन बनाएगा? जी हां, कनेक्शन बनाया, बेबी नहीं बच पाए और अब रिवाइवल के लिए मैं मौका तो नहीं देख रहा, रिकॉल टावर की तरफ अब एक ओपी स्ट्रीम का पड़ने वाली है। औकात दिखा दिया भाई औकात दिखा दिया थी यहां से तो मोना ऊपर से आके ऐसे बुलाना ये थोड़ी सी गलती होती है जहां पर आप ड्रॉप मंगाते हैं और आपका कोई ड्रॉप के नीचे आकर नॉक हो जाता है। अफ्रीका हो तो हमने पहले भी देखी है, इमरजेंसी साउथ अफ्रीका मंगाते हैं से कुछ गिर रहा है उसके नीचे आपको नहीं आना है। टीम था तमी इंडिया ले ले ये लो इंडिया जिसु इंडिया होने फेस्ट
पर दिक्कत Team đang hùng वो nè. एक आखिरी ही Thì खिलाड़ी है thua जो rồi बचा हुआ chứ. है। ट्रू रिपर्स वर्सेस टीम अलायंस, उनके बीच की मुलाकात है जहां पर जिमी उनके एचपी बहुत डाउन हुई है। जिमी जेली की दुनिया मस्त दुनिया कर पाए, जली उनका भी होगा एलिमिनेशन। पर अच्छी बात है कि जो दूसरा जोड़ा है ट्रू रिपर्स का, दूसरा जोड़ा थोड़ा जोन के करीब मिनी मैप में आप उनको देख सकते हैं। चलिए अच्छी खबर रही एक Well, Alliance तरह song से। है तो बच्चों सर्वाइवल के लिहाज से मैं बात करूं तो या Alliance song है प्लेयर्स अपने आप को down sideline face से पे लेकर आने की कोशिश में लगने वाले हैं और low सर्कल down की तरफ बहुत Hey, Daniel लेकिन Titan वहां पे pressure काफी ज्यादा बढ़ती हुई। Island prediction going Aussie to bon wars में साथ hashtag kan हम 9 के लंग ला दो ताई Aussie हो से ले जाता है 6 लंग पहला 9 मुकाबला points और हम इस जो मैच में ट्रू रिपर्स 6 की लंग ला दिल्ली की एक बात दुनिया में जो फिनिश था, जो हर्ष ने एल निकाला था, दुनिया वो भाई उनके खाते में गया। एल Comment की वेले भाई जी अच्छा प्लेयर बचे सिम हुए लो थे, इस जी मुकाबले ऐसा से बाहर हुए 5 फिनिशेस के साथ। लो ये पर एलायंस को आप देखें, उन्होंने वो 6 Dialogue टोटल फ्रैग्स निकाले। international तो ना ये मचा कि हिट ना कोई चीज वो बोल ये बोल जेली डायलॉग दे सकते डाउन किए गए हैं वो प्लेयर, पर क्या रिवाइवल अभी भी उनको मिल सकता है? रेगनम वर्सेस बोर रिप्रेजेंट क्या होता है रिप्रेजेंट क्या होता है डोमिनेट करके आना है शायद क्यों ना कंफर्म भी कर दिया, पर बोर के अभी भी वो 3 प्लेयर बचे रहेंगे। पर डीआरएक्स को देखिए, बड़ी चतुराई के साथ जोन के अंदर वो पहुंचे। साइशे उनको थोड़ा अलग रखा गया, बाकी जो इंटरनेशनल लेवल वहां मौजूद है। आसान गाड़ी ब्लास्ट हो रही में है से वहां पर और वो सारे प्लेयर्स एलिमिनेट कर दिए गए। क्या ब्लास्ट हुआ वहां पर? सारी गाड़ियां जितनी भी बोर ने लगाई थी वो सब ब्लास्ट हुआ, उनकी एचपी बहुत कम हुई। रेगनम ने भी फायदा उठाया, डीआरएक्स ने फायदा उठाया और बोर ट्रू रिपर्स से फ्यूचर on sa bright hit be ing na टीम बाहर हो गई। रोटेशन बॉल दानो आंसर आपने रोटेशन रोटेशन बेहतर में की, आपने ये सर्वाइवल यहां पे हुआ बेहतर हो ये दिखाया, ला लेकिन ला जहां ले पे ले एक्चुअल में पॉइंट्स की Aloy बात te आने di वाली ya थी, cuma ni tu ya ये मैं बंगा तू तू अगर ले ले टीम इस मैच से बाहर हो गए। बहुत ज्यादा नाखुश सही थे लो ड्राइवर ना से जो होई क्योंकि की 5 यार स्टेज इधर को बढ़ने जियास की वाले थे सोम और ताजा सर्वाइवल बॉल के है भी अब कुछ समय बाद वो पॉइंट्स मीना निकाल चवा सकते थे, टेक्टिक लेकिन on सारी सोजी लो चीजें जा ड्राइवर ठीक एंड नहीं चमा रही। Mimo खैर, na best team के स्क्रीन साथ शॉट निकाल ना लिया, मी एक ये बार क्या वो की बीच में हम एंटर करेंगे। सारी ही टीम्स लगभग सर्कल के अंदर आ मी चुकी ड्रॉप हैं। लोकेशन दूसरी है ने थम फिलहाल बात होगी थी नॉर्थ वेस्टर्न साइड से DRX अपने लिए एंट्री का King Ring la है DRX India ball team कोई आप ला कोई हुआ सुन पे ने India WBG team को आप बैठना। कितने पॉइंट्स आप मान के चल रहे हो कि हाँ इतने से ऊपर Nung आपने sit अपना ten काम players कर लिया, or tip तीन mon hin राउंड और sei आपकी hon शुरुआत hi बहुत be ज्यादा o बेहतर हुई। lấy से ra मैं team मानूंगा chi कि ki राउंडो team की wa शुरुआत hi za cha मिनिमम भी नहीं तो 14 पॉइंट्स के साथ होनी चाहिए। अभी आप अलायंस को देखो, Roar. 6 के साथ है, 3 प्लेयर्स हैं। Comeback ये कब 5 होगा bro? फिनिशेस के साथ है और उनके चारों प्लेयर्स इस मुकाबले में मौजूद हैं। दुनिया का comeback आपकी बॉल टीम चल वो रहा है। भी 5 फिनिशेस के साथ है और बढ़िया तरीके से अभी तक la जो pas तक smoke है, se za di वो la देखने को sunglam मिला to है। se रेगनम there को se आप देख heal सकते हैं, road दो ka वो heal this फिनिशेस all निकाले, पर अभी भी उनके जो चारों प्लेयर्स हैं उस मैदान में मौजूद हैं। पर बीजी के खिलाड़ी गॉड स्पीड, अच्छी बात रही कि उनका जो रिवाइवल है वो हो चुका है। WBG का अभी तक हमने वो पर्सपेक्टिव देखा नहीं है, पर हाँ जोन का एज उनके पास भी मौजूद है। Kita viva indicati जो che va पहला Indian फिनिश team था को वही उनको मिला है और उसके बाद Again ज्यादा फाइट fuck लेने की viva कोशिश la करी नहीं गई। पर ऐसा लगता है कि बीजी और WBG के बीच में जो फाइट है वो कभी भी हो सकती है। बट एक और फाइट की शुरुआत जहाँ पे व्हीकल से आ रहे थे, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं था? Rote चलिए, जो on भी रहा बहुत बुरी शुरुआत हुई इस पॉइंट पे। rote on dia se abul ka pe masat pen la mai du yeng bang jo लेफ्ट साइड bang उन्होंने yeng गलती ai से स्मोक ग्रेनेड किया या फिर वो आई डोंट नो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा, बट जो भी है किसी को कोई नुकसान हुआ नहीं है। अच्छे तरीके से देखिए कवर को प्लान किया गया, स्मोक के सहारे वो लूट अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे हम सभी जानते हैं ग्रेनेड स्मोक्स कितना ज्यादा फायदा आपको दिलाने वाला है। स्मोक करके ही आराम से जाके अपने लूट को फिल्टर आउट कर रहे हैं। दूसरे एंड पे WBG की आप बात कर रहे थे कि उतना ज्यादा हमें एंगल देखने को मिला नहीं। ऑर्डर के पास अपॉर्चुनिटी की वहां पे पहला नॉक निकाल के जा सके, ग्रेनेड भी वहां पे ऑलरेडी प्लान करके जा रहे हैं। इनिशियल नॉक फर्स्ट शॉट WBG की तरफ से हम देखने वाले हैं, क्योंकि उनके पास वो बेटर एंगल है, बेटर ग्रेनेड करने का वो मौका है। और ऐसे में Thai nunga wan sul ve lingo बनाई zana जा mua सकती है। स्प्लैश डैमेज जरूर यहां पे ढूंढ पाए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से वो शॉट्स भी आ रहे हैं। सूक के आगे Celebrity से भी ne आपको sata बच के ta रहने ho की bang जरूरत ni पड़ने na वाली है। ए वर्सेस DRX जहां पे ह्यूनबिन को गिराया जा चुका है। Hingzin la एक prediction हो जाएगा कवर यहाँ पे मंगा लिया गया क्योंकि जरूरत पड़ेगी, लेकिन ओपनिंग की जहां तक बात की जाए WBG कोई गलती नहीं, पहला ग्रेनेड वहां पे कनेक्शन बना के जाएगा और इसके साथ एडवांटेज अब पूरे तरीके से WBG के पास। और ऑर्डर उन्होंने कोशिश भी करी थी कि जो प्लेयर अंदर बैठे उनको नॉक कर पाए, पर फिर से उन्होंने जंप शॉट लिया, पर हीरो का वो ग्रेनेड जहां पर प्लेयर डाउन किए गए, टॉप्स यहाँ पर मौजूद है, पर बॉस वो प्लेयर डाउन पड़े हुए थे, फिर उनको रिवाइव किया जा रहा है। और WBG उनको पता है कि जो रिवाइवल है वो कहां पर एग्जीक्यूट हो रहा है, वहां पर तीनों प्लेयर चढ़ गए सामने की साइड पर बॉस उन्होंने वो नॉक निकाली, ऑर्डर डाउन हुआ, ऑर्डर को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया।
A little though. प्लेयर हीरो वो भी डाउन हो गए 33Z और सो बचेंगे WBG के पतलाश उनको यहाँ पर हर हाल में सर्वाइव करना होगा। हार्क उनकी जो थर्ड पार्टी है वो भी आती है 33Z वो भी डाउन कर दिए गए क्योंकि कौन से खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से WBG वो ये फाइट जीत सकते थे। टीम फ्लैश हो जी ही वाला और हार्क की आप घेरा Follow on Savi. एक प्लेयर कहाँ आया हाँ प्रेडिक्ट कुछ छोड़ो ये फाइट कितना ज्यादा एक्सटेंड होता हुआ अमेजिंग जहां पे लग रहा था कि आसानी से फाइट को जीत के जा सकता है ऐसा होगा नहीं वन अपनी टीम के लिए वो वन सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे चार तरह से जरूर आए लेकिन बैकलाइन से वो हमला अशोक ज्यादा देर तक यहाँ पे अपने लिए सुख नहीं ढूंढ पाएंगे और उनका भी एलिमिनेशन इस मुकाबले से होता हुआ डिफेंड करना था अपने कंपाउंड को और डिफेंड नहीं कर पाए बट आखिर में जिनका स्लामिन आया था अमेजिंग एफएल के रूप में वो इस फाइट को जीतेंगे उनका सर्वाइवल गेम हम यहाँ से देखेंगे और फिनिशर भी आप देखिए 5 के आसपास निकाला जा चुका है। एक कमाल की शुरुआत लेकिन अपने 3 खिलाड़ियों को गंवाने के बाद Ewa tama ho jete ji. Last day je हम comeback ball. Ewa 3 प्लेयर एक साथ गए वहां पर नॉक प्लेयर को फिनिश करने के लिए ना हो पाए उसको चेक करने के लिए गए और वहां उनसे गलती हुई पर आग का जो स्ट्रैटेजी तारीफ जहां पर एक प्लेयर को उन्होंने पीछे डाल दिया और दूसरा प्लेयर पूरा घूम कर आया वहां पर उन्हें थोड़े बहुत फिनिशेस भी मिले पर उसके आगे वो कुछ खास नहीं कर पाए और 7 फिनिशेस के साथ आपका जो एलिमिनेशन है वो हमने देखा पर रेगनम ये एक और वो टीम यार एक सॉन्ग की साइड था अपने आप को डायरेक्टली वहां तक पहुंचा नहीं पाए और इसी बीच अपने डीआरएक्स उनके भी प्लेयर्स को तो एलिमिनेट होते हुए देखा है और टाइशे वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए तो उनका भी एलिमिनेशन हुआ और व्हेन वो भी सही सलामत जोन के अंदर नहीं पहुंच पाए 5 के साथ उस टीम का एलिमिनेशन लेकिन इस पॉइंट पे INF इन बॉल दिया था वो ज्यादा देर तक ना करके जाए इसका ध्यान रखा जा रहा है INF के अलायंस हो का काम यहां पे करके जाने वाले वाइल्ड लौते खिलाड़ी अपनी टीम से और इनके ऊपर भी वो एक अच्छा ग्रेनेड एलिमिनेशन के लिए काफी होने वाला है कितने सारे ग्रेनेड्स यहां पे INF फेंके जा रहे हैं लेकिन लास्ट इन्फो के अकॉर्डिंग वो कंपाउंड में करना अच्छी खबर है लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट राइट आप कर सकते थे इस पॉइंट पे उनके ऊपर भी लौटे हो हमेशा अल्फा से ना लौटे हो ध्यान इस तरफ था अब ध्यान दूसरे तरफ जाने वाला और उसका फायदा मैग्नम कार्य सर्वाइवल पॉइंट्स से ढूंढ के जरूर जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे बचने की जरूरत थी ऑलकॉम बहुत समय से देख रहे हैं मेजी यहीं पे हैं और उसका फायदा सर्वाइवल तो मिला ही और साथ ही साथ उस रोटेशन को काफी अच्छे तरीके से रोके हालांकि ये खिलाड़ी ने इसको अच्छे तरीके से रीड किया हाइट का एडवांटेज है तो ग्रेनेड कर रहे हैं और उसके साथ ये कमाल का स्प्रे पूरा 17 चुंगलमा के पंज निकालना इतना आसान होगा नहीं लेकिन बचे हुए 2 खिलाड़ी जो नीचे हैं वो ग्रेनेड के माध्यम से वो कंफर्मेशन ढूंढना चाहेंगे क्या उन्हें पता अभी तक नहीं चला कि वो प्लेयर कहाँ पे है फाइनली सिमी का कंफर्मेशन यहाँ पे निकाला जाएगा और ये 10 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं इनके तरफ से जहां तक मुझे याद आ रहा है अभी तक हमने इस जीसी में किसी एक सिंगल प्लेयर को 10 इंडिविजुअल फिनिशेस क्रॉस करते हुए हमने नहीं देखा साकुरा वो 8 के साथ हैं 2 और उनको फिनिश वहां से निकालना है 10 फिनिशेस वो खिलाड़ी कंप्लीट करेगा इन अ सिंगल मैच और इसीलिए मैं कह भी रहा था कि जो टीम है वो एक्चुअली में बहुत स्ट्रांग है जिन्होंने भी वर्ल्ड कप देखा है उनको पता होगा ये क्या काबिलियत रखती है और यहाँ पे साकुरा उन्होंने वो जो पहला नॉक निकाला था सामने से ग्रेनेड आता हुआ इफ्तार उनका भी एलिमिनेशन हुआ और इसी के साथ साकुरा उनके पास 9वां फ्रैग जा चुका है और अब म्यूजिक इतना अजीदा है वो नीचे पहुंच गए इंडिया हुआ वो मुझे इन्फ्लुएंस रेज के फेडरल थे जिन्होंने साकुरा को देखा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता ग्लोबल इवेंट है मुझे जोन के लिए ये छठा फेज है इंडी सॉकर स्टार का हम लोग और 14 खिलाड़ी बचे हैं मात्र हमारे पास क्या ये हंगर बोल सकते हैं आई मीन इन सारे लोगों ने मैचेस काफी अच्छे से तरीके से देखा होगा और ये इन्होंने भी समझा होगा कि पहले मैच को हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट फेज में लेके जा सकते हैं कि थोड़ा एग्रेशन ज्यादा दिखाते हैं और इसी कारण 7वीं स्टेज तक आते आते केवल 4 टीम अब हमारे चलिए उसमें भी अब कटौती होने वाली है ये के पास जो स्टार्ट है वो पीछे मुड़ के बिल्कुल भी देखेंगे नहीं और आप बात करें थे 14 रीजन का भी रीजनल का भी ये ने तो उसे क्रॉस करने की शुरुआत कर दी है यहां पे म्यांमार आसानी से वो आगे भी बढ़ के जाएंगे बहुत म्यांमार थाईलैंड है म्यांमार ये अपने लिए बनाते हैं और स्प्लिट आउट देखिए कोई बता का मलेशिया हर तरफ जाएंगे फिनिशेस कलेक्ट करेंगे नो रीजन ग्रेनेड से बचे तो डिस्ट्रैक्शन रीजन ना साहिल हो जाए वो कंसिस्टेंट जीदान वो रीजन रहा कि यहां पे इन्होंने भी अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट अब जब आगे जाने की बारी आ चुकी है जब सर्कल के बाहर आप जा चुके हो आउट नंबर हो बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है रेगनम कार्या के लिए भी
देखिए ये चिकन डिनर तो ये का है, ये हम सभी को पता है। अब कितने फिनिशेस के साथ आएगा वो देखने वाली बात, क्योंकि इकलौती वो टीम है जिनके पास जोन का इतना बड़ा एडवांटेज है। आईएनएफ वो फंसे हुए हैं, अगर वहां से वो उठने की भी कोशिश करेंगे तो वाइल्ड तो उनको देख सकते हैं। India tehen bot like le soul hi high mil wa team like le AGC hin to sot nge le international la India fle kita do de achi ti lo le India hi kitsa ding au mai pe ये अरीना हो nang kam be ngai ro ji ding na लेकर जाने वाले लॉक्सी वो भी डाउन है। वाइल्ड एचपी कम होते हुए पर साकुरा कितने और फ्रैग्स लेकर जा सकते हैं। फेडरल का वो ग्रेनेड लॉक्सी वो खत्म हो गए। वाइल्ड उनके करीब वो मोलोटोव आया, और जैसे मैं कह भी रहा था कि ये सारे प्लेयर्स फंसे हुए हैं और ये सारे फ्रैग्स निकालना चाहेगी। एग्जैक्टली मतलब हाइट का भी एडवांटेज, नंबर का पूरा एडवांटेज उस पॉइंट पे, और स्प्लिट भी उस तरीके से प्लान करके रखे हुए हैं। उनसे चिकन डिनर छीनना बहुत मुश्किल होने वाला है। बट उससे पहले कौन से वो दो नाम रहेंगे जो कि एक दूसरे के सामने आने वाले अननोन, उन्हें यहाँ पे गिराने में कामयाब। नस्से 11 kills था ये खिलाड़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। 11वां फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकाला जा चुका है। टीम के 14 टोटल फिनिशेस, उन्हें रोकना इस रोंडो के मैप में नामुमकिन सा हो चुका है। अब लग तो रहा है कि एक आसान सा विनर चिकन डिनर अपने नाम करने वाले, क्योंकि हाइट के साथ साथ जो एंगल इन्हें मिला है वो आसानी से वो 10 प्लेसमेंट पॉइंट भी इन्हें दिला के जाएगा। अगला स्टेज वो कहां पे जाएगा इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये के पास प्लेइंग एरिया ज्यादा, और जो हाइट की हम बात कर रहे हैं एक आसान सा चिकन डिनर उनके खाते पे जाने वाला है। और आप सोचिए कि सारे प्लेयर्स के पास ग्रेनेड्स हैं और उसके बावजूद वो हाइट का एडवांटेज उठाना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ग्रेनेड थ्रो करने के लिए आपको जंप करना होगा, और रिस्क क्यों लेना जब आपके पास ऑलरेडी इतना बड़ा एडवांटेज है। अगला सर्कल आया, जो शिफ्ट है वो भी ये के प्लेयर्स के पास ज्यादा है। NC2 बस उनको जोन के अंदर जाने की जरूरत पड़ने वाली है, पर उनका भी काफी ज्यादा शानदार। बस देखना ये है कि क्या कोई और जो फ्रैग वो कंफर्म कर पाए अपने लिए। जोकर इमरजेंसी जो ड्रॉप है उसको भी मंगाने वाला है वो खिलाड़ी, और साकुरा थोड़ा बहुत जो लूट है उसको भी शेयर किया जा रहा है। जी हाँ, इमरजेंसी जो ड्रॉप है वो भी आ चुका है। फेडरल एचपी उनकी कम है, और मुझे ऐसा लगता है नहीं लोग वहां से सोम थोड़ा लाया है बूस्टर्स नहीं बचे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंतजार करेंगे। वो 9वें स्टेज की तरफ हम जाने वाले, फाइनल स्टेज की तरफ हम जाने वाले। उसके बाद चलो वहां वाले था रेगुलर विला सी तो दब ही वहां पे हम देख पा रहे हैं व्हीकल इनके बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके। तो ऐसे में अब आगे जाने का कोई रास्ता तो मैं इनके लिए नहीं देख पा रहा हूं, सिवाय एक कि अपने वेपन के साथ ही वो ए को परेशान करे। लेकिन उसके लिए भी जो वो एंगल डिमांड करेंगे वो मिलने वाला नहीं भी है। ना नहीं अच्छे खासे कवर्स यहाँ पे ऑलरेडी प्लान करके रोल हुकम पे कितो बॉल कितना होता है कि पेड़ के आगे बस वो आ जाए, और उसके बाद वो स्प्रे यहाँ से करने की शुरुआत की जाने वाली है। स्मोक यहाँ पे करने का प्लान, और उसके बाद ये नॉक, क्या ये इसके बाद भी यहाँ पे चांसेस बनेंगे। जी हाँ, कंफर्मेशन निकाला गया। नंबर्स गेम जो ये के पास स्ट्रॉन्ग थे उसे एटलीस्ट घटाने में यहाँ पे कामयाबी प्राप्त हुई, लेकिन अभी भी वो मंजिल बहुत ज्यादा दूर। वो चिकन डिनर यहाँ से भी बहुत ज्यादा दूर। शुरुआत का यहाँ पे जवाब अच्छे तरीके से यहाँ पे देंगे। कंफर्मेशन का जवाब कंफर्मेशन से दिया जाएगा। लॉ एक लौते खिलाड़ी है, बट लॉ को बुझने से यहाँ पे रोक के क्या वो जा पाएंगे? जवाब बिल्कुल ना, क्योंकि इनके एंगल से वाकिफ, उनके तरफ वो ग्रेनेड, स्प्लैश डैमेज और कुछ शॉट्स उनके लिए काफी होंगे एलिमिनेट करने के लिए। बट क्या वो अपना फर्स्ट पॉइंट देने वाले, क्योंकि प्ले जोन के बाहर हो चुके हैं वो। के बाहर ही उनका एलिमिनेशन। और EA पहले ही मैच में तबाही मचा दी है उन्होंने भैया, तो ज्यादा ही बढ़िया खेल गए। पर साकुरा हेयर स्टाइल है हाईएस्ट फिनिशेस का जो रिकॉर्ड है लॉन्ग हो ये चलिए रावल जी मैं आपसे मुलाकात करता हूं, ठीक है? सेकंड मैच में आता हूं। ओके, मैं थोड़ा चैट मिस कर रहा हूं। आप लॉन्ग ला अपन उन लेवल के सेकंड मैच में आता हूं तुरंत, ठीक है? ओके, और म्यूट कर रहा हूं यहां से। चैट क्या ही खेला है ये, क्या तगड़ा खेल लिया है। चलो फिर से चैट पढ़ने की शुरुआत करें। बहुत सारे चैट मिस हो गए थे भाई। वो लोग अभी भी हमारे साथ हैं कि नहीं है? चले गए? बहुत सारे चैट हमने मिस करे थे। जहां तक मैंने लाइक किया था वहां तक मैंने चैट पढ़ा था। ओ शिट, चैट मिस कर दी भाई। क्या पोजीशन ली है? रिएक्शन गा दिया होती है। नेक्स्ट इजी लॉबी भाई, बहुत सेक्सी लॉबी है। मुकेश भाई है वो। हाँ मुकेश भाई। एंटी रे एंटी ये बात तो दाल này एंटी नेक्स्ट ट्राई
ऑफिशियल स्ट्रीम जो कोई तुम पीछे एक बार एंटी रे बोल दे एंटी रे टीम स्क्विरल है के लॉब कॉन्टेक्ट से कि ये आई है ट्रू रिपर्स नेक्स्ट वी गो इरेंगल नेक्स्ट ओ एज रोटेशन मार रहे अपन अपनी थोड़ा सेंट्रलाइज ही चला गया भाई अभी अपने ब्रो मारते खतरनाक भाई ऑन मोसे रे भाई तो राइट से भी ट्राई कर रहा है जोन लेने का वो बट जहां पे भी जा रहे हैं एक टीम को मारना है और जिमी को पकड़ 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 जिमी को पकड़ भागा भागा जिमी भागा भागा मार 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 जिमी को नहीं रे 1v2 नहीं होना जल्दी ट्रेल ले ले आराम से दूर से कवर मिल रहा है यार अयो कवर मिल रहा है यार कवर मिल रहा है यार उनको लगा अकेला है पकड़ लेंगे बट चकले लग गए 2 मैन है पब्लिक चकले लग गए क्रॉस फायर में चले गए यारो क्रॉस फायर में चले गए यारो भाईगन टू रिपर्स है तो उनको लगा एक ही चाहिए उन्हें भाग रहा उसको पकड़ेंगे सकुरा भाईगन ऊपर से मार रहा आखिरी बंदा बचा बैंगन हार्ड लक Here's Owen. Aggression, it was like, no, time to go, Max. We will try our best. Yeah, me too. And not see long level. ये मचा वो ये लोग. करेगा वो करेगा venture. One of the highest damage taken stats I've ever seen. I don't know if you've seen higher, but of course because Rondo got the recall. But oh my god, that's wild. Okay, Arun, ini kan pa Mima sim baza. Saat piung ta. Timo di lo so point difference on ti ta so tam di lo so mo. Criticism ball ni hi a ball pat ji wa bong cho ki chi moi dong ba. Sei si part of box last year cha ji mo. Last day chứ nói lang hoa na ball phát chị chứ đừng đại hi gì chứ còn đi xem con nào vậy nói mà chung à hồi hay tụi 90 plus chị vậy chứ na last 2 match rồi tăng cái phát hoa bồ cho nói lang hoa bồi mà cho na hay nói nghe chị tập thủ thì có tiêu yan pa hoa chứ pa mà cho na ZS Jan Ballet 9ZG 98 sih sekian mau apa sih wow. But the other thing that was interesting, what were you saying? You want to hear a crazy stat? Yeah. Go for it. Right off the rip here. All right. Well, EA ridiculous amount of eliminations and the chicken dinner during the gauntlet, right? All 3 days combined, they had 74 points, guys. In their first match here in Group Red, Panay lo hay mo. put up 33% of that total in just one game. Wow. I mean, you know what? I love that for them. I love that for them. 27. Yes, because I think we were expecting so much more in the gauntlet stage with them, right? We were thinking MVP hon pal Porsche mu di hunal lo ha. Coming into Group Red and seeing them put up such a performance, it's like finally E Arena is Samo mo nga chu EP ha. Top got 32 points in one game. The arena got 27. Just Top mày thì to grand final là bố còn lâu rồi. Grand final so they can't fight back. Whatever. Anyways, Influence Rage also really good performance here. Able to survive against the likes of Porsche Kimen beta. Also really good hold on that. India họ cải tạo bạo ông là cái tao MVP đi ngay cái thứ thì nào bây. High intensity à. Một cái team họ rồi Agari rồi một cái team hết rồi. Team mình. Third party your Regnums versus Influence Rage, or even that fight to the west versus Flash and Weber and even Arcred at some point. But no, they stayed very passive, and that scares me a little bit because passive, would it be enough for you to be in top 3? Not quite. So I want to see more presence. 15 này hi vậy na 15. Rồi, lâu rồi, tụi mình bộ sĩ cái video khổ lỗi.
through from them later on in today's matches. But your MVP of Rondo is going to be Sakura. We knew it was going to be Sakura. Come on now, 11 eliminations. No one did that. There's just no beating this guy in this map, at least. Yeah, we're probably not going to see that for the rest of the group red, to be honest. I mean, that's just a crazy, crazy day, you know? So, I mean, for him to bust that out in game number 1 is got to be so hype for EA. Like, I did the official math. It's 36% of their total points from the gauntlet in just one game here off the rip. We just really hope this is not a flash in the pan, you know, moment. We want to see this just rocket launch this squad, you know, and kind of have that little alpha gaming presence, right? That big improvement from gauntlet to here, and that's the advantage, right? If you're in the gauntlet, you get a little bit more time under your belt to come in strong. They understand how important Rondo is here, and they really took full advantage of it, Max. Yeah, definitely. And I want to talk about a team in particular we didn't highlight just yet, which is going to be Alliance. They went for position. I think some people might look at this game and think, oh, that road dip, it's not really a great position. But you can make it a great position with, guess what? Emergency cover flares. And they put down, I believe, 3 emergency cover flares in that position. And they were holding it for so long this game. I was really happy about it. The main issue was of course, Sakura on top of that rock mountain. That was going to be an issue. But outside of that, Alliance for me had a great macro game positionally speaking. Sakura. I'm excited to see what their rotations will look like going into the other 2 maps on today's matches. Ladies and gentlemen, I proudly bring to you the East India Cypher. From the land of samurais and juggernauts. From the birthplace of Rabindranath Tagore. From the misty hills of Meghalaya. From the banks of the Brahmaputra. From the streets of Mizoram. I bring the bees from the east. I'm from the east to India, east to Asia. East is where the sun rises. Half of me Japanese, half of me Odia. All of me full of surprises. Samurai jeans and calling a spirit and juggernaut blessing my life. The smaller my eyes, the bigger that I see. Cold as the ice, I'm killing like ISIS. A girl in a past once told me, big deal, you're very flirty. I had a friend in me who be telling me I would be never worthy. Log bole Hindi mein rap karo, fir dekho kaise badlegi takdeer. Par main chahe ya karu, main chahe wo karu, meri marzi. Jahan bhi kare mu talk, say sab bhi kare mu walk. Cute dissing me, but your girl on my dear, she glock. Pike on the east, India icon. The only thing that's my clone is funny cyclone. Yeah. Dekho aise gala puri toka bega logo niya body flow jaldi hatoni sakatar sabda loss ro enter go bega gadi jodi like khane mein go dekho. Jimmy BTS South Korea ro samiti rosogola hela Odisha. Hey yo, hold up. What was that? Rasgulla belongs to Odisha. Yeah, of course it does, bro. Everybody knows Rasgulla is from Bengal. Don't play yourself. Rasgulla Odisha. Agle khawar niye yaar ki na, theek ache to? We'll settle this later. Map khula deck back raps in aju rank hack bane act back legacy hashtag banga raps the top scratch that shama jene fact tag rajdhani chino ache ekhane flashback home of the bhagirathi tales to warriors. Y'all better stand back. Alexander ran back behind right sack couldn't touch us built-in soul hazmat mathar upor himalay bukane kono bhoy bayar tola সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিশ্বজয় stadium join us তাই নাম লেখন ভয়জন মেছি সংগ্রামে বাঙালি পরিচয় we want justice so বিনয়ের অবতার নমস্কার হাসি মুখে চাটি লাইক গোপাল ভাড় অস্কার থেকে নোবেল গ্লোবাল স্টার সাদা মাঠে করে জার্সি কয় 100,000 কলকাতার রাস্তা পাবি যে চাষ আড্ডা হুল্লোর নন্দনে 12 মাস দিওয়ালি ছট পুজো মেরি ক্রিসমাস ট্রাম ট্যাক্সির হেরিটেজ নস্টালজিয়া মাস্ট I come with an auto rickshaw wanna follow me yeah তাহলে চলো তি স্টার থেকে সোজা গানে and the winning to the winning and হিরে মুদে ম্যাজিক ভেতো বাঙালি স্টার Let me show them what we on about. Put that shit aside and let me show them what the east is like. Don't we all got friends and enemies? Fuck what they say. Can't get rid of me. I'ma set it rise in the east like the sun. Start seizing a shot like a gun. Come to the city, I'ma show these bums what the fuck we on. Yeah, we season the fun. Coming with the force, I'm a bars way a ton. Man, can it get any more racing? Oh, motherfuckers wanna get on my face. It raw to the flow, they can never replace it. Minimum guilt, I ain't feeling them dudes. Still ain't shit from killing them views. Put them on the rest, I ain't talking about leisure. They talking the best, so they talking to me. They don't sign me these days. Diamond, but they don't mind me these days. I come from the city where the rap is the greatest. Did it for the TV shows and the stages. I don't need cloud, it's the hills I come from. Same copy, they wanna co-sign those. Can't clock me, watch where the time goes. Take them on a spin like gyro. Never been like those. Been cold, but I could ignite foes. I
don't even fight those. All your best bars are my typos. I'm now fed like an EV. Mem schedule contest. I'm not compared, just know we the best. Either born or you which need. You're not gonna support, I stand for a cause. Empower the flaws. I'm but a cut might be lost. Just have a good run, cause we in for the sport. Ask me how do you manage the time while being a rock star with a day job. Professor per day and a star-studded bad boy at night I stay high. Yes, I be floating through genres and languages easy to me like a cakewalk. This shit should be illegal, I'm just illegal. Loch me Laura on Baywatch. Raul sudden trust up suno. Numero uno of the world like Bruno Mars. Kismat meri likhi badalone, but assume causing floods in a sand, bro. Somebody please tell all the critics I've been doing this for a long time. Let's rap song at the government stress how to debate and shut them on primetime news. Don't cool. Lassie Tortes flow my way in 600 years I my rain Amare tel sa saul khai Amake sinin ubua holi Etia amar bihur khewat nasi thak kuri kuri Tum le vai le mi ngô ma a po sa ngai lo Dâu nắm bật sới trò bên nì ya hen rồi Đuôi gông đi lo Vì tập tập này ấy lo này này lo ngay này lo ngay này lo Bấy xì bố ya mình tê thầy lo Lê mới thì thâu mà xem ôi Rappers being rappers so excuse the bravado Expect some haymakers when I raise on mic like custom model From the east so we dawn on me then I'm an anomaly On the come up like the morning sun Run a motherfucker running up in the jump I'll be trying to be the number one I'm hungry like a Muslim in Ramadan I eat this beat up all of army words For the bread, for the cheese, for the parmesan And it just fall flat like button on I go up I won't stop till the wheels fall off About to pull it off like I'm driving a tow truck Run through the roadblocks, vroom Slow down for what? Man, no M and Wayne But they be giving me no love So what I want, but haters are like I'm on me fight But they ain't got no guts Clap back and go nuts No love, got the X Factor like we broke up My stock about to go up Gonna cost so much just for me to come and show up Polar In the gauntlet, this team was averaging about a 10th place to 2 to 3 ilms today. First place, 17 ilms. Now, looking around here in this group, Red, is there any team that you're looking at that maybe is going to cause you some trouble throughout the days? ในกลุ่มแดงกลุ่มนี้คิดว่ามีทีมไหนไหมที่อาจจะเป็นปัญหาให้ทีมเราก็ตอนนี้ยังไม่มีครับ Right now we have no teams that are going to be a problem for us. All right, well, hey, right now, 11 LMs to you. Great performance. This is not looking like a 16th place team. I can't wait to see what they're going to be doing for the rest of the day. चलो इंशाल्लाह चिकन आएगा देखते हैं मोमिन भाई देखते हैं चिकन की जरूरत तो है बट देखते हैं हाँ भाई अच्छा कौन सा कंट्री से देख रहे हो मेंबर्स नाम बताओ माइंड जापान हाँ वो तो पता आप जापान से देख रहे हो मेंबरशिप मिल गई अपने आप गिफ्ट किया है डिक्कर ने दिनकर चौधरी गाइस वी आर सो क्लोज 285 लेट्स गो दिनकर वेलकम टू मित्र फैमिली ऐसे भाई आज तो आप सुपर चैट से अमीर हो गए हैं बताइए जनाब चैट दूसरे मैच से क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर चलते हो आप भाई ये कलयुग है सच नहीं झूठ बोलने वाला रहता है ठीक है हम भी झूठ बोल लेंगे उसमें क्या बात है दीपक भाई थैंक यू सो मच फॉर द 40 10 points 10 points ठीक है चलो मैच शुरू करते हैं लेट्स गो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन आई होप इस मैच के बाद वी क्रॉस 285 के मॉडरेटर्स एंड जितने भी मेंबर्स हैं पुश करिए कि हमारे 285 हो जाए टीआरएस में चिकन निकालेंगे तो आपको 1000 का सुपर चैट रोनित भाई थैंक यू सो मच फॉर द 40 आइए कास्टिंग करते हैं आपको कास्टिंग सुनाते हैं कि पन की टीम हितान get ready चालू करें
गाइस श्रीवे अनुम ले प्रेडिक्शन आ चुके हैं प्रेडिक्शन इस टाइम इरांगल की तरफ जहां पे लगातार आज के 3 इरांगल इन्हें बॉल खेलने की कोई जरूरत कोई हम पड़ने वाली है प्रेडिक्शन बॉल जबकि थे राउंडों की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है उन्हें इस इरांगल में बेहतर करके जाना पड़ेगा और उसके लिए हम आज चिकन के डिनर नेन सबसे टिया निगिन इंपॉर्टेंट उस फ्लाइट पाथ की तरफ और इसके अनुसार हम जानेंगे किनके लिए शुरुआत बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है उस ड्रॉप को लेके और किन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। फ्लाइट पाथ की थोड़ी विस्तार में चर्चा करें तो साउथ वेस्टर्न फ्लाइट पाथ जहां पे esports arena from Thailand on chicken dinner नेगा to a second match WBG den khade ni leo kate WBG DRX मैं तो बस din देख रहा हूं कि INF डेवलपर्स क्या वो शुरुआती दौर से हवरक्राफ्ट की तरफ जाने वाले नोवर इग्नोय उनका आमतौर पर ड्रॉप लोकेशन हुआ करता था पर अब कोई टीम सपोर्ट न बॉल वैम जंग चेक चल तुम गेल से इतला नहीं वो करेंगे वो देखने वाली बात है पर आईएनएफ की जो टीम है वो निकल चुकी है क्वेरी और प्रेमॉक्स के साइड पर फेरिपियर वहां पर बोर की टीम मौजूद है डीआरएक्स उनका एक बड़ा स्प्लिट है काटका के आसपास ईए वो जा चुकी है जॉर्ज पॉल सिटी के साइड पर WBG मे भी शूटिंग रेंज या फिर जॉर्ज पॉल कंटेनर से होते हुए रोसो देखते हैं उनका ड्रॉप कहां पर फिक्स हुआ ETSH अभी के लिए रोइंस के ऊपर से उड़ान भरते हुए वेगनम वाटर सिटी के आसपास ट्विस्टेड माइंड्स बड़ा स्प्लिट है उनका दो प्लेयर्स को देखिए गाड़ी उठाने के लिए वो गराज के साइड पर रुके वहां से उन्होंने गाड़ी उठाई और सबसे बड़ी बात कि अब लॉर्ड और जुद्दू उनके दूसरे प्लेयर्स हैं दूसरे प्लेयर हैं उनको भी गाड़ी मिल जाएगी एक ने गराज से गाड़ी उठाई दूसरे ने रोड से गाड़ी उठाई और ट्विस्टेड माइंड्स अब उनके पास गाड़ी की तो एटलीस्ट कोई कमी नहीं रहने वाली और वहीं पर ट्रू रिपर्स ड्रॉप लोकेशन में थोड़ा बदलाव नोरुप नॉय ना जाकर मिल्टा सिटी का चुनाव किया गया है उनके साथ एक और टीम मिल्टा पावर जाने के लिए तैयार जोन बन चुका है बिल्कुल वेस्टर्न एजेस पर और ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है आपको वो लूट करने की उतनी ज़्यादा टाइम यहाँ पे मिलने वाली है नहीं जल्द से जल्द कैलकुलेटेड मूव इन्हें लेने की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे सही वक्त में उन एजेस पे पहुंचना 2 minutes go नहीं चलू टाइमिंग बहुत बड़ा स्प्लिट हमने देखा है रुइंस के नीचे एक खिलाड़ी है गटका के ऊपर आसपास हमें देखने को मिल रहा है गटका के नीचे इनफैक्ट क्यूरी के आसपास वाले इलाके को थोड़ा सा वो देख के वापस आ गए तो एक अच्छा स्प्लिट उन्होंने भी रखा शोर लाइन की तरफ अभी कोई भी नहीं है वेस्टर्न एज पे मैक्सिमम टीम मेजी यहाँ पे ईस्टर्न साइड से ही हमें रोटेट करते हुए देखने को मिल जाने वाला है या तो वो रिजॉर्ट के नीचे से रास्ता होगा या तो शूटिंग रेंज के आसपास वो एरिया और जी हाँ जैसा आपने बताया इरांगल आए हैं और ट्रू रिपर्स के पास हमें हवाक्राफ्ट ना देखने को मिले ऐसा कभी हुआ है क्या? जी हाँ बिल्कुल भी नहीं पर वोटर्स प्रो बहुत जल्दी उन्होंने रोटेट कर दिया इंटरनेशनल टीम जो लूडोंग बॉल मन जी हम के आके मु मन नहीं है मुझे बॉल जी लो लुंगदोन में चुना करके आई गाड़ियां रे तो मिल चुकी है उनको और आप सोचिए कि बिल्कुल लूट नहीं है वो उनके पास गन नहीं मन नहीं है मुझे ये लोग हने जी लो तो यार ठीक लो लो उनके साइड से वो जो टीम है वो क्रॉस कर रही थी और इसीलिए जेली ने ज्यादा चहलकदमी वहां पर करी नहीं है और अब लूट पर जो फोकस है वो मैं तावांग की खेल मोमो है ना गाड़ी चुना की बॉल थे प्रॉब्लम उनके लिए नहीं होने वाली और जो दूसरा हवरक्राफ्ट है टीम की खेल वो भी ट्रू रिपर्स के पास आ चुका है ना कि उमा हील पास है तले हो तो उन डैमेज नहीं आऊं ऑल ता मैं बस पॉइंट्स देख रहा हूं मेजी ईए की टीम ट्राई बैंडेज 20 पे की पूरी है टीम में 27 पॉइंट और उसके बाद एक ये जोन की शिफ्ट गंगी है ना टॉप 3 वो आपको यहां से देखना है तो उसके लिए शुरुआत उनके पास कमाल की और ऐसे पीजी थे तो बीजी थे उनके बॉल जो है ना क्वालीफाइड है ये की तरफ से वो फिनिशेस और वो एग्रेशन देखने वाले चलिए दूसरे तीसरे स्टेज में हमें उस बात का अनुमान लग जाएगा बट वी भी ज्यादा डिले करते हुए नहीं सीधा इन्होंने कुछ बेसिक लूट के लिए सर्कल यार सी होइलाई कंट्री है ये डेफिनेटली लो वाइड काफी अच्छे तरीके से चेकआउट करने का डिसीजन या फिर लिपोका होइलाई का ठीक बताओ जान क्योंकि अगर ये यहाँ से लिपोका की ओर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाने वाला है ये बताओ पहले स्टेज का पूरा डैमेज इनके ऊपर हम आते हुए देख पाएंगे खैर वो उनका विषय रहेगा बट ट्रू रिपर्स मिल्टा में इत्मीनान से लूट कर रहे हैं हालांकि एनआरजेड इनके जस्ट इत्मीनान से लूट कर रहे हैं ट्रू रिपर्स ऐसे में रीड अच्छी होगी जेली की तरफ से और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊपर सेल्टर के इलाके से इनकी रोटेशन हम बहुत जल्दी देख पाएंगे और वोटर्स प्रो वैसे भी लेट रोटेशन के लिए अभी तक जानी गई है तो एक्सपेक्ट मैं कर चल रहा हूँ कि जोन के एजेस तक जो आने की कोशिश रहेगी पहले जोन के खत्म होने से पहले वही जो रणनीति है जो वोटर्स प्रो के तरफ से शायद हमें देखने को मिल भी जाए पहला जो मैच था वो उतना अच्छा गया नहीं और शुरुआती दौर में फिलहाल में हमने उनको इस तरीके से फाइट लेते हुए देखा नहीं था पर यहाँ बहुत शुरू में ही उन्होंने वो जो ड्रॉप फाइट थी वो ली और वहां पर उन्होंने अपने सारे खिलाड़ी गंवा दिए 2 फिनिश मिले उनको पर उससे ज्यादा कुछ और नहीं हो पाया पर ट्रू रिपर्स अभी भी ये 1800 मीटर दूर है खिलाड़ी हाइड्रो इनका नाम लूट की कोई कमी नहीं है ग्रेनेड मिल चुके हैं मोलोटॉव्स हैं स्मोक्स हैं फर्स्ट एड एंड बूस्टर्स की कोई कमी नहीं
मेल्टा सिटी में वैसे भी आमतौर पर हम लूट की कमी देखते नहीं है, और अच्छी बात रहेगी कि जली वो मेल्टा सिटी नहीं आए, वो जो ऊपर के छोटे मोटे इलाके होते हैं ना, वहां पर वो अपनी लूट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है खिलाड़ी। अभी तक मोलोटॉव तो नहीं मिला, पर हाँ ग्रेनेड उनके हाथ में है। पर हर्ष को ग्रेनेड्स मोलोटॉव्स ये उतने कुछ खास नहीं मिले, और अगर आप हेलमेट की बात करेंगे वो भी इस प्लेयर के पास नहीं है, और जिनके पास है वो भी लेवल 1 का हमने देखा, मतलब उस क्लोज फाइट के लिए तो इससे तो काम नहीं चलने वाली, एटलीस्ट मिनिमम भी अगर हम देखें तो लेवल 2 आप डिमांड करते हो। हमने बहुत कम ही बार देखा है कि मिल्टा में आने के बाद इस तरीके की स्थिति आपके सामने रखी हो जहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है लूट के लिए। जल्द से जल्द वो प्लान कंप्लीट करे, क्योंकि डिस्टेंस आप देखें जैसा आपने ऑलरेडी मेंशन किया था बहुत ज़्यादा दूर है, और ऑल की टीम ऑलरेडी फार्म का इलाका छोड़ चुके हैं। जिनके जस्ट वेस्टर्न साइड में जो टीम लूट कर रही थी उन्होंने पोजीशन के नीचे से अपनी रोटेशन की शुरुआत कर दी है ऑलरेडी। वीपी की टीम जो लिपोका गए थे वो अभी कुछ समय तक वहाँ पे लूट करने वाले हैं, मतलब मैक्सिमम जो सर्कल के बाहर थे उन्होंने सर्कल की तरफ जाके अपने लिए अच्छे कंपाउंड ढूंढने का फैसला किया है कि थोड़ी सी और लूट यहाँ पे एक्सटेंड करे। बिल्कुल नहीं, WBG ऑलरेडी सिटी का एरिया है, सर्कल का कंट्रोल है पहले स्टेज के अनुसार, वो इंतजार करने वाले, वो कोई भी जल्दबाजी करेंगे नहीं। कुछ ही टीम है जो कि सर्कल के बाहर अपने आप को रोक के रखे हुए हैं, बाकी सबने डिसाइड किया कि पहले स्टेज में उन हार्ड कवर्स को टारगेट करते हैं, अच्छी लूट कंप्लीट करते हैं। जी हाँ, और सारी जो टीम्स है कोशिश उनकी वही रहेगी कि जितना ज़्यादा जो सर्वाइवल गेम है वो खेल पाएं, और उसके बाद ज़्यादा पॉइंट्स आप निकाल पाएं, क्योंकि 3 रैंगल आपको खेलने हैं, और अगर आप 3 रैंगल में भी अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, जैसे हमने पहले भी India बात की है कि पर caster रैंगल अगर analysis आप gitu 9 से 10 पॉइंट्स Chị लेकर sợ जाते gì हैं gì तो vào उस mà रैंगल में आप 30 पॉइंट के mắc lầu आसपास, thế này और बाकी जो बचे हुए 6 रैंगल के मैच है như thế अगर mà कुछ chắc खास भी là होता vào है तो ngoài फिर हमारे logical Rondo वो solution कवर không कर bị सकते đi हैं, lâu rồi पर उसके लिए जरूरी है कि तीनों रैंगल आप बढ़िया खेले। Ibang और वहीं logical पे ध्रुव को solution Mizo thì se Mizo se boina ga ta khum thi the. निकलने के लिए ये प्लेयर्स हैं तैयार, पर मैं ये सोच रहा हूँ ये क्या khả năng हवर chị क्राफ्ट first के time अलावा thì कोई और khả năng chị दूसरी chị गाड़ी chị नहीं bộ उठाई cái जाएगी, उनको तीसरा bộ हवर solution क्राफ्ट भी मिल provide गया, nằm đó और Yeah, अब ball चौथा भी खोज लीजिए। ball thế ball yeah phải thế Zuti ông ang liệu galit đấy phải dito thế Zuti ông watch liệu nè party ko na जितने भी रील्स बने थे đấy tại और nghĩ Zuti phải watch thật party thế ko ông liệu होने वाले, बट चलिए उससे बात करेंगे đấy एफएल के cái लिए और पे अच्छी शुरुआत हुई, audience रिवेंज में का भी thêm एलिमिनेशन cái हो hype चुका है casting स्मार्ट hot से। bằng bộ không ai दूसरे nung मैच gì में rồi एटलीस्ट đây वो gì कुछ cho con पॉइंट्स tôm कमाने mò में कामयाब हुए थे, बट मैं bèn सोच ve रहा lên था điều ये sụ जो ve स्टेज lên ऑल điều की टीम ने तो यहीं से लूट करके thì ra Korean Austin ho phải ai mà thì hot ai top Việt Nam phải gì nung chứ liệu उन्होंने हवर watch क्राफ्ट नहीं party देखा जिसका फायदा ट्रू Zuti रिपर्स को ao मिलने kay ka वाला है एक Việt और हवर Nam क्राफ्ट के रूप में। और चलिए Bull हमारे लिए तो Sol अच्छी बात है, Aussie ho kiba na ga देखने say में yung ये sa प्लेयर्स India ho बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। पोचिंग की Bull पूरी Sol तरीके game से से खाली है, game अगर style wa चाहे cha तो North पोचिंग के America आसपास dan वाले एरिया में dominate na wa जाके bo इंतजार कर सकते हैं, global पहले meta स्टेज का zoom शिफ्ट gì sana दूसरे की तरफ जाने की बारी जब आएगी। साथ ही साथ chỉ bang bang बीजी thôi thì giờ पहले India प्रीवियस ang गेम में उन्होंने भी अपनी रोटेशन की शुरुआत की, और ट्रू रिपर्स भी अगर उस ब्रिज की global तरफ meta जाने ni का ki प्लान chep कर la रहे हैं India तो एक दूसरे के आमने na सामने qualify kit lo din na आने की वो पॉसिबिलिटी रहने वाली है। India चलिए meta कोई zoom दिक्कत ya है नहीं, आसानी से एजेस में आने में कामयाब Me हो चुके player हैं, ni बचे कुछ khasa ही wang chuna. माइनर कंपाउंड्स को चेक करके Opinion ट्रू pi रिपर्स ong to इस very प्लान से valid कंप्लीट करने वाले हैं। dai SN hot bang na adapt thi ang ai chu team ho na game style na mun meta zoom zoom ma adapt ka adapt min the है कि वहां पर उन्होंने गाड़ी चेंज si की nei हो, to ka हवर se ha क्राफ्ट छोड़ vel दिया हो प्लेयर्स के लिए, और India कब meta गाड़ी chu लेकर के mana जो कंपाउंड्स होते हैं एक जोड़ा Korean बनकर player के ong आपको ki chep खेलने la को ong adapt zo di lo देखने chu को na मिले। chu bang अभी bang chu देखेंगे जब जेली वहां से निकलेंगे तो क्या 3 हवर bo क्राफ्ट chu हैं या DRX फिर shot bang 2 di ke हवर ong chu ka क्राफ्ट वहां पर adapt मौजूद pai है। yen ki पर no खैर se chan जो ha जोन का शिफ्ट है वो भी आ चुका है, DRX Japan बहुत team खुश ki है, lo do mo बैकड chu डाउन adapt ha ब्लॉक, sa और ki na वहीं पर जो पूरा सेंटर है जोन का वो बन चुका है। वीपी की टीम global फिलहाल level करने a के लिए तैयार है। daily a kap ni ti le ho yai the da chi chut possible long lo chu na दो na हवर ti lo a क्राफ्ट, बट हाँ एजेस खेलने के लिए koi koi ट्रू nong रिपर्स kap di इस lo वक्त chu chi एजेस ai में जाने वाले हैं। जेली team hin adjust na team lo se एजेस साइड ve पर le जाने sin के लिए तैयार, second पर day अभी ham पीछे ting le हॉट hong टॉप्स के adjust एक web ji प्लेयर lo है chu जो थोड़ा ye chu पीछे है, ma पर ho अलायंस वर्सेस बीजी लगता तो है कि पहली शुरुआत हमें देखने को मिलेगी। सोच विचार किया जा रहा है क्योंकि बैकलाइन पे भी आप देखिए एक टीम है, थर्ड पार्टी की first day in पॉसिबिलिटी adapt zo रहेगी, he अब उनके dong ऊपर शॉट्स आए second day जिसके be कारण वो adapt डैमेज तो यहाँ te से इस फाइट को global ना ho करते हुए na sa सर्कल की no ओर अच्छे हिस्से में जाने का फैसला किया गया, उन हार्ड कवर्स को टारगेट करने का डिसीजन। चलिए अच्छी बात रही क्योंकि पहला मुकाबला बेहतर साबित हुआ है sound hard is sound well
मोमेंटम को वो आगे लेके जाए, पहले कुछ स्टेज में फाइट ना करे, उन सर्वाइवल को उज़्बेकिस्तान ते है ये काफी ज्यादा बेहतर WBG की भी रोटेशन से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। Uzbekistan nasai ti sa Uzbekistan imi team ho bet kal ngalal he BGIS ai imi team hung chile ball nice
जो मिलिट्री बेस गए थे वो अब धीरे-धीरे करके सर्कल की तरफ आना स्टार्ट कर रहेगी। वो एक टीम रहेगी जो कि टू रिपर्स के बहुत पास से गुजर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे फाइट की पॉसिबिलिटी है नहीं। लेकिन जहाँ पे एक्चुअल में फाइट की शुरुआत हुई है, डब्ल्यूपी उतने ज्यादा खुश होंगे नहीं। रिवाइवल चलिए वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। पिछली बार भी रोटेशनल क्लैशेस में फंसे थे कई सारी टीम्स, इस बार भी हम देख रहे हैं वॉस्टन को देखिए कैसा वो चेस कर रहे हैं उस एक प्लेयर को लाइनअप में चेस करते हुए उन्होंने खदेड़ तो दिया, पर अभी भी वीपी वो जोन के अंदर नहीं है और साथ वो भी अभी तक जोन के अंदर पहुंची नहीं है। हार्ड बॉय और अभी भी वो प्लेयर क्लोज नहीं आया, पर ग्लोरी वो जरूर क्लोज गए थे। और आप सोचिए वीपी उन्होंने ओपन में रिवाइव करना सही नहीं समझा, उन्होंने गाड़ी के अंदर प्लेयर को बिठाया, स्क्वाड हाउस के अंदर गए और अब अपने चारों प्लेयर्स चलो है उज़्बेकिस्तान जोन के एजेस तक पहुंच चुकी है। अगला जोन ठीक है भले उनके पास ना आए पर स्टिल जोन ओरिएंटेड VP होता gak ikat tu na tu mai khat na nok leo dang mal khat pan gachis do उनके पास आपको दिखाई देते हैं। लूट की कमी जरूर रहने वाली है, पर वहीं पर ट्रू रिपर्स हवरक्राफ्ट का रोटेशन अभी तक खत्म हुआ नहीं। और जैसे मैं कह भी रहा था एज वाली जो रोटेशन है वो होवरक्राफ्ट जो कहाई मिली है। और आप सोचिए बिल्कुल सदर्न एजेस से होते हुए वो प्लेयर बिल्कुल वेस्टर्न एजेस पर पहुंच गए और उसके कारण एक फाइट की पॉसिबिलिटी वहां पे पनप रही है। ऑल के काफी ज्यादा पास है, मिड रेंज की वो भिड़न रोटेट ली कितने था बॉल दा एक वो आप देखिए वेस्टर्न साइड में एक गंग में ना ये देखो लकी हिट में जैसा वो रोटेशन आपने बताया है भी कुछ समय पहले चंग जेली जी था लगभग वो वेस्टर्न एज पे आने में हुए कामयाब। और सर्कल का भी जो हार्ड शेप है वो वेस्टर्न साइड है, काफी कमाल की ये रोटेशन। लेकिन अब फाइट की बारी रहेगी सदर्न साइड से आप देखिए और भी कई सारी टीम्स आ रही है जो कि ट्रू रिपर्स को चैलेंज करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। लेकिन हवरक्राफ्ट का इस्तेमाल रहने वाली है और उसकी खोज पे निकल तो चुके हैं, बट डीआर एक सर्कल का जो डॉट सेंटर था जो शिफ्ट आया उनसे थोड़ा दूर और इसी कारण उनके एक खिलाड़ी को नॉक किया गया मिड रेंज से। देखिए ये एरिया किसको नहीं याद होगा, क्योलमाओ का परफॉर्मेंस हमने यही शानदार देखा था। अपनी टीम को दूसरे पायदान तक वो खिलाड़ी लेकर आया था, पर जली थोड़ा दूर निकलने की कोशिश है। अलायंस की जो प्लेयर्स हैं उनको भी स्पॉट किया गया है, पर जली अपनी टीम से थोड़ा ज्यादा दूर फाइट दा पो ले तो वांग पार्टी पड़े हुए थे, उनका एलिमिनेशन हुआ। ये को अपना फ्रैग मिल गया पहले ही मैच में 27 पॉइंट्स निकाले और अभी हम उनको देख रहे हैं पहला फ्रैग निकालते हुए। पर जली उन्होंने शॉट्स दागे, पर वो गाड़ी जा रही थी जिनके ऊपर उन्होंने शॉट्स दागे, पर जली का ट्विस्टेड माइंड्स के वो प्लेयर थे। पर इसी बीच रिवर्व वो डाउन हुए, रिवर्व का एलिमिनेशन हुआ। फ्लैश उन्होंने पहले ही अपनी को गवा दिया था, 3 प्लेयर्स के साथ उन्हें भी आगे बढ़ना होगा। पर अभी आप डिफरेंस देखे रावण 29 और उसके बाद सीधा 12 पॉइंट्स। वो रिलैक्स होकर खेल रहे हैं और वो स्प्लिट साफ साफ दर्शाता वो कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस रैंगल के लिए। हालांकि अगर एक खिलाड़ी को गिराया गया जोकर जो कि सर्कल के बाहर है तो थोड़ी सी मुश्किलें वहां पे जरूर पड़ने वाली है। चलिए जब सर्कल आएगा उसमें और विस्तार में बात करेंगे। बट ट्रू रिपर्स दूसरी 3 टीम्स इनके आंखों के सामने आ चुके हैं। जली थोड़ा एडवांस जली को नहीं डिसीजन बनाया जाएगा किसी और एंगल को होल्ड करना है या फिर जली जो रोटेशन की शुरुआत हुई है जो माउंटेन होल्ड करके थे अब छोड़ने की बारी आ चुकी है। अननोन के अगेंस्ट वो अटैक वो चिक्की के आसपास उनके जीरो पाजी लेके तंग करता एग्जीक्यूट करने के बाद गटका के नीचे से वो आगे आना अवांग फटा निंजे ते हो कोना बो दो ढूंढेंगे। पहला फिनिश पॉइंट अपने लिए यहां पे बनाया जा चुका है और एक कमाल की शुरुआत वीपी के लिए। निंजे ते हो खबर कितना अच्छा नहीं गया था निंजे ले शैन है पीछे में बता के बाद एक खिलाड़ी को गवा चुके हैं। दूसरे खिलाड़ी की आप एचपी देखिए ना के बराबर और ट्रू रिपर्स के सामने से वो गुजर रहे थे। इनिशियल वो शॉट लेने की प्रयास किया गया, हालांकि वो ट्रू रिपर्स की तरफ से नॉक नहीं निकाले जा रहे। बीजी के खिलाड़ी रहेंगे जो कि बैक टू बैक नॉक निकाल रहे, बट क्या कंफर्मेशन का मौका मिलेगा? जवाब रहने वाला है नहीं। वर्टस प्रो दिक्कतें बढ़ रही है अब उनके लिए, जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और प्लेयर्स हैं। एनआरजी वो भी शॉट लेना चाहेंगे। बीजी उन्होंने अपना जो फ्रैग था वो कंफर्म किया और अब जहां पर प्लेयर जा रहे हैं वहां पर जली कॉम जी है वो मौजूद है, शॉट देने की वो कोशिश करेगा प्लेयर। ट्रू रिपर्स प्रो जाएंगे तो जाएंगे कहां पर? मल्टीपल तो मीन का वो वन इज बी पे उन्होंने वर्टस प्रो को देख लिया। ये हो तो किस मोंग वहां से निकल गया और अन्नसबा एक बात पोस्ट उनके पास है। बट ट्रू रिपर्स टॉनी के को मन चेते हो सकता है कि उनको फाइट लेनी पड़े।
Alex देख रहा है Virtus Pro है टीम ना शायद सही चंगा बा PMWC आउं सुन बस मैं सोच रहा था मेजी कब वो फाइनल स्प्रे उनके ऊपर और एलिमिनेशन कितना बेहतर वो किस्मत हमें तंग से आसर रिवाइव कुछ आते ही ना रोटेशन में लेकिन एक वक्त तो आएगा कि किस्मत आपका साथ छोड़ India देगा tense बहुत बॉल थे चाहे बो आपका सबसे अच्छा साथी होता है अपने सराउंडिंग से बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे जिसके कारण वो एलिमिनेशन उनका आया एक और खराब क्या बात है जेली से जो बॉल लो ले हो यार अदंग बॉल दे तो लोग शिफ्ट लेता हुआ नॉर्दर्न King साइड का Sock शिफ्ट no ट्रू मजा रिपोर्ट्स अब बाम सर्कल के बाहर है उन्हें पाई रोटेशन नहीं की था जरूरत लो पड़ने संग वाली नहीं है था जस्ट और उस की रोटेशन में बदम फाइट लो होने की चांसेस बहुत ज्यादा बट एआरसी सीधा आ चुके डब्ल्यूबीजे के सामने इनिशियल लॉक यहां पे निकालने की जब बारी है तो बैकलाइन से मल्टीपल टीम से जो कि एक दूसरे के ऊपर शॉट्स लेने वाले बट बॉय उनका कंफर्मेशन आता हुआ एफएल की तरफ नेहरू दे वो होगी हार्ड बॉय वो अभी भी हैं ग्लोरी मनी उनको रहता हमने देखा हार्ड बॉय उनके करीब वो ग्रेनेड डैमेज पड़ा है ग्लोरी उनके एचपी पहले से ही कम है ऑर्डर वो बगी लेकर आगे गए उनके ऊपर वो शॉट्स दिए गए पर शॉट्स उतने अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं हुए पर डब्ल्यूबीजी Info वाला में उनके पास ग्रेनेड्स अभी भी बचे हुए हैं जवाब नहीं है क्योंकि उनके पास ग्रेनेड्स भी नहीं है उनके पास स्मोक्स भी नहीं है अगर ये वो फाइट जीतते हैं तो शायद थोड़ी जो लूट है उसको वहां पर इकट्ठा किया जा सके मैं ट्रू रिपोर्ट्स को देख रहा था कि क्या उनके पास वो रिपेयर किट मौजूद है क्योंकि जो एक हवरक्राफ्ट था उसमें तो बहुत ज्यादा डैमेज ऑलरेडी मतलब तू गेला दी से खूब अच्छी खबर रहेगी कि वो ब्लास्ट नहीं हुआ था अगर रिपेयर किट उनके पास हुई ला होगा जो तो वाची मोय रिपेयर करके जोन के अंदर जाने की कोशिश करी जाएगी पर अब Cehin do na na le wa kolong ga ka te di de ta WBG और ये कितना Po ma ti mo pa ma hon ka ki na यहाँ से निकलना बट दूसरी तरफ मुश्किल हां है नो खत में फाइट की शुरुआत करते हुए सर्कल के बाहर से एनआरजेड उन रोटेशन कर रहे हैं और मैं बस याद दिला दूं कि इन दोनों ही टीम की रोटेशन बड़ी सिमिलर थी एक ट्रू रिपर्स मिल्टा से निकले थे और मिल्टा पावर से निकले थे एनआरजी और दोनों ही टीम सदर्न साइड की तरफ आके एक दूसरे के सामने वो चैलेंज रखते हुए हालांकि कंफर्मेशन यहाँ पे मिला नहीं है ट्रू रिपर्स करने वाले इंतजार एडवांस तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे उस फाइट की तरफ सिर्फ और सिर्फ सर्कल को ज्यादा महत्व दिया जाए इसका ध्यान रखा जाएगा बट ये रिवाइवल एग्जीक्यूट करना एक बार फिर से निकलना चौथे स्टेज पे हम आ चुके हैं पांचवें स्टेज की तरफ हम बढ़ने वाले व्हीकल में उस खिलाड़ी को उठा के रखा गया है लेकिन ट्रू रिपर्स के पास अपॉर्चुनिटी की कंफर्मेशन जरूर इस पॉइंट पे ढूंढ पाए कुछ हद तक प्रॉब्लम ये है कि जिस प्लेयर को नॉक किया था हाँ तो इनती सोच आदि जो मुंजो से टीम था और अभी जो उनको लेकर जाने की कोशिश फाइट ले लिया यानी कि ट्रू रिपर्स Twisted Mind है वहां पर नहीं मिलने वाला और गीत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फातिया Twisted lang ko chele उनको वहां पर डाउन किया गया और बीजी के Magnus goal on kina मुश्किलें बढ़ने वाली ट्विस्टेड माइंड वर्सेस ट्रू रिपर्स क्या इनकी यहां पर फाइट होने वाली है लॉर्ड वो सीधा गाड़ी के अंदर बैठे हुए जेली और क्राफ्ट लेकर वो खिलाड़ी आगे चला गया पर क्या लॉर्ड वो डाउन कर दिए गए मतलब क्या दिला कि लॉर्ड पता नहीं हर्ष वो डाउन हो गए अच्छे हाइड्रो वो भी डाउन और हवन क्राफ्ट के अंदर ट्रू रिपर्स और उनके वो बचे हुए दो खिलाड़ी मौजूद है कीपी वो ला क्योला माओ करके लॉर्ड ने वो शॉट कनेक्ट किया क्योला माओ आउट my third party pai ke na zero kill one kill नहीं होगा ना इसी जो अच्छे न लंग लंग से वांग चु पाई हम लोग जी all day lang से用了 BG station third party साउ दोनों ही मैचेस बहुत ज्यादा साधारण साबित हुए खच नहीं थो थो ले होवर बोट नहीं ले बदुंग लंग तो चेंग में ले बदुंग ना जो सा करके ये फाइट और एक्सटेंड होता चला जा रहा है min ka lo de वो ग्रेनेड अगर हल्का सा भी इंपैक्ट क्रिएट किया है तो वो एलिमिनेशन के लिए काफी होगा advertise वो भी स्ट्रीम पे advertise के लो advertise कर ये पूरी भिड़ंत होने वाली और आखिरी कुछ अलायंस इस बात से वाकिफ और इसी को देखते हुए प्रीमियम नहीं है दो जी ये ब्रीफ ब्राउजर आ हुई वेटलेस का म्यूजिक ऑन द एज फिनिशेस है वो बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं 5 फिनिशेस यहां पे निकाले जा चुके हैं और एलिमिनेशन एक के बाद एक टीम्स का होता हुआ मुश्किलें काफी ज्यादा बड़ी वहां पर ट्रू रिपोर्ट अरे वे कितना दी हो इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी था नहीं और जैसे मैंने कहा कि वहां पर था और लॉर्ड को किसी ने चेक नहीं किया गाड़ी को किसी ने देखा भी नहीं पर वहीं पर टीम फ्लैश पे तो ना फाइट ला है ना इन फाइट ला ले थर्ड पार्टी पाई है जो डब्ल्यूबीजी जैसे हमने पहले चर्चाएं करी थर्ड पार्टी बोलो को गंगवाल बचो बाल ट्रबल्स का यूज उन्होंने पहले ही किया जैसे किसी टीम को बाहर नहीं कर पाए वुल्फ उन्होंने अपना कंफर्म किया इंग्लिश का स्टार वन से पाओ छे जो हार्ड बॉय के रूप में 1 सेकंड में डिले लो ना एटलीस्ट वो अपने एक प्लेयर को तो रिवाइव कर पाएंगे हां दिखा रहा हूं ना हां लो कीपा रिएक्शन टाइमिंग फिर सन फाइट्स की तरफ आने वाले हैं बिल्कुल ओपन ग्राउंड पे ये आखिरी के स्टेजेस हम देख रहे हैं
WBG उनके पास बहुत प्यारा एरिया है, बट ग्रेनेड्स की संख्या मुझे लगता है कि अब यहाँ से क्या समाप्त हो चुकी है, क्योंकि उनके सराउंडिंग में आप देखिए कई सारे प्लेयर्स हैं, बट वो ग्रेनेड्स नहीं करे, क्योंकि इनिशियल मुझे लगता है उस पॉइंट पे काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया होगा। कभी भी उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। स्टिकी बॉम्ब आई थिंक वहां पे इस्तेमाल किया गया, लेकिन उससे कुछ खास फायदा होगा नहीं। काउंटर ग्रेनेड्स आने की शुरुआत हो चुकी है, पे डैमेज काफी ज्यादा बेहतर। WBG कैसे बच पाएंगे? स्प्रे भी हमें आता हुआ देखने को मिला। ऑर्डर उनके ऊपर वो इनिशियल लॉक और काउंटर ग्रेनेड्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। मेजी वो कंफर्मेशन का भी यहाँ पे काम करके जाएंगे बैकलाइन से। वो थर्ड पार्टी भी आता हुआ। WBG बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे सैंडविच हो चुके हैं और यहाँ से बच के निकल पाना लगभग नामुमकिन सा लगता हुआ। बस फ्लैश की तरफ से एक और ग्रेनेड आने की दरकार थी और वो सारे फ्रैग्स फ्लैश के पास जाने वाले थे, पर WBG उन्होंने अभी तक अपने प्लेयर्स को रिवाइव तो किया है और क्या वहां पर रेग्नम वो भी पुश नहीं करना चाहते, पर बोर वाई जरूर थे, पर आते ही वहां पर उनका एक लाइन डाउन किया गया। सामने टीम फ्लैश बोज उनके प्लेयर HP डाउन हुई है, पर अपने आप को वो हील कर लेंगे, पर बोर उनके सेंटर की रिवाइव होते हुए टीम फ्लैश जी नहीं, वो ग्रेनेड वहां पर दागा अगर नहीं गया। और WBG उनको आप देखें, उन्होंने अपने तीनों प्लेयर्स को रिवाइव कर दिया और WBG अगेन अपने चारों प्लेयर्स के साथ इस मुकाबले के अंदर। I mean, WBG कैसे पॉसिबल करके गए? जो अलग-अलग एंगल में अलग-अलग टीम की तरफ चले गए, उसका फायदा वो रीसेट करने में अपने आप को कामयाबी प्राप्त किया, लेकिन काउंटर बहुत कमाल का ग्रेनेड क्लोजन करने की बारी आ चुकी है। करके जा पाएंगे स्मोक के सामने से वो शॉट्स अंदर से वो काउंटर और रैंडम प्रेडिक्टेबल शॉट्स में कनेक्शन बना के गया, बट उसके बाद एलिमिनेशन के लिए काफी था। आपने वो सब किया जो आपके लिए वो सर्वाइवल के अंक निकाल के लाए, बट वो ग्रेनेड क्या WBG की तरफ से फेंकी गई थी। वो गाड़ी पहले से ही डैमेज हो चुकी थी और अब गाड़ी ब्लास्ट भी होती है जब डैमेज ज्यादा हो जाता है, थोड़े समय बाद अपने आप वो ब्लास्ट हो जाता है। और WBG ने देखिए क्या सही दिमाग का इस्तेमाल किया, उनको पता चला कि पीछे वाली जो टीम थी वो एलिमिनेट हो चुकी है और क्या बढ़िया इंडियन टीम ही ले चटनों चली दे और वो अब अपनी लूट कंप्लीट करने वाले हैं। मास्टर प्लान WBG का फ्री लूट फिनिश स्पीड रीड ARC पाहुन का होनी चाहिए, जहां पर आप बिल्कुल श्योर है कि हाँ पीछे वाली जो टीम थी वो कंप्लीट हो चुकी है, हम लूट इकट्ठा कर सकते हैं। और अब WBG उनके पास वो स्मोक्स भी आएंगे, उनके पास वो ग्रेनेड्स भी आएंगे, उनके पास वो जो वेपन है उसे भी चेंज किया जाएगा। और अभी भी आंख उनके दो खिलाड़ी बच रहेंगे, एक खिलाड़ी को सामने WBG के डाउन कर दिया गया, वापस कोशिश रहेगी, पर 33 आगे बढ़े। रैमजेस उनको डाउन किया गया, उनका एलिमिनेशन हुआ, पहला फ्रैग WBG के खाते में। और आप सोचिए ग्रेनेड्स अब आ चुके हैं और ये तो अब जोन के भी बहुत करीब है। मतलब एक पॉइंट पे हम एलिमिनेशन की बात कर रहे थे और अब हम यहाँ से इनके अच्छे मैच की अब बात करना स्टार्ट कर दिए। इससे बेहतर क्या हो सकता है किसी भी टीम के लिए? WBG मिड रेंज पे खिलाड़ी को ढूंढते हुए, लेकिन अब यहाँ से जो अगली चुनौती है वो रहने वाली है सर्कल। इतनी सारे क्रेड्स से कि इत्मीनान से अपने को फाइंड आउट किया और व्हीकल स्टार्ट करके एक बार फिर से सर्कल की तरफ जाने की बारी आएगी और सीधा रेगम का की तरफ बढ़ने वाले, जो पिछली बार नहीं कर पाए, इस बार कर पाएंगे, क्योंकि WBG इस बार बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी की है। बैकलाइन पे भी उन्हें वहां पे डाउन किया गया ताकि वो थर्ड पार्टी स्प्रेज आए और उसके बाद ये ग्रेनेड क्या वो कनेक्शन बना के जाने वाले, क्योंकि डैमेज इतना ज्यादा फेंका गया कि अब बच के निकल पाना मुश्किल। शुक अपने व्हीकल के साथ गए, डिस्ट्रैक्शन वहां पे क्रिएट किए जा रहे हैं। इनिशियल डैमेज बहुत प्यारा आया है और इसी के साथ लग तो रहा है कि एलिमिनेशन होगा और जी हां एलिमिनेशन हुआ। WBG इस फाइट को जीतेंगे और अपने लिए 5 फिनिशेस बनाए। ARC पास कोमला कुमचिना उन्होंने फाइट नहीं जीती है, लूट भी कमाया है, जोन के अंदर एक बढ़िया पोजीशनिंग भी उन्होंने कमा लिया। वो डिप उनके लिए बहुत अच्छे ये देखो काम करने वाला है और WBG यहाँ शानदार वो खेल कर गए, पर ग्लोरी को वो मिस कर गए। वो जो ग्लोरी से आता हुआ अपनी टीम के लिए ग्लोरी, उन्होंने वहां पर वो दोनों फ्रैग्स कंफर्म कर लिया। WBG उन्होंने जो दूसरे के साथ किया था वो उनके साथ हो गया और अब ग्लोरी खिलाड़ी जो परेशान करते हुए WBG को। सर्कल का भी श्रिंक आ रहा है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे हो नहीं, एडवांस करेंगे तो ओपन हो जाएंगे। ग्लोरी बैकलाइन से आपको धकेल रहे, लेकिन इनके बैकलाइन से भी इनके ऊपर शॉट। ये चल क्या रहा है मेसी? आप अपने सामने देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन बैक साइड को भी उतनी अच्छी तरीके से देखने की जरूरत।
अगर कहीं से भी चूक हुई तो एलिमिनेशन ही एकमात्र रास्ता। बट इन सब चीजों के बीच में WBG एक बार फिर से अपने आप को सर्कल की तरफ आसानी से लेके आने की कोशिश करेंगे। हालांकि अब आसान नहीं होने वाला क्योंकि अगला शिफ्ट साउथ ईस्टर्न कॉर्नर को फेवर करता हुआ INF एक लॉकी टीम के पास सर्कल का पूरा एडवांटेज। और आप इमेजिन करिए कि ट्रू रिपर्स भी इसी के अराउंड हमें देखने को मिल रहे थे। काफी कमाल का ये मैच हो सकता था। खैर अब अपॉर्चुनिटी INF के पास है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो टॉप 3 पूरी टीम्स पर हैं ही वो होंगे अपने ये चार बॉल प्लेयर्स के साथ सरवाइव कर रहे हैं। अगर ये एक और चिकन लेकर जाती है तो 2 मैच में ही 50 का आंकड़ा वो क्रॉस कर जाएंगे और उसके बाद पहला प्लेस तो आप भूल जाइए कि आपको मिलेगा। अलायंस की टीम वो 20 पॉइंट के साथ है। 9 फ्रैग्स तो उन्होंने इस पर्टिकुलर मैच के अंदर निकाल दिए। अलायंस रेज को आप देखें 2 फ्रैग्स निकाले 14 पॉइंट्स के साथ है। पूरा जोन का एडवांटेज उनके पास। DRX जोन ही चुना ये अच्छी शो जोन के अंदर है पर अब टीम अलायंस उनको यहां से फाइट निकालना होगा। नहीं होई मात्र वो एक फिनिश लेकर जा पाए और WBG ते नहीं सर्वाइवल इनके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि जोन के बाहर है। जाने के लिए काफी सारी टीम से उनको होकर गुजरना होगा। साकुरा लगता है कि बूस्टर्स उनके खत्म हो चुके हैं। अभी तक अपने आप को पूरी एचपी पर उन्होंने किया नहीं है। पर WBG क्या वो सीधा इन्फ्लुएंस रेंज की तरफ जाने वाले? जी नहीं, सामने एक स्मोक डाला था, गए तो सही पर गाड़ी थोड़ा ज्यादा दूर निकल गई तो वो फंस गए। ऑर्डर वो भी डाउन और लिल बॉय उनको एक फ्रैग मिला और अलायंस उनके पास जाता हुआ वो दूसरा फ्रैग। बट स्टिल मेजी जहां जिस हालात में WBG को हमने देखा था वहां से टॉप 5 में लाके रख देना, इंपॉर्टेंट फिनिशर निकाल लेना, वो खुश होंगे। मतलब हम हमारे एंगल से तो मुझे लग रहा है कि वो खुश ही होंगे क्योंकि एलिमिनेशन से बच के उन्होंने इतने पॉइंट्स निकाले। बट ये जो पिछले मैच में डोमिनेशन था क्या इस मैच में ही बरकरार रखने वाले? क्योंकि 4 के 4 खिलाड़ियों के साथ वेस्टर्न साइड से आगे जाने की कोशिश की जा रही है। बट INF जिनके पास सर्कल का एडवांटेज सबसे बेहतर था, हार्ड कवर के साथ है, वो नॉक तो करेंगे ही, कंफर्मेशन भी निकाला जाएगा। ये इस बार उतना अच्छा कवर इनके पास है नहीं, व्हीकल के साथ ही वो कवर बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा सर्वाइवल गेम हम देख रहे हैं। ह्यूनबेन उन्होंने भी अपनी फाइट की शुरुआत की, इनिशियल नॉक उन्होंने भी ढूंढ लिया है अलायंस के ऊपर। पर इन्फ्लुएंस रेज वो तो इंतजार करेगी, उनको भी पता है कि भाई सभी को आना है। उनको पता है कि पीछे अलायंस और DRX की फाइट चल रही है और सामने ये कि एक प्लेयर को दो उन्होंने DRX यहां से किलन हो गया है पर NC2 बिल्कुल एज पर वो खिलाड़ी गया और एज पर रुक गया और एक बार फिर से फर्स्ट डे ही में जाएगा सीधा DRX और रेज के पास। ये ते नीड को वे के आगे आना होगा। सोम लेंगा कि चाहिए DRX मल्टीपल जो ग्रेनेड्स हैं वो अब डाले जाएंगे अलायंस के ऊपर। वो जो खिलाड़ी नॉक पड़ा वो उनको भी रिवाइवल मिला नहीं है और साइशे बैक टू बैक वो ग्रेनेड जी नहीं, थोड़ा शॉर्ट रह गया और जो प्लेयर अलायंस का डाउन था उनको रिवाइवल भी मिल गया। और इसका फायदा एक बार फिर से सर्कल की तरफ ही नजर लेके जा रहा हूँ। मतलब कितना कम स्पेस है यहाँ पे, आप हल्की सी भी गलती यहाँ से अफोर्ड नहीं कर सकते। वो 10 प्लेसमेंट पॉइंट निकालने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। मुझे लगा था एक पॉइंट पे INF वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने को मिला नहीं है। दो तरफ लाइक अलायंस और DRX और INF एक दूसरे के सामने स्प्रे कर रहे हैं। बट स्मोक का उपयोग करके अलायंस स्लोली आगे बढ़ रही है। तो अभी भी इनके जहन में होगा और इसी के कारण उतने खुद स्मोक कोरियन नॉलेज अपन भी अगर एक आध हिट मिला तो फिर आपको नॉक काफी आसानी से निकाल के जा सकते हैं। मैं साकुरा को देख रहा हूँ, 7 ग्रेनेड है मेजी, अगर अच्छे तरीके से रीड की गई तो बहुत अच्छे नॉक निकाले जा सकते हैं। बट ये कुछ अलग करने की सोच क्या भारी पड़ सकती है। इनिशियल डैमेज काफी बेहतर, लेकिन सही वक्त में कवर में आए। लेकिन साकुरा जो 7 ग्रेनेड की मैं बात कर रहा था वो DRX की तरफ से एंगल वो नॉक निकाला गया। बट NC2 काउंटर अटैक करेंगे, साकुरा को बचा नहीं पाई, अलग बात रही। बट जो भी हो ये अब पूरे तरीके से बैकफुट पे जा चुके हैं इस बैटल में। पर कम से कम वो जोन के अंदर पहुंच गए और ऐसा लगता है कि ये अब इस जोन उठा सकते हैं। हालांकि जॉकर वो भी डाउन हो गए और मैं बात कर ही रहा था कि ये उनका एलिमिनेशन हुआ। फिर भी वो 4 फिनिशेस के साथ 4 प्लेसमेंट पॉइंट लेकर गए। मैच में उन्होंने वो 27 पॉइंट्स निकाले, इस मैच में 8 पॉइंट्स निकाले। बढ़िया गेम अभी तक उनके लिए चलता हुआ और इसी के साथ अब टॉप 3 टीम्स हमारे पास बची हुई है। अलायंस उन्होंने भी अपना डोमिनेशन दिखाया, INF मौजूद है, DRX वो मौजूद है। इन्फ्लुएंस रेज अगर चिकन लेकर जाते हैं तो फिर थोड़ा चेज कर सकते हैं ये को। पर DRX का मैच उतना अच्छा रहा नहीं था उनके लिए, साइड पे वो डाउन हो गए डाउन और अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए उनके IGL जोन नहीं लो वहां से पाई
दो टीम इन्फ्लुएंस रेंज mau loi là global vàng nè Initial damage little boy के ऊपर tao bằng बहुत nó sẽ cái ज़्यादा lòng हो गया। zone Level này 1 rồi sẽ का chỉ है ấy कि देखने को मिल रहा है मीज़ी इनके पास इस बैटल से के लिए man और low ग्रेनेड की भी संख्या कोई उतनी Real अच्छी है नहीं एडवांस करने की line शुरुआत से की गई वहाँ है ग्रेनेड से वो ग्रेनेड करना चाह रहे हैं लेकिन वो नॉक अभी तक आता हुआ देखने को मिला नहीं नंबर्स उनके पास बेहतर है और उसके बाद जो यूटिल फेंके जा रहे हैं वो प्लेइंग एरिया उनके ज्यादा बची नहीं जिसके कारण यहाँ पे मुश्किल हो सकता है बच्चे में इन सब चीजों के बीच में इनिशियल लॉक निकालेंगे कंफर्मेशन भी बनाएगा बट शॉर्टकट उसका बेहतर उपयोग क्या वो फाइनल कनेक्शन बना पाएंगे जी नहीं अभी भी इंतजार करना पड़ेगा लो इस फाइट को जीतने की यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी उनके पास लेकिन लेके जाते हुए विनर सेकंड डिनर रोंडो डिसेंट था लेकिन ये रैंगल सबसे Ini बेहतर lah ya federal mini और ni आप koi. सोचिए इन्फ्लुएंस रेंज अब इस मैच के बाद करीब पहुंच जाने वाले मुझे लगता है कि पहला जो पायदान है वो भी इनके पास है loi देखने lim वाली कोई बात है, पर là ये gì chứ là उन्होंने 8 पॉइंट्स निकाले थे lim nó là ngay đâu vâng आते हैं ओके भाई बढ़िया खेला ये ने भी बढ़िया खेला और जो Next match lagi sto kita calon dah. चलो 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 चलते रहो pump shotgun ki choi chu agumong a im phadinga chu chẳng khát bù chu chẳng khát na kha ong le kin nok a hi na iwang na miss wang chele tul na bo pai diang chu chu 50-50 na ni ke so na ni ke choi the nghe làm series jawa super chat sang khát đam mình bolte next match lagi muto kit utena gie la ngi do min sei ting ro ga play de R&B yi lo hip hop lang We pull up, new whip, skirt, skirt, gang. New chick, new watch in my bag. I feel so fly in my bag. Left side, swag. Right side, swag. Pull up, new whip, skirt, skirt, gang. New chick, new watch in my bag. I feel so fly in my bag. Left side, swag. Right side, swag. Hey, I think this girl on the molly. After that, oh, she a party girl. I think this girl up for Molly. Look how you shaking your body, girl. Damn, I'm too drunk to be tripping. Girl, I'm on plenty of your liquor. Girl, I brought all of my niggas. Hope you know plenty of your bitches. You need to get on the phone. Tell them no mamas come down. She said I'm loving your sound. Baby, I wanna be down. She said I'm trying to get with you. I wanna give you the business. She said my man can't fuck with you. So I'm about to make it official. Yeah. I'm in my bag, I'm in my bag, I'm in my bag. Your man in the cab, that's why he mad. Na 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 na. Get mad at your missus, never get mad at the nigga. She wanna roll with the realest. Homie, she know we them niggas. We pull up, new whip, skirt, skirt, gang. New chick, new watch in my bag. I feel so fly in my bag. Left side, swag. Right side, swag. Pull up, new whip. Skirt, skirt, gang. New chick, new watch in my bag. I feel so fly in my bag. Left side, swag. Right side, swag. With them wings on them doors. Watch I sway. Can't be talking to these hoes. No. Sway. Yeah. No side of the north. Ayy. Bow. Cloud. Know my niggas. Don't play. Me go. Two-tone. Ice. Petite. Yeah.
that way. Which way? My bitch, she what? On fleek, she slay. Drop off, white, cocoa, hardball. What? Niggas wanna play with the softball. Don't play, get knocked off. Ride around town with it, don't look down in it. Swim in this pool with me, I don't wanna drown. All these checks, hope they don't bounce. 500 pounds equals 500 rounds. 500 rounds. We pull up, new whip, skirt, skirt, gang. New chick, new watch in my bag. I feel so fly in my bag. Left side, sway, right side, sway. Ay, ooh, ay, swag, 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 ay. I did everything for my gang, 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 ay. Ball like 8, 9 diamond chains for the gang, gang goes first. Keep a 3-round burst. Bought my mom's a $45,000 purse, yeah. I so bright, pitch black, you gon' see me. Beep, beep, beep when I'm coming through. All your dogs investigators call them Blues Clues. Going fast when I'm feeling furious. Got you curious, bad bitch, she delirious. In a tube top, tube sock. Get your top knocked if you talk down. Ask around, I'm the youngest, flyest shit walking around. Gang. We pull up, new whip, skirt, skirt, gang. New chick, new watch in my bag. I feel so fly in my bag. Left side, sway, right side, sway. We pull up, new whip, skirt, skirt, gang. New chick, new watch in my bag. I feel so fly in my bag. Left side, sway, right side, sway. Pull up, new whip, skirt, skirt, gang. New chick, new watch in my bag. I feel so fly in my bag. Left side, sway, right side, sway. Hey, I think this girl on the molly. Other that, oh, she a party girl. I think this girl up for Molly. Look how you shaking your body, girl. Damn, I'm too drunk to be tripping. Girl, I'm on plenty of your liquor. Girl, I brought all of my niggas. Hope you know plenty of your bitches. You need to get on the phone. Tell them no mamas come down. She said I'm loving your sound. Baby, I wanna be down. She said I'm trying to get with you. I wanna give you the business. She said my man can't fuck with you. So I'm about to make it official. Yeah. I'm in my bag. Your man in the cab, that's why he mad. Nah. Get mad at your missus. Never get mad at the nigga. She wanna roll with the realest. Homie, she know we them niggas. Yeah. We pull up, new whip, skirt, skirt, gang. New chick, new watch in my bag. I feel so fly in my bag. Left side, sway, right side, sway. Pull up, new whip, skirt, skirt, gang. New chick, new watch in my bag. I feel so fly in my bag. Left side, sway, right side, sway. With them wings on them doors, watch I sway. Can't be talking to these hoes. Sway, yeah, no side of the ayy. Bow, cloud, know my niggas don't play. Two-tone, ice, petite, that way. Which way? My bitch, she what? On fleek, she slay. Drop off, white, cocoa, hardball. Niggas wanna play with the softball. Don't play, get knocked off. Ride around town with it, don't look down in it. Swim in this pool with me, I don't wanna drown. All these checks, hope they don't bounce. 500 pounds equals 500 rounds. 500 rounds. We pull up, new whip, skirt, skirt, gang. New chick, new watch in my bag. I feel so fly in my bag. Left side, sway, right side, sway. Ay, ooh, ay, swag, 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 ay. I did everything for my gang, 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 ay. Ball
Ballet 8-9 diamond chains for the gang. Gang goes first. Keep a 3-round burst. Bought my mom's a $45,000 purse. Yeah. My eyes so bright, pitch black. You gon' see me. Beep, beep, beep when I'm coming through. All your dogs investigators call them Blues Clues. Going fast when I'm feeling furious. Got you curious. Bad bitch, she delirious. In a tube top, tube sock. Get your top knocked. If you talk down, ask around. I'm the youngest, flyest shit walking around. We pull up, new whip, skirt, skirt, gang. New chick, new watch in my bag. I feel so fly in my bag. Left side, sway, right side, sway. We pull up, new whip, skirt, skirt, gang. New chick, new watch in my bag. I feel so fly in my bag. Left side, sway, right side, sway. Pull up, new whip, skirt, skirt, gang. New chick, new watch in my bag. I feel so fly in my bag. Left side, sway, right side, sway. Hey, I think this girl on the molly. Other than, oh, she a party girl. I think this girl up for Molly. Look how you shaking your body, girl. Damn, I'm too drunk to be tripping. Girl, I'm on plenty of your liquor. Girl, I brought all of my niggas. Hope you know plenty of your bitches. You need to get on the phone. Tell them no mamas come down. She said I'm loving your sound. Baby, I wanna be down. She said I'm trying to get with you. I wanna give you the business. She said my man can't fuck with you. So I'm about to make it official. Yeah. I'm in my bag, I'm in my bag, I'm in my bag. Your man in the cab, that's why he mad. Na-na-na-na-na. Get mad at your missus, never get mad at the nigga. She wanna roll with the realest. Homie, she know we them niggas. Yeah. We pull up, new whip, skirt, skirt, gang. New chick, new watch in my. This ain't just a face, no, it's a destination, not a silhouette. Paper bag, teenager love, we got that original thing. That cotton canvas, Chuck Taylor, never gonna wear out. You and I forever. Ain't a fine bone or a porcelain china, no, it's a 24 karat diamond. We're never ever gonna break it. You and I forever, you and I forever. Yeah, young and susceptible to peer pressure. I made her mine, it was for sheer pleasure. And I had my guard up, instinct off for fears. Bad luck kept my heart in a secured area. But 3 years later, still here with her, in her arms embracing her. Her charming grace stage just permeate my heart. And we be switching gears through ups and downs. We always make it work, we conciliate, give each other space, but we never stay apart. Hey y'all, what's up y'all? This is our love story. A desperado with a chick who ride or die for him. I know my baby loves me. Absolutely adores Finish each other's sentences like it ain't annoying and corny. It's the anniversary of 2 darts from Cupid to meet in a two-lip sync in a heartbeats moment. The truth and strings were attached. Never be elusive, we're never gonna lose it. True shit. Confess my love and proved it to this crazy, sexy, cool chick. And it lifted its boat. Everything struck a chord. And it's been a slow dance romance to the same good music. It's just a face, no, it's a destination, not a silhouette. Paper bag, teenager love, we got that original thing. That cotton canvas, Chuck Taylor, never gonna wear out. You and I forever. Ain't a fine bone or a porcelain china, no, it's a 24 karat diamond. We're never ever gonna break it. You and I forever, you and I forever. Sometimes I sit and think about it. Girl, I need your love and I can't live without it.
Yeah, I chase the fame and the fortune, I dream about it, fiend about it. Then you smile and say the things that keep me grounded. Yeah, keep me grounded, but support me climbing the steepest mountains. If there ever was a key to my heart, I think you found it. Your smile is my strength, my joy, the reason I'm vowing that I would stand in the rain. Take all the blame, bear all the pain, and never see you frowning. I don't know just what you see in me. You're a scenery. When the chips are down, you stick with me. Never leaving me. You believe in me, even though you know it's been a struggle lately. But I'ma make it wait till we be the power couple that the other couples wanna double date with. From the gutter to the upper echelon, I'm moving you with me, doing 250 on the dash of the car with 2 C's. Yeah, I guess I do a dream rather lucid, and they do come true. I got you to prove it. We grow like 2 trees. The higher we go, the deeper the root is. The sweeter the fruit is. It's still a slow dance romance to the same good music. Face to face, no, it's a destination, not a silhouette. Paperback, teenager love, we got that original thing. The cotton canvas, chalk tailor, never gonna wear out. You and I forever. Ain't a fine bone or a porcelain shining bright. It's a 24 karat diamond. No, we're never ever gonna break it. You and I forever. 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 This ain't just a face, no, it's a destination, not a silhouette. Paperback, teenager love, we got that original thing. That cotton canvas, chalk tailor, never gonna wear out. You and I forever. Ain't a fine bone or a porcelain shining. No, it's a 24 karat diamond. We're never ever gonna break it. You and I forever. You and I forever. Yeah, young and susceptible to peer pressure. I made her mine, it was for sheer pleasure. And I had my guard up, instinct off for fears. Bad luck kept my heart in a secured area. But 3 years later, still here with her, in her arms embracing her. Her charming grace stage just permeate my heart. And we be switching gears through ups and downs. We always make it work, we conciliate, give each other space, but we never stay apart. Hey y'all, what's up y'all? This is our love story. A desperado with a chick who ride or die for him. I know my baby loves me. Absolutely adores me. Finish each other's sentences like it ain't annoying and corny. It's the anniversary of 2 darts from Cupid. The meat in a two lip sync in a heartbeats moment. The truth and strings when attached. Never be lucid, we're never gonna lose it. True shit. Confess my love and proved it. To this crazy, sexy, cool chick. And it lifted its boat. Everything struck a chord. And it's been a slow dance romance to the same good Ain't music. just a face, no, it's a destination, not a silhouette. Paperback, teenager love, we got that original thing. That cotton canvas, chalk tailor, never gonna wear out. You and I forever. Ain't a fine bone or a porcelain shining. No, it's a 24 karat diamond. We're never ever gonna break it. You and it over into a top 3 there, which is something that we didn't see in previous groups, right? It was kind of APG and then very, very flat for a long while at the start of Group Green. So now in Group Red, maybe we'll be a little bit more definitive on our top 3, but it's still very, very early days. I'm willing for well, I don't have to be willing, but I think things are going to change. Rondo is the big thing, right? Where it changes so much the dynamic of a lot of our games, purely because we get the Rondo through, teams get a massive game off the back of it, and it makes the leaderboard look a bit weird. So I think for the rest of the day, at least until like match 4, match 5, it is just a lobby playing catch up to that Rondo match, which is what India they so focus odd in Jivala terms fight of the our home tables is throughout the day. I think I prefer to see Rondo like towards the middle of the day where it's
looks a lot more even. It's easier to tell which teams are doing quite well. I think Rondo does create a little bit of a skew right at the beginning of things, but it's always fun to watch. I think it's a fun and high octane game, and I think for players, they're quite glad it's the first game of the day because it's your first match. You're very warm. You can give it your absolute all and try and get the most amount possible off the back of it. I think for Irina, obviously, that was certainly the case. I mean, yeah, absolutely. Strike while the iron's hot, right? And see if you can get those results. Because of the inherent slight randomness that exists within PUBG Mobile, right? It is a question of converting on opportunity rather than being able to. I mean, everyone has it in their wheelhouse here, right? To have massive games, to get those 20 elim chicken dinners. It's a question of how frequently can you convert on the opportunity to do that really starts to distinguish champions. So for Irina, this is great news. And I think especially coming off the performance in the Gauntlet Blank, this is something that Irina will be thrilled to have had happen so early. Silas getting taken down early by Glory here. For Regnum Kaya, I don't think they can afford to keep having these early losses in terms of players. It's not a team that it should be happening to either. I think it's like some central positioning because they know they need points. It's tough. It's tough to even give advice to them at that point either because just like if you're a fan of them, you're like, well, slow it down. But if they slow it down too much, then they're not getting enough points at all. If they aren't aggressive enough, if they're too aggressive, then they're suddenly losing players early. They yet to find that sweet balance, honestly, right now for Regnum Kaya. But you're in groups right now. Yes, you had the gauntlet, but you already had the gauntlet to try and find that balance, and that's something that should be acquired coming into your next stage. I don't want to see Regnum Kaya going through to last chance, but even if they do go for the last chance, if they don't make it through in last chance, it is a pretty big shake-up. All things considered, because you had 6 days to figure out the rhythm, and you still couldn't do it. And they're the regional champions as well, right? If they aren't representing in the finals, then that's a pretty big disaster. You're right. It's not fun. Yeah, especially with Zedwolf's debut season with them, I think it's bad. True Ripper's though on our screen, and he's going for one. Oh, he's traded off for a second, and there's no backup really. Jelly can only sit there and watch as he has to turn tail. The survivor to drive the story back to the rest of them, strike fear into their hearts. The Boars not feeling that fear right now, not against ETSH. Building cut lang to slam and the spray is huge there coming through from Shiva. The destroyer right now. ETSH now holds the door and a headshot. Beautiful. Hop out the window. Look for more. ETSH don't have the backup for the Boars players, not rallying towards each other. Doesn't realize there's a player behind him, but has got his teammate now to play against him. ETSH running through the Boars. Beautifully found. Shiva looking stylish, but doesn't quite keep his back under control. Goodness me, what a fight that was between both those teams. Baby there goes down. Now Reverb looking to finish the job off. Sneaks and Reverb still up and kicking. Nade doesn't quite make it into the building. Shiva's still up on the wall. SnowX and Exo. Ankle. Hold kept you done. They have been made to look a bit foolish by the runaround from Shiva. And I mean, Arkred just love sitting in these third-party oversights, right? We saw it from the last game. And easy for Bad Boy. He wants to collect these points. Might be able to do so here. But at the moment, everyone's kind of covered off. Shiva, I mean, I'd be surprised if they can get across for this res. He has to go now. He's just bleeding out. Yeah, Shiva's gone. Yeah, there wasn't really much help to try and get him back up in the position. And this fight has got multiple oversights on it, so it's difficult to make work. Circle over towards that north side around dip and mini dip. DR10 hold kit na ako Silas, which is far from favorable, but he can backseat game like no other. The guy has got
a big brain on him, so hopefully he'll be able to deliver that information back on over. Arcred on the north side. They sent their third-party tendrils out towards the fight we were looking at before between the Boars and ETSH. They are still holding a nice central area, and they have managed to get that regroup going on that south side Alliance, who are looking to convert on that big elimination game and looking to keep that points tally going. And it seems that they'll be safe for the time being. E-Arena late to the party on the west, though, and they are just passing school. They'll be pushing in, maybe towards Influence Rage, who are also on that north side. For now, the top 3 teams are kind of out of the thick of it. They can bide their time. Yeah, I think that for Regnum Kari in particular, it's a frustrating one because this is a very typical position for Regnum Kari as well, John. Not having Silas here is frustrating because you do want multiple sight lines available, especially when people start to crash over towards Shelter 2. Not having 4 players there does make your life pretty difficult. I think all 3 of those players, though, are capable of taking a 3v4. It's just you don't really want to have to take a 3v4 in the first place. Alliance, I like this spot. They are sending a player out wide up the hill, though, to try and scout out. I don't really want to let too many players get over towards the Wizard Tower and have oversight down towards you. But right now should be okay. A little bit quieter. Again, I am really liking the rotations here in Group Red for a lot of our teams. Yeah, you're a big fan. You love it. You love it so much. And rightly so. I think that it is certainly interesting, especially early on in a new group, right? To watch those rotational dynamics, to see how teams start to feel each other's positions out and get a feel for just how their pace of their games need to go. We'll see if that continues, because we still do have, well, not quite 3 days, but the majority of our 3 days left to go. And our next circle will, again, reveal more about the rotational proclivities of our circle teams. And it goes all the way up to the northwest. I mean, this is great for Influence Rage, right? It's great for E-Arena, potentially, as well, to hold this out. Twisted Minds, I mean, it would be great if they were all on the Tudo spot, right? In the middle of that zone. They have to make that dash, and Arcred are going to try and stop them. That south point for E-Arena, potentially as well, taking shots out their way. But they are going to go for it, and rightly so. No, hang on a minute. They're going to regroup back to the dip on the west. Yeah, I mean, it's difficult to hold that. I think that Tudo makes the right decision there, though, on the squad, is that although that position would have been lovely, it was very greedy. It was very, very greedy. And I think he realizes that the team's not going to get there in time. I'd also much rather have a 4-man squad over towards the northwest side. It's still fairly central. Reverb comes in with a nasty crash onto it. But the rest of the team is close behind. I mean, you say the rest of the team, it's just the one man actually sneaks, cannot get the best of them. They funnel back into the shelter. They'll get that res and play on as 3. A nice hold there. A little bit haphazard on the approach, but as 2-man, it's kind of excusable. You just need to go for something sometimes. Burmese Ghouls with a scrap against Geeke, or rather just Ichi with a scrap against Geeke. Steal that hovercraft, get on the bike, get out of there. Burmese Ghouls, you don't want to be sticking around too long. The blue zone's here to play. But Yatka doesn't have that position under lock. MK will be taken down with the side swipe. Will be immediately flushed as well. Ichi can't land the shots, but neither, it seems, can Burmese Ghouls. Over the top they go. And they are just not finding it. What has just happened there? As Geeke giving him a ride out of town, Ichi is knocked, but he's going to hop back in, try and reverse back on over, do more damage, create more chaos. Okay, Nezzet's now here to play. What has just happened there? They've pushed all the vehicles apart. Geeke, spray it down. I don't even know how they managed to get those elims. Either way, a comedy unfolding here for Geeke, getting 5 elims. Yeah, it's just a messiest fight I've seen in a while. They're just ramming vehicles into the players. One player from Birmingham is surfboarding on top of the hovercraft. It's not a hoverboard, just so we're all aware. Like a real Marty McFly on that one. Yeah, it's just weird. Just a weird fight. I don't know if I think I enjoyed it. Bang But I bang so don't think I Ozzy liked it, or you know? kana I think kita it's one of those mahal ones. It was ni fun, Ozzy lo but chicken very, kon very lo on lo principle. Ozzy lo We'll see if they can pick things up, because both of those two teams now, both of that, sorry, the Burmese Ghouls have a Sewa really ni tough ka time ma with lang them. ma lang Nuclear jing Zone, team they Ozzy moved lo up north towards Virtus Pro, jingle and they thema have been spotted. so Ozzy ho Vita
down in the open. Virtus Pro aren't going to let that one go. They will keep that pressure up. Next circle is going to take us central. No, it's going to go north. Hey, look who's there. It's Influence Rage. That's kind of frustrating for a lot of teams. Influence Rage getting these circles is left lang to long maon like right lang to lang nade over the top there to find some damage over towards Boston, who was the front man for the squad. Malloy now immediately has to recover this position. It goes very, very long. Doesn't get too much value off the back of it. Weibo playing a pretty good spot right now. I think teams are going to start to lock into this tomorrow, by the way, in terms of the rotations. I think there'll be a lot more central teams because there are a ton of areas quite frequently that are open to rotate through. I think that change I will come towards the latter half of the day today, or be very much something that's considered tomorrow. Milky Way, that is a crazy play from you, but I guess you have to marshal the defensive here whilst the res goes off. Yeah, he's going to be able to hold that line, stop Nuclear Zone from getting too close. Arthur, a clenched fist right now. Oh, I wish I could have stopped him, but no. Virtus Pro actually sending out into the blue zone. I don't dislike it. They're against the headland, and they know where Arthur's playing. The zone is available up on towards that east side for now. They can beat the crunch on that east edge, but where do you go from there? Because it's a direct transition in towards Influence Rage from this point. That is Pro. I'll go for the wrap. Towards Influence Rage. What is Law doing right now? I mean, some fantastic shots by Lil Boy and Diego. I guess the distraction play works. But yeah, that's very much off the back of some unbelievable shots from the rest of the squad. Yeah. That was pretty big. I think the idea for Influence Rage was to flex out in third party. I don't think they realized that Virtus Pro had actually gotten as far north as they had. Yeah. So they were flexing out to try and take them down, right? So for Federal, for Law, they were trying to create that line, get a couple more elims on board. But a brilliant response, as you said, from Influence Rage. When Law came under fire, immediately Federal Diego. The third party. So they spot it way earlier than they potentially should have done, because Law is doing some crazy maneuvers on the outside. I think there, honestly, Influence Rage gets very lucky. The Rippers moving through. Nuclear Zone gave them some trouble. Hydro go down. Ooh, there's the lineup from Weibo. And they've been on a tough side of this zone. The approach not going to happen. They do win the fight with Nuclear Zone in the end, but they bite the dust for it. 3 elims found on the match, and on the southeast side they go down. Influence Rage finally don't get a zone shift right on top of them, which is going to be good news for Weibo, actually, and potentially for Regnum Kaya here. Yeah, I mean, to be honest with you, the 3 teams that I was looking at in this lobby in the first place were actually these 3 anyway, is Weibo, Regnum Kaya, as well as Influence Rage. I think Influence Rage is a fantastic squad overall, and always has been. But those are the key teams that stand out to me. Regnum Kaya now fending off versus Alliance. Now Zed Wolf left remaining all on his lonesome. Oh! And they survive with the help of Weibo from the distance. How long, right? Zedwolf really can't stand up here. Needs to drop a smoke, and there's more players moving in. Ragnarok, you're not getting past Zedwolf. The Wolf's on the hunt, but he is the last to stand now. No teammates left to pick up, and he's going to be solo. Geekay going to roll on in. They lost one. Will they lose any more? No, because it's just the one player. Zedwolf, you can't be doing this to him. Zed just about keeps them safe, but the rest of Geekay are going to fall like flies too. Oh my days. Sausin na kap to na. Still in kap. WBZ na kap. Wilson. Oh, that is the lone wolf and a half right there. Incredibly well done from Zedwolf, though. That's why they picked him up, for those moments in particular. Insane moves. Kind of salvages the game a little bit for Regnum Kaya too, with the 5 elims off the back of that. Ooh, that is a little bit of a stopgap for them. The 5 elims, no placement points for them though. I mean, you're right. It will keep them up with pace, but they do still want more. It's good to see though that Zedwolf still has that glint in his eye, that little glimmer. DRX looking for it as well against Team Flash, but they are not going to be allowed in towards the museum. Not this time around.
Team Flash holding it out. Can't keep the spray down going over towards Arcred. That looks like a good start, but there's more to do. And Tops is on the ball. He's looking for the last players alive now. I think it's just easy for Bad Boy on the outside, and that is dismantled. A really solid hold coming through from Team Flash on the south edge. Bang Right tu there, tu min up to hin 10 slam je na mu ai. and we do have a Bang new mana pretender to halo the se. podium. Yeah, good stuff. I mean, Flash Oh, had ji a te bang mi ka extremely slam le central chi spot wa. very early on. Mi na Have slam khom maintained le it very chi wa. well with 10 elims, like you say. Weibo up to 6 now, so they're on the hunt towards the top side of the lobby. Twisted Minds. What is going on with this team right now? They are better than this. I know that they're better than this. But it's been some very odd approaches. Team quality yung i khat ji na. There's Zed. He can't hold it. Not like Zed will. Judo has been knocked, and that is all the way on the outside. And another team takes up the bunker. The vehicles start piling up, Blank. Eventually, you're going to have an impenetrable wall here. Oh, they sort of already have. It's really the scrapyard on that side of the map for Twisted Minds. But it's E-Arena again, as well as Influence Rage and Weibo. Constantly being towards these end games right now. I think with Influence Rage and E-Arena has been a phenomenal First match day. na. First match to be done. Got a ball hoy leo. Weibo have been chiming in with the elims. 6 so far. E-Arena less so with 2. They were quiet in their last time around, and again, they didn't profit too much because of that. They're not getting stuck in this time either, but keeping up consistency, especially when you have those big games under the belt, is so important. They're still over that 10-point average already, Blank, not even including any of the matches that they, or any of the rest of the points that they get in this match. Influence Rage, they're a little bit louder with 4, but they were playing up in heaven and they got that VP spray down, which is where those points have come from. Team Flash, they're going to streak out towards E-Arena though, and the south point on the 2-2. There's only 2 of them. Can they hold it? NC2, a good lineup over towards Flash at the moment. But it is a good initial roll down. It's down to Joker. He falls, and it's a big job now for Sakura versus Bose. Can he hit the target? It's a 1v1. Lil Boy's chiming in as well. They've got Influence Rage with the flex outs towards it. Sakura is on his lonesome here. Bose, same story. Weibo have moved in, Blank. They've rolled straight up to this hill. They hear what's going on. They're flexing out from the southeast side. Influence Rage can't control it, and they are just going to get crunched in the pinch here. Team Flash having a real tough time of it. Speed Force not working out for them. And Weibo deal the final blow. A lot of points earned for E-Arena there though, Blank. And that is 6 on their tally. So despite only having 1 player alive, 4th place in a 6 Elim game, that's still going to be happy. Good wrap from Weibo. Only sending 2 players as well. I think they heard and saw how disastrous that engagement went. Out comes the hovercraft though, and it's still going strong at this stage of the game. Sakura jumps in the buggy. He doesn't want anything to do with this. Oh, they know where Sakura is. Federal, swap to that side seat. Go on, you know you want to. No, he's going to play it a little bit more sensibly. Play up to the ridgeline and look for control. They have given up that position on the northeast side. They're leaving just 1 point out there, but in the meantime, Twisted Minds kind of the only team in the middle. I mean, you just crash a couple more vehicles in there. It is a full compound, right? It's really nasty stuff, though. Twisted Minds are going to survive because of it. Sakura caught high and dry right now. Twisted Minds are around. Federal trying to hold off. I mean, he's been very secretive, though. Somehow remaining in it, but the tags there. So the that's pretty disastrous for him. Good shots from Lil Boy at distance. Last as well. push stage. Should be Sakura going down. E-Arena out, strolls in towards our top 3. WBG in what seems to be a fortress, the center of the map of scrap iron. And why that nade is pretty on target. Just the one for the knocks on that. Law, though, will try and flush it out. He might just find Walsh in the meantime. That's going long. It's actually pretty difficult to land the nades into this one because of where the vehicles sit. There's a lot of cover, and you can see it's not doing too much damage. They're all burnt out, sure, but their protection from that shrapnel, though they are getting forced, and the nades are dropping a little bit shorter. Pop up, oh, the bobble around. It just goes over the bonnet. It's surprising how difficult that spot is to nade, it seems. Yeah, with you threading it in between the vehicles and any kind of
LOS you can get on the nade is basically no damage. But Weibo, they're starting to move up right now, and you got Federal on the off angle as well as Lil Boy. Diego and Law, the only two players that are close together, and Weibo's trying to find that position on the map where they can push the spear through the armor. Hero flexing out Lil Boy to match. Behind the rock, Hero actually corralling the man in now, and two players from WBG holding that flank down. The back line for Souk is completely under control. I know it's your specialty, but I don't really think there's any areas here where he needs it. I think he'd be better off with the shotgun right now. I think he's fantastic with it, but it's not like he has to hold down any angle with it right now. Maybe you get hit the vehicle potentially in the back, but I don't know. I'll wait and see. It is always exciting. Okay, it's his speciality. Thank you. All right. You know what? If WBG win Pmgc, we're starting a campaign to get a Souk skin for the bow. I reckon, for the explosive bow. That's what we want. Only if they win, though. Otherwise, we get no help from us. I'd love to see it. Influence Rage. Haven't been able to do too much damage to busy hat में cover हो जाएगा themselves up quite nicely here. Diego hopping out. Right level 2 they're worried about the flank, and I think rightly so. If you get rid of Hero, all of a sudden you can start to line up, but that's a really good opening pick for Tech 3 Zeds. Getting that first knock. Influence Rage. I mean, they're going to suffer to these nades. There's 24 nades and more in the boxes for Weibo, and none for Influence Rage. I didn't even look up at the utility before, but okay, yeah, this is done and dusted. Weibo win, for sure. Yeah, it's been a great game from Weibo. Weibo. The thing about this game is that Souk put the bow and arrow down. He put it down, which is something that he refused to do in previous international tournaments. Even in these moments where it didn't make sense. I think he's the one player that can find an unbelievable amount of value of it, but I do think he needs to put it down sometimes. And that's great. It's good news. It's great news, in fact. Yeah, Order's just like, I'm finishing this job now. With a million boxes and the burnt out wreckage of half the teams in the lobby, Weibo able to close this one down. Influence Rage, though, it's not doom and gloom for them. They have 5 elims in a second place, would be brilliant. Diego, gonna give it a fair crack. It will be taken down. Weibo Gaming able to find a chicken dinner. Adds to their elim tallies, adds to their points. And this top section of the table is looking pretty happy. Weibo certainly more expressive on their victory there as well. Maybe we've seen teams going and the celebration comes through. It was a really good game. To be honest, it was a really good game from them. Some very Ronaldo vàng nè, thì ra đã dụ vàng rồi. Influence vàng hay đó. But the big thing for me is that Ronaldo influence it's not always the best time to have this weapon out. Like I said, I don't want anyone to think that I'm BMing him because I think he is the only player in the entire PUBG Mobile that finds a massive amount of value from that weapon. I don't think anyone else can, but it's not always optimal. Absolutely. Beautiful stuff for the PEL representatives. Weibo, they have a good time closing down that game. We're going to have a good time with the desk. International player आ कोई team ऐसा individual आ bro वाला team आने से individual आ बात international player ऐसा अच्छी है वैसे वही वहाँ से APG on top ना APG number 1 để nấu mình sẽ tiếng lên Chinese team on team chịu về India thế tay rồi individually ông là sao à liền về compare thế rồi next match lấy hùng kích deuce we will come back in the next
Love yours. Love yours. No such thing. No such thing as a life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. No such thing, no such thing. Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas mad, snakes in the grass, let a nigga know that he arrived. Don't be sleeping on your level, cause it's beauty in the struggle, nigga. Beauty. Goes for all y'all. It's beauty in the struggle, nigga. Let me explain. Yeah. It's beauty in the struggle, ugliness in the success. Hear my words and listen to my signal of distress. I grew up in the city and know sometimes we had less. Compared to some of my niggas down the block, man, we were blessed. And life can't be no fairy tale, no once upon a time. But I be goddamn if a nigga don't be trying. So tell me, mama, please, why you be drinking all the time? Does all the pain he brought you still linger in your mind? Cause pain still lingers on mine. On the road to riches, listen, this is what you find. The good news is, nigga, you came a long way. The bad news is, nigga, you went the wrong way. Think being broke was better. A life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Think being broke was better. A life that's better than yours. No such thing, no such thing. For what's money without happiness? Or hard times without the people you love? Though I'm not sure what's about to happen next. I ask for strength from the Lord up above, cause I've been strong so far, but I can feel my grip loosening. Quick, do something before you lose it for good. Get it back and use it for good, and touch the people how you did like before. I'm tired of living with demons cause they always inviting more. Think being broke was better. Now I don't mean that phrase with no disrespect to all my niggas out there living in debt. Cashing minimal checks, turn on the TV, see a nigga Rolex, and fantasize about a life with no stress. I mean this shit sincerely. And as a nigga who was once in your shoes, living with nothing to lose, I hope one day you hear me. Always gonna be a bigger house somewhere, but nigga feel me. Long as the people in that motherfucker love you dearly. Always gonna be a whip that's better than the one you got. Always gonna be some clothes that's fresher than the ones you rock. Always gonna be a bitch that's better out there on the tours. But you ain't never gonna be happy till you love yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing, no such thing. Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas mad, snakes in the grass, let a nigga know that he arrived. Love yours. Love yours. No such thing. No such thing as a life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. No such thing, no such thing. Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas mad, snakes in the grass, let a nigga know that he arrived. Don't be sleeping on your level, cause it's beauty in the struggle, nigga. Beauty. Goes for all y'all. It's beauty in the struggle, nigga. Let me explain. Yeah. It's beauty in the struggle, ugliness in the success. Hear my words and listen to my signal of distress. I grew up in the city and know sometimes we had less. Compared to some of my niggas down the block, man, we were blessed. And life can't be no fairy tale, no once upon a time. But I be goddamn if a nigga don't be trying. So tell me, mama, please, why you be drinking all the time? Does all the pain he brought you still linger in your mind? Cause pain still lingers on mine. On the road to riches, listen, this is what you find. The good news is, nigga, you came a long way.
The bad news is, nigga, you went the wrong way. Think being broke was better. A life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Think being broke was better. A life that's better than yours. No such thing, no such thing. For what's money without happiness? Or hard times without the people you love? Though I'm not sure what's about to happen next, I ask for strength from the Lord up above. Cause I've been strong so far, but I can feel my grip loosening. Quick, do something before you lose it for good. Get it back and use it for good. And touch the people how you did like before. I'm tired of living with demons cause they always inviting more. Think being broke was better. Now I don't mean that phrase with no disrespect to all my niggas out there living in debt. Cashing minimal checks, turn on the TV, see a nigga Rolex, and fantasize about a life with no stress. I mean this shit sincerely. And as a nigga who was once in your shoes, living with nothing to lose, I hope one day you hear me. Always gonna be a bigger house somewhere, but nigga feel me. Long as the people in that motherfucker love you dearly. Always gonna be a whip that's better than the one you got. Always gonna be some clothes that's fresher than the ones you rock. Always gonna be a bitch that's better out there on the tours. But you ain't never gonna be happy till you love yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing, no such thing. Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas mad, snakes in the grass, let a nigga know that he arrived. Love yours. Love yours. No such thing. No such thing as a life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. No such thing, no such thing. Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas mad, snakes in the grass, let a nigga know that he arrived. Don't be sleeping on your level, cause it's beauty in the struggle, nigga. Goes for all y'all. It's beauty in the struggle, nigga. Let me explain. Yeah. It's beauty in the struggle, ugliness in the success. Hear my words and listen to my signal of distress. I grew up in the city and know sometimes we had less. Compared to some of my niggas down the block, man, we were blessed. And life can't be no fairy tale, no once upon a time. But I be goddamn if a nigga don't be trying. So tell me, mama, please, why you be drinking all the time? Does all the pain he brought you still linger in your mind? Cause pain still lingers on mine. On the road to riches, listen, this is what you find. The good news is, nigga, you came a long way. The bad news is, nigga, you went the wrong way. Think being broke was better. A life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Think being broke was better. A life that's better than yours. No such thing, no such thing. For what's money without happiness? Or hard times without the people you love? Though I'm not sure what's about to happen next, I ask for strength from the Lord up above. Cause I've been strong so far, but I can feel my grip loosening. Quick, do something before you lose it for good. Get it back and use it for good. And touch the people how you did like before. I'm tired of living with demons cause they always inviting more. Think being broke was better. Now I don't mean that phrase with no disrespect to all my niggas out there living in debt. Cashing minimal checks, turn on the TV, see a nigga Rolex, and fantasize about a life with no stress. I mean this shit sincerely. And as a nigga who was once in your shoes, living with nothing to lose, I hope one day you hear me. Always gonna be a bigger house somewhere, but nigga feel me. Long as the people in that motherfucker love you dearly. Always gonna be a whip that's better than the one you got. Always gonna be some clothes that's fresher than the ones you rock. Always gonna be a bitch that's better out there on the tours. But you ain't never gonna be happy till you love yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing, no such thing. Heart beating fast, let a nigga know that he alive.
Fake niggas mad, snakes in the grass. Let a nigga know that he arrived. Love yours. Love yours. No such thing. No such thing as a life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. No such thing, no such thing. Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas mad, snakes in the grass. Let a nigga know that he arrived. Don't be sleeping on your level, cause it's beauty in the struggle, nigga. Goes for all y'all. It's beauty in the struggle, nigga. Let me explain. Yeah. It's beauty in the struggle, ugliness in the success. Hear my words and listen to my signal of distress. I grew up in the city and know sometimes we had less. Compared to some of my niggas down the block, man, we were blessed. And life can't be no fairy tale, no once upon a time. But I be goddamn if a nigga don't be trying. So tell me, mama, please, why you be drinking all the time? Does all the pain he brought you still linger in your mind? Cause pain still lingers on mine. On the road to riches, listen, this is what you find. The good news is, nigga, you came a long way. The bad news is, nigga, you went the wrong way. Think being broke was better. A life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Think being broke was better. A life that's better than yours. No such thing, no such thing. For what's money without happiness? Or hard times without the people you love? Though I'm not sure what's about to happen next. I ask for strength from the Lord up above, cause I've been strong so far, but I can feel my grip loosening. Quick, do something before you lose it for good. Get it back and use it for good, and touch the people how you did like before. I'm tired of living with demons cause they always inviting more. Think being broke was better. Now I don't mean that phrase with no disrespect to all my niggas out there living in debt. Cash and minimal checks. Turn on the TV, see a nigga Rolex, and fantasize about a life with no stress. I mean this shit sincerely. And as a nigga who was once in your shoes, living with nothing to lose, I hope one day you hear me. Always gonna be a bigger house somewhere, but nigga feel me. Long as the people in that motherfucker love you dearly. Always gonna be a whip that's better than the one you got. Always gonna be some clothes that's fresher than the ones you rock. Always gonna be a bitch that's better out there on the tours. But you ain't never gonna be happy till you love yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing, no such thing. Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas mad, snakes in the grass. Let a nigga know that he arrived. Love yours. Love yours. No such thing. No such thing as a life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. No such thing, no such thing. Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas mad, snakes in the grass. Let a nigga know that he arrived. Don't be sleeping on your level, cause it's beauty in the struggle, nigga. Goes for all y'all. It's beauty in the struggle, nigga.
explain. Yeah. It's beauty in the struggle, ugliness in the success. Hear my words and listen to my signal of distress. I grew up in the city and know sometimes we had less. Compared to some of my niggas down the block, man, we were blessed. And life can't be no fairy tale, no once upon a time. But I be goddamn if a nigga don't be trying. So tell me, mama, please, why you be drinking all the time? Does all the pain he brought you still linger in your mind? Cause pain still lingers on mine. On the road to riches, listen, this is what you find. The good news is, nigga, you came a long way. The bad news is, nigga, you went the wrong way. Think being broke was better. A life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Think being broke was better. A life that's better than yours. No such thing, no such thing. For what's money without happiness? Or hard times without the people you love? Though I'm not sure what's about to happen next. I ask for strength from the Lord up above. Cause I've been strong so far, but I can feel my grip loosening. Quick, do something before you lose it for good. Get it back and use it for good. And touch the people how you did like before. I'm tired of living with demons cause they always inviting more. Think being broke was better. Now I don't mean that phrase with no disrespect to all my niggas out there living in debt. Cash and minimal checks. Turn on the TV, see a nigga Rolex, and fantasize about a life with no stress. I mean this shit sincerely. And as a nigga who was once in your shoes, living with nothing to lose, I hope one day you hear me. Always gonna be a bigger house somewhere, but nigga feel me. Long as the people in that motherfucker love you dearly. Always gonna be a whip that's better than the one you got. Always gonna be some clothes that's fresher than the ones you rock. Always gonna be a bitch that's better out there on the tours. But you ain't never gonna be happy till you love yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing, no such thing. Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas mad, snakes in the grass, let a nigga know that he arrived. Love yours. Love yours. No such thing. No such thing as a life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. No such thing, no such thing. Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas mad, snakes in the grass, let a nigga know that he arrived. Don't be sleeping on your level, cause it's beauty in the struggle, nigga. Goes for all y'all. It's beauty in the struggle, nigga. Let me explain. Yeah. It's beauty in the struggle, ugliness in the success. Hear my words and listen to my signal of distress. I grew up in the city and know sometimes we had less. Compared to some of my niggas down the block, man, we were blessed. And life can't be no fairy tale, no once upon a time. But I be goddamn if a nigga don't be trying. So tell me, mama, please, why you be drinking all the time? Does all the pain he brought you still linger in your mind? Cause pain still lingers on mine. On the road to riches, listen, this is what you find. The good news is, nigga, you came a long way. The bad news is, nigga, you went the wrong way. Think being broke was better. A life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Games, it's really not. Well, actually, talking about confidence. Oh, yeah, go ahead. Oh, okay, I'll go. I was saying, imagine being Virtus Pro in Last Chance right now. You know what I'm saying? Because these past 3 games, oh my gosh, they just cannot catch a break. And even with such a storied squad like VP, right? You get unlucky 3 games, and that could be it. It could be. It's really weird too, and we said it a little bit earlier today. Virtus Pro do seem kind of out of their depth
this doesn't feel like a lobby they just naturally will perform well into, because it's a way more passive lobby. I think if they were in group green, Niptra, it would be a lot more in their element. Like, okay, everyone's fragging out. It's a way more aggro-focused lobby. We're doing great. But no, here, they're having a bad time adapting to how this lobby is responding to circles and situations in these maps. So Virtus Pro, they've got to adapt quickly, because if they don't, I think that they might be unfortunately in the bottom 5, which I never thought I would ever say, but right now it's just not looking great. I think you bring up a really, really good point, is that if they had been in Group Green, they would have done far, far better than, at least for now, they're doing, right? And I think it's because Group Red is hyper-focused on every angle, right? They are looking, because they're not focused on that aggressive play, on those fights, that really what we're seeing here is every team just making sure their position is locked down, whereas Group Green are so aggressive, so ready to push and ready to fight, that I think Virtus Pro were able to just sneak in between enemy lines and get a really, really good position, and that's what fueled their unpredictability, where here, they're just not being given that opening to actually make some surprising plays. And you know what that gets me hyped for, Niptra, Hodgix, is the last chance stage. Like, it's these two lobbies which clearly play quite drastically different in their approach to the game sense. And you're going to go into last chance, where every team is so desperate, and one lobby that was clearly more frag oriented and one that's more macro oriented and getting in positions a little bit ahead of other squads. The last chance genuinely is getting me so excited with how different some of these teams and groups are currently playing. So last chance, man, it's going to be intense, and also teams will have to adapt on a dime, because otherwise, again, you're not in top 2 in that stage, you're going to have a bad time. So you want to be in top 3 right now, because Hodgix, otherwise, I think that adaptation in last chance is going to be so rough to execute that all the teams are just going to struggle to get even remotely close to the top of the rankings. I think that's a great shout, man, because honestly, I guess to do a comparison, to me, Group Green was like an arm wrestling match, right? The stronger guy just made it happen, you know? And then we're in Group Red, and it's like a chess match. It's like totally different, right? The way you see Weibo just calculated, making the perfect moves, teams being much more careful on their rotations, not moving until the perfect second. So yeah, when you have both those two, you know, different lobbies crash with 2 days only, it's gonna be such a tough position, you know? So, I mean, we still have quite a few games left today. We got 3 left, and then 2 more days. And the great part of those 3 days, like I mentioned, what we're trying to really kind of emphasize on, is that it gives you a little bit more time, right? A little bit more time to afford those mistakes. My question is to you, Max, is have Virtus Pro burned through all those mistakes in these first 3 games? Because we've already seen 2 games today where almost the entire, you know, squad got deleted in just like a second. I don't think so. We already had this. I think you asked us this question a little bit earlier on, also in Group Green, and I'll stay true to my word, which is you can afford 1 bad day. 1 bad day. Okay. There's still enough potential for you to make that comeback with a total of 12 matches. Especially now, they're not that far off. They're like 42 points away from first place, which really, you have a good second half of the day. You can close that gap quite significantly. So, no, I think there's still an opportunity for them to make that comeback. So, but the thing is, if you do want to be in top 3, 1 entire bad day, then maybe that's a bit too much. Maybe for top 3, it's almost out of the question, unless we see, again, a big change. But Niptra, this lobby, again, just doesn't feel like they're just well suited to deal with it. Yeah, they're really struggling to figure out how exactly they need to play the lobby, because every other team, honestly, I think every single other team knows how to play this lobby. Every other team feels pretty well suited to this kind of gameplay. It's just not really happening for them. So I agree. I think 1 bad day is going to be pretty difficult. Well, let's go ahead and take it to a quick break, guys, and we'll be right back in just a minute. مثل champion teams are stronger than us. ممكن اقول لرؤوف طور لعبك لانه حبي احنا جايين ندمرك. بالتاكيد يعني احنا ابطال بمثل عربي مينا ريجن من افضل الريجنات بالعالم. Chúng tôi khá tự tin ạ, tại vì chúng tôi là đương kim vô địch C nhưng chúng tôi không sợ. Chúng tôi đã đạt được 4 top 1 trong một ngày thì chúng tôi đến đây mục tiêu phá kỷ lục chúng tôi. I think we will qualify straight to the final. إذا أنت بطل بمثل ممكن تكون محظوظ بجيم جيمين أما أنا
и те, кто на удачу выиграл. Я посмотрел, типа, фавориты своих регионов выиграли. Wolves Esports. They have Coops. Best player in the world in my opinion. Đội TP tại vì bên khu vực đấy khá là căng thẳng và họ chứng minh bản thân mình từ những ngày đầu tiên. İyiler, kötü değiller ama heyecanlı oynuyorlar. Советы нам выиграли. Я считаю, что из всех победителей PMSL мы являемся самой сильной командой. Virtus Pro çok iyi oynadı. DX zaten bu PUBG Mobile कल ने भी यही कहा कि आईजीएल को स्टेप अप करना पड़ेगा गन गेम में. लाइक डॉक एंड रोजमेरी ओपिनियन वी एक्सोल थैंक यू 100. यस यार, मतलब थोड़ा वो तो है कि भाई उधर के आईजीएल लोग भी बहुत खतरनाक मारते हैं, बट इधर जेली बहुत मारता है यार. एज आईजीएल जेली का गन पावर अच्छा है. केआर को बोलो घबगू कर दे. डीले क्यों हो रहा मैच, मेरे को समझ में नहीं आ रहा. आई हैव बीएच नंबर प्लेट. क्या बात है यार. इच्छा जब मैं पैसा जेब में पैसा होना चाहिए सब मिलता है. बात तो सही है मेरी जान. जो कर देंगे तो 100 यारो. बीएच नंबर प्लेट मेरे नेक्सॉन पे चिचा फोटो भेजूं. शेर रे नीलोफर की ये ईरानी चाय हैदराबाद मीटअप का बहुत याद आ रहा. नीलोफर की चाय और बन मस्का. लेजेंड बाय थैंक यू तो 179. चला लव फ्रॉम कोल्हापुर. आएंगे कोल्हापुर बहुत जल्द. स्नैक भाई 200 सब्स होने वाले हैं, प्लीज सपोर्ट कर दो. लव यू भाई. एमएक्स स्नैक्स के टाइम से देख रहा हूँ. पहले पबजी T1 खेला है, फिर गिव अप किया. अब यूएसए से वैलो ब्राजील वैलोबाजी बोलते. क्या बात है. यूएसए से वैलो खेल रहे तुम. क्या बात है. अमेरिकन भोपाली वाईडी थैंक यू $5. बिग शॉट यू मेरी जान. चाचा एमवीपी की पोर्शे मिल रही. कौन सी पोर्शे मिल रही चैट एमवीपी को? कौन सी पोर्शे? लाइक मॉडल नंबर मालूम कुछ? कुछ आइडिया है कौन सी पोर्शे मिल रही? GT3 RS. GT3 अच्छा थकबाई वाली मिल रही क्या? अच्छा नहीं कयान मिल तो एसयूवी मिल रही. अच्छा एसयूवी वाली दे रहे क्या? 911 दे रहे तो भाई क्रेजी होने वाला है पब्लिक. Cái bản mỏ riêng tay bị su hầm mới lại chặt chẽ không. Để mỏ rồi Porsche Porsche ở khoản nhiều tụ sẽ ta lên mỏ rồi vào tiêu à 911 911 bata khẩn red color khẩn nó mình đi mà nhiều tụ gì sẽ infotainment screen nó có car phát trợ Porsche apa cho mua được pa ngal mỏ But I remember Carnage being Carnage, man, when he was trying to get Acer banned. He would hit me up in the DMs and be like, Zoo, you need to watch this, bro. You cannot tell me that this doesn't look this does not look sus. And he's like, bro, put it on your stream. See what your viewers say. You need to take a look at this, bro. And he's like, on God, Zute, you cannot tell me that this looks sus. Power analysis team ko ni team mo gisu mo no. Did I watch Top Call his wife? No, I did not see that.
throughout the rest of it, generally very, very passive, right? Waiting for things to come to them, surviving quite a long time, though, to be fair. And that might well be enough if you're able to blast out when they all do come to you. It can work out, get you up into a top 3 position. We are going to be heading into another Erangel, though, blank, as we head on into the skies for one more time. We'll probably be seeing this one again. This is the last one today. Yes, we're on match 4. See more after this one, so make the most of it whilst it's here. Instagram ko dito sama mo to magari tolyo. Generational well kisiem do ta swing gaming ako na. Tire on the matabo boy telo sa mga to ba. Off the back of this one, yeah, it's very southern leaning. It's actually one of the action mang retired ata na. Ma ko YouTube man bol ngai lo sa. Ga bol as well. So difficult to get towards the north side of the map. Esports are earning. A lot of times, you know, you do have a lot of players dropping over towards the east, but I can hear the split is on that western side from Primos all the way up to even like a Zaki split. Just the eastern side of Shun. This is harder in general because the area of the map where you usually have the most amount of players being able to move across is on that western side, and here you're forced to cram everyone towards the east. There's definitely going to be teams dropping on top of one another. Taking down one player from VP. Now, Maxman was talking in particular that VP just wasn't looking like a squad right now who could take over the lobby, which is what they enjoy doing, and I'd agree with that. I think they're a team that likes to bully, and here there isn't a lot of teams to bully, honestly. There's not a lot of teams to shove out your way and take a central position. 21 second. It's a lot tougher. Net ko veo hen lang ka te ko geek leo ka dia geek teo. We'll see if they can adapt to it, because right now they are dead last. They got 1 point a match. We'll see where they're going to be able to earn their point this time around. I was looking at where teams were dropping. I was worried about down towards Primos because both E-Arena and Influence Rage were dropping down in that area. But E-Arena sent a lot further up and they would play that West Coast split. Again, just keeping that one going. Other than the Elam we just saw there against VP, seems like everybody else is out of danger for the time being. Split from one another. Finally dropping down. It doesn't look like they've got too many vehicles that are blank, so maybe a long walk ahead. Yeah, just should cut in here with Weibo, because they're starting on the south side of Stalber, and again, I think that if you are, you don't really have to replay this for sure. So yeah, VP is getting. Highland aga ang player is Lady Boy wala inga kis heal them. Got the lobby under wraps already, and I think they're because they're already sending so many of these other squads just aren't moving. They just aren't moving off the center of the circle. On Weibo, on the other hand, they're just like, well, we'll just pick a central spot that we can rotate freely from, and then work from there, because everyone's trying to play on the edge or just towards the center on the outer bounds. I think there's a little bit of a lack of confidence inside this lobby at the moment. Maybe. Or maybe it's caution, right? Like, obviously, new lobby, don't know what's going on exactly. You should be aware of general principles, but every lobby is different. And we do keep chopping and changing them here at PMGC. Some familiar faces, some not so. And making sure that everybody is on a little uneven footing going into this one. So maybe they're feeling it more here in Group Red. So yeah, maybe it is a little bit not as bold as they potentially could be. And at the moment, there's a few teams taking advantage of that. 2 teams over that 40-point boundary, and Weibo up on 36. It's looking pretty decent, and a really big drop-off down towards 6th place with Pregnant Kai only on 17 so far. ETSH currently passing that Stalber Hill, moving in on that south side of Severny, as teams need to move farther north up. I did praise Weibo. John,
They're playing towards Severny and Masa the oh. compound that just sits the west of November Salva. November last week Really ticket. strong positions, to be honest. December first week Especially ticket one na off dito. towards the western side of Stalborough as well, John. So I Circle say does move December towards the 25 ang northeast. himay You are going to ticket. see teams rotating towards that Ball position may very quickly. Pmgc. This does keep Weibo pretty safe. They have an eye Ikachu over towards Severny. department jauh sih vacancy details collect gua hi wana. Okay, Jadi aja as well because he can play the ridge line. Don ni aje election di boy pi wala. Election masang ho la lega pi do ai. Adita hai ga Credit se. ga la very, di very je. big right now on the split. So IST and kota maybe boy they'll look kit to na. regroup. I could see some vehicles being hopped into from the east Wal flank. to jana 6 communities la ST kota ke Alliance, pe. they blasted out. Population na sa jo. Assam he ikat ni dita je. Di je hila na. Moving 2 and 2 right now. They have got this is their rearmost position. They've got 2 players a lot further north, so Jimmy and Olio bringing up the rear. Not across that river yet. They're just to the east of Roshok right now, east of apartments. In the meantime, Burmese ghouls actually might have boars to deal with on the far side of this bridge. As the boars are sticking around, it seems. They don't want to get to the next circle. They're busy. Yeah, I mean, they're taking the time. They're definitely taking the time with this. Slowly move across. DRX on the western side of things have crossed the bridge over towards the south side of shooting range. DRX yang tak kilang na. Just searching for position in the circle. It's a little bit more central, Top but again, leader, you don't really want to be playing on the outer edges. Tak mahu match cut match ni bau ngai chat ni jo. QXZ will ball hoy chu. send easy for bad boy packing, but the rest of his team DRX not ang so DK happy ka vet ngam with the do. fact that they were rebuffed there. Comeback DRX macam hoy na gan sa skills jo. hoy zi Di plus game ho. sense ga lek zi aja DRX. For DRX, holding as much ground as you can in this area could be quite important. It forces teams further towards the east side of the center of this next circle. It puts more pressure into that area, and the more pressure that exists there, Pakistan team the macam na sa tho hi na. Gun skills. IC tai. Bo che ki ba anaw ka ti na India da Pakistan. A qualified deal like that. Kung ke chep safe le chu zi mu chu. That's where it starts. Easy now was a Pmgc mo jo. Like that, because there will be more teams around. Everyone will be a lot more confident in It's their meant holds, to in their dealing low positions. boy. It's during the establishing phase that you can have an A impact match on that pressure. starting day 1 day 2 ah ke che ho cho hung hoi tho ji na cho. Bang chung ki team leo na. Ta final tung leo. Alter ego yang so. Last day ni nga point nga bo. Can we get an analyst confirmation on the Beyblade technique? Yeah, it felt Day 2 as 100 na maya day 3 at 105. back on target as well. All right. Yeah, we've got Cut his confirmation. bow nice and early. Big blade, Yeah, Beyblade he action. did. He did let it rip. He did. Fantastic. Believe in the heart of the cards or something. I believe. I'm not sure. What the? What you just said is Digital monsters, right? So criminal. Digital monsters? Stop. You need to stop. Ooh, okay, well, Wild needs to stop too, because he is taking shots out, and it looks like Loxley's going to be the one to pay the price for his hubris. I'm not doing that. Not around. Whoa, okay, flying silence out the window. Going to try and look Oh for my the god, shots yeah, on ako na. overheat. Might actually wait. Hey, Loxley's listen. not flushed. Is Silas going to get Loxley back up here? Did he just fly and save him in the vehicle? Ooh, it seems so, but there is a player looking to come on in, and we'll clean house. Where was the hold? Yeah, That's there was the another player for question. Regankaya Yang tinok on the ba. outside. I mean, they won the fight, but that was Nal messy. It mo looked da fun bang. for Silas, but that was messy. The big Lawyer. news though is the circle black. Hu Big do di shift. lo ang atana laya ka hu do di nga atana. Yeah, it's a massive shift over towards the western side. I mean, for Weibo though, easy picking for them. Managed to instantly pull off from Severny, head over towards, probably going to try and pick up a compound on the western side of shooting range, try play the high ground there. I'm very impressed with Weibo so far. I think that they've had the cleanest rotates today. I think there's been a fair few games where they've been almost free wins for teams, and I think for Weibo they've made the best rotations out of all of them when it comes to salvaging, when it comes to setting themselves up for that late game. Big fan, very big fan. Yeah,
doing okay right now on that northern side here. A big stretch out and still holding quite a lot of ground. Twisted Minds, they are across the bridge onto the northern shores. So we're not going to quite have the ability to have a Zaki circle, but near enough. Teams out on the west side. I'm looking at E-Arena, and again, they're kind of chilling. No one actually competing for the west side of this one. Sure, the fields to the north of North George, not super favorable, but there's buildings out to the east side of them that they could potentially look to turn in towards. That ridge line as well to co-occupy with WBG. Weibo Gaming on their split can't really hold 1 point of it. Actually, I'm looking on that north side, and maybe they are going to have to hold a point against True Rippers, but that'll unfold in a moment. I mean, Sook's in a vehicle right now because he either needs to maintain scouting over towards the south side, but he immediately also needs to regroup with the rest of Weibo should they have a team rotate over the top side of Severny. And Malloy, very nice. Love to see it. Ooh, and the rest of them too. This is a pretty important compound as well, given the state of the circle holding here. VP Devanga Luckney mong go with Univa. Wait, hang on a minute. That was actually, I take that back. It was entirely really bad nade from Voston. Nade himself. A True Rip is actually going to try and descend on this blank. Third party ball ma ko tikit dal. Grab those prizes, nuke zone. Yeah, got to. And True Rippers also going to give it a good go. There's a knock found. And Alliance are going to wade into this fight as well. Could be another third party coming through. Virtus Pro stepping out, flexing out from their building, and actually doing a lot of work in the chaos of that third party engagement. Yeah, I mean, True Rippers made their way onto this. They have taken a knock, but so far are controlling quite well. Malloy has been pretty crazy with the pump action so far. Overall, just insane game from them so far on the rotational aspect. They get a real classy compound to themselves in the center of the circle, and they play this one out fantastically. Good nade from Hydro over towards Milky Way. I feel like True Rippers should be able to clean out this fight now. They did commit to it. They committed to this third party. For Alliance actually sailed all the way past. They want to get into the zone, and maybe that would be the better choice in the long run. But for now, True Rippers riding high and able to take down 3 points off of that engagement. They'll be happy to be able to earn those. They're up into 8. That's a gunfight lying low level rotation. It's a low task is to move further west, and Alliance diverting, avoiding that third party situation. I mean, they get ahead of it. That's the main thing, right? They get ahead of it. And passing through that area is not easy. The Lord, finally, we're shooting hovercrafts. It's taken a while to get there. Honestly, this happens a lot over in CSA, as well as EU, and everyone really knows like the solution to it, which is you just blast the hovercraft as much as possible, and then they're sitting ducks afterwards because everyone's so overconfident when rotating in a hovercraft. But during PMGC, I think that the overall counterattack to hovercrafts has been pretty poor so far. Hopefully they'll be able to figure it out. Coming on in, it seems like whenever a hovercraft was moving, everybody was shooting at it in some of the sub-regions. Definitely a change of tune here. Around the ruins of the plane, Team Flash looking to move in from that southeast side, transition from that shooting range hill to a further west position. The Burmese Ghouls, they're not in this next zone, so sure, you've got the high ground for now. There's no one really nearby. They're going to have to move to that north. Probably regroup towards Ichi. Transition from there. Use him as a foothold, a slingshot to push themselves forward. But into those hills, you've got WBG, you've got Arc, you've got Influence Rage as well, who are already holding face there. So a difficult approach to be made. I think anyone not down on the southeast side is a little bit stuck. Let's put it that way. Getting up this hillside is quite difficult. So a lot of teams already hold
strong positions. For E Arena, they get a very fortunate game. The fact that it heads up this way, they sent all the way towards North George, and they've been able to just loot this position for a long time. They should have all the utility in the world to work with. Hard shift on the north side actually shifts over towards the water, which is very unlikely. And I think that if for Weibo, you can't blame them here. This is Giờ đều phải edge cái chìm là hoài tên kia là độ đầu tôi chung pa về they absolutely expected this circle to go center, but on a stage 4 shift to shift on top of water, that doesn't happen. That really does Momentum needed. Team's getting very lucky here. Kill hậu bị đều. Yeah, that's that hard south regroup. Kind of nasty. They gave up this bunker position that Arc Red now have as well. On the north side, Rectum Kai went for a very good towards that coastline, and DRX are taking the dip just in front of them. Out to their west side. BMIC MVP Hyungbin a trophy cho Hoài Mô mà that west edge. They love playing these edge style situations that you highlighted that during the previous matches. It will be Ruma cái quỷ đi ngào chứ chỗ nào là này. I think that's kind of great news for E Arena's game plan. Decorate đi cả. Again, I do think E Arena got lucky on this game. I think they got very lucky on this game in terms of where they went to go loot. Because this could have been a horrible game for them if the circle shifted far towards the eastern side and they spent so much time in Georgia Pole. But here they've just been able to loot all day long, and then just because there's no one on this western edge of the circle because of the way the plane path fell, they get a really free and easy sweep on the west side. There's still teams in front of them that they'll have to deal with, and that will require skill. But the setup for this game has not been that hard. It has been a pretty long road, though. I think it's safe to say a south plane path into a north coast near to definitely a bit of a trial, and I wouldn't be too surprised if that impacts the sort of the total utility count when we get towards the later stages of the game. Teams might not have had as long to get that loot on board. A couple fewer smokes maybe, and maybe more expended to get to the approach. We'll have to wait and see, though, if anyone's been hoarding them. Cache of goodies to play around with. We'll have to wait and see. Okay, some fighting is starting now. E Arena on that west side. Twisted Minds, Boars coming into conflict, as well as DRX, actually. A lot closer to the center, picking up the stragglers of Twisted Minds. For E Arena, this is a good time to go. Sadly, Twisted Minds fall over really quickly. Means the Boars are very secure in that position. The rest of E Arena really weren't there. They're still looting for some reason. Should have a lot of smokes to work with going forward. True Rippers with the hovercraft will drop that one down. Good side swipe actually from Hydra. Backs off the position. Quite like that there. It's a good distraction maneuver, and now the flash just down to one player. Influence Rage will come in to finish the job. Yeah, they're getting taken down here. It's Team Flash on the ropes as True Rippers, they've lost one to a full flash. Influence Rage moving on in with 3 players alive. Federal chưa wipe đều bằng PRG thì không kịp đâu. As fast as he can, stage 4 zone, so just have a little bit of time to play. The heals are coming through. Influence Rage are continuing to break ground here, but Jelly on the low ground needs to worry about Federal. If he hasn't taken him down already, that could be a really dangerous angle for him to handle, and Law's able to get the side swipe. Picking it up now, the last player to stand. Federal did go down, and it's only one True Rippers. He's spotted, but he will be put to bed. That is nasty on the off angle. They've still got one more, but no. Đừng ngon cái này. Who's this though? It's the last play from Team Flash. Dias gonna take down Influence Rage. Okay, they survived through it all, but now Arc Red. Third parties. That's exactly what they flex out for. This is the second time today. I never did Hitler. I felt it on side you that. Keep the player. The final player. We win. Do it over there on Rondo. NFT trên đúng trên đi hin knock piu chưa. Đã chứ lệ cái trái rồi này. True Rippers, I did quite like the way they were manipulating the sidelines, you know, playing multiple angles, then quickly pushing off. Good shot from NC2 with the Epicam. Really easy initial shot. That does. That might be the go signal for E Arena, actually. They might need to be a little bit quicker than that, though. Cái chụp đầu top level rồi, không kích đâu mày thế chứ. Blasts with that metal core. Now they lose
lose a player. Sakura down for the time being, but the ball's having a really เล่นฮาร์ดมั่วไปเลย 30k sees him coming. ตบเลเว่นคนก็ใกล้คิดต้องแล้ว last chance sao ý mà trả ball độ điều thì lâu rồi nè ngày tụi tôi có top 7 tụi gauntlet still sao chứ chỗ chance hơi nè biển chú to finish off a couple of teams in their zone. Wild spray there from Suk. Luckily 33C is there to pick up the slack. Now Geek looks to send a grenade across. It's quite long. I don't think it does too much damage. Saf G takes a lot there from the high ground. We're not going to be too worried about that nade. That one's a little bit closer to home, but it's not going to do enough damage to get another knock. So smoke starting to come on through. Arena flexing down south here. A little bit of a split still. They're not overcommitting. They're just continuing their watch to hold on this western side. Tony K. I don't think he's going to be able to do enough to take down Weibo entirely here. Not with the Burmese Ghouls up top, with GK on the oversight. Don't think you can push around as convincingly enough. Walsh is, okay, he's not in any of the teams that are playing around. Walsh is on a mad one right now. He's still alive. How has that happened? How have you gotten away with it? Geek le lai ha da lâu bị gì thế mà cái thôi là thì geek lâu chứ. See how long you can live out for. Magnum Kai up to 5 eliminations. Yeah, tiền mà giàu cái thôi. Rambo cái bàn tay. Very good actually fights versus Wizard Tower because it's nal he knock confirm ga ball yo ka na. The miss neo ta la wa ki knock ni. I mean, the difficulty is getting that line. Check out more bằng man đâu chứ. Ý là thế là kìm thế really peak for too long at all if you're Weibo. So you can't keep that suppression going. Okay, there we go. Walsh does go down. That gives him actually all the way up on that northern side. Thì FL pa con hình nó lại. I mean, it doesn't usually favor anyone right now. Blank. I mean, Arena may be probably the only team that's going to have I don't even want to say good time, but an okay time. It's curious the way that Weibo need to play this out now. For Geek, they've set themselves up very nicely ahead of the pack. And they just need to hold out Weibo. And because they understand the terrain here, they know that Weibo's options are very limited going forward. Aussie, their bonds and first are 9 points. He made it. Which is what 3Z is going to go for. Mitsley 11 points. Find a pick off over towards 10k. Spray down, GK. So 3C going down. Yeah, that's immediately flush. They're going to have to leave this fight. Might be favourable, but they didn't do it quite quick enough. Stop GK trying to step up to them. Maybe a bit overzealous there. Kan nu jinawe tung gara ak tung khat pang tol ga azza le. Make them a little bit harder on the get out. There's the rundown as well from the Ghouls. You're right. They deciding instead of going for the circle, they're going to try and push GK as they leave. But Godspeed hit them around their tree trunk. They're not quite able to connect from the spray down. He's taken a lot of damage. Steps out too wide against Kevin, but the reverse is going to come on through. And that is the pickup for Burmese Schools. But Ark just love these oversight third parties. You can't stop them. And they will continue to keep Burmese Schools on the lock-in. Ark then there's the spray down. Hard party timing at team movie. Maybe ready to pounce. I mean, Tok kha chet chet ne na. Phải số sẽ third party ka ball thì. Săn goal elimination cut ball. Kill cut ball đi. Hồi phun kill là great job to hold that angle. I think for Weibo, if they waited slightly there, maybe they could wrap into that. Chỉ lobby chỉ kia nè. Fight là no man tamina. Regret sang. Right now, the fight like the third party, fourth party, and base it take down the players from E Arena was the high value play. If they can keep his high value players coming thick and fast, Starfred moving on towards Joker, and he didn't have the backup necessary. Đó position on lot thì hi rồi mà lobby. Left standing for E Arena, but with 8 elims, it's louder than they've been previously, so I'm not too displeased. Down to top 5 again, getting very deep into these games. Yeah, let's down to higher position. Seems like they just know how this edge game goes. With 8 elims, it's looking pretty good. But for now, I mean, maybe this is Regnum Kaya's game. They have got a pretty solid spot on that northern edge. It's not easy to play, but they are safe and they are very central.
we haven't talked about too much, but to recap really quickly, I think overall for Regnum Kaya, they have been very good, and when it comes to taking shots across the entirety of this circle, they've constantly maintained pressure over multiple teams, and that's been fantastic. DRX though in another situation as a 4-man with very little eliminations, looking to take a chicken dinner here. We saw that wasn't enough though in the gauntlet. Need higher elim games from DRX. Okay. If they do get the chicken dinner, it's still good though. You know, it sets them up for a top of the leaderboard finish at the end of the day, but again, we need more aggression from DRX. I think that's just a fact. Nè tôi băng commentary ball rồi nè nè criticism pi ông là mi country chứ bùi lâu chỗ nè aggression ngài gặp yo là ngà sĩ lại cái They have to move further east, but Regnum Kaya holding on that. Criticism handle tail man lâu là bị mà xây kỹ tiền criticism thì à To fully deal with it if they have to stay down on the belt buckle because of Arc Red's position right now. Tough ending zone. Amazing say as la criticism thì à bom lại slight incline right now, which really does keep the one that say là bộ nè này thì and as soon as Regnum Kaya is in nade range, they are in lắc hạ đây versus a lot of these other squads. Al criticism mong ta lâu ngà cái gì chứ ôi lại criticism mà cái say là vàng à hát nhiều rồi thì thì thế nào frustration đã được thì vào chứ getting a queue to take them down, and it will be Alliance falling in the end of it. Because well, hang on a minute, Arc Red successfully crashed that position. Well, successfully. They only have Glory 22. 여기 위에 thằng tô miệng rồi thôi à, team sẽ làm gì bộ. Plays up to the tree. Blue zone not giving in too many favors there as Tiny K falls. That's a third place. Các đoàn sale sẽ đi à để cho English cái stuff mà. Aussie họ rotation hồi dính gần power lực như thế chứ nào. So this is criticism. Gần power nó sẽ bê điều hết. So sẽ phụ nặng đâu vậy. Lặng ngàn là hạn thì họ phụ nặng đâu vậy. DRX can get over Tony K's body, then maybe they get a little bit more loot on board. Into the 3 versus 4. DRX, they know exactly where the guys from Regnum Kaya are playing. Regnum Kaya also have to deal with players behind them in Glory. It's those nades now, which is going to be the big issue for DRX. They need to immediately get a knock here. Those are very close to Kaisei. Big investment on nades as well. Regnum Kaya now only with 2 remaining. Silas takes a lot of damage from that one. Another follow-up comes through. The bounce is there, and Silas is down. Just now alive. Zedwolf immediately on the reposition, but the buggy goes up in smoke, and the next nade's coming through as well. Zedwolf, be careful. You didn't want to go for that after all. The buggy explosion was good. DRX on the approach. Do lose one, but Glory's lighting him up now. A 2 versus 1, but he's behind a tree. I don't imagine he could do this, Blank. I just don't believe in it. Is low. Maybe there's a miracle on the cards. As DRX do not have him under lock and key right now. He's challenging. He's boldly peeking. Completely bold as brass, and the reds maybe coming through. No chance. It's absolutely insane. No Okay, he steps chance, out, bro. finally will close it down. Take the chicken dinner. They step up. That's what they were looking for. The 4-man presence on the western side. Good job for DRX. Good clean sweep from that western side. Again, it came down 18, 19 years, 20 home humble with it. And then DRX coming in to pick up the scraps, but the rotator they made was esports still career good. Japan I just want to see a little bit more of a stronger performance from DRX in terms of that firepower. We saw that from D+ as well, where they were a little bit getting consistent some points and some elims, but then they really turned things up to secure the position towards the top. Để chậm đàn cho luôn pil pil lên. A lot of decent elim games there coming through from Influence Rage, from earnings cái team nghe Cùng nhì à là cầm máy cho mà. Các nào cầm máy.
It's Regnum Karya that get the zone, but it's DRX that gets the win. Beautiful nade played here, and I mean, what a way to finish this match here, Neptura, for DRX. HPC cut. Really, HPC really yang great marau stuff. dan I bawa love seeing this from cek DRX. My favorite kind of team is a team that'll do these big old splits, and the timing that they get in this game in particular was really, really nice because they were holding the same position for so long, right? They had this for like a couple of zones, and EA were just keeping them cornered with their own big split. But the minute that EA started getting into a fight, the minute they started falling down, DRX caught that. They went, hey, we're gonna spread out now. Now is our time. They moved in around Regnum as well, and just have clean sight across to Arcade. Really, really good stuff from DRX. I love this for them. It got a bit dicey against Glory though at the end. It was like, oh no, let's not get 1v4 please. It would be a really bad way to end this game. But no, it was very good, and I want to highlight one play in particular. It's Pmgc. I think his scouting was very important for the squad to get control of that dip very earlier on in this match, because I think without his scouting, they may be just going completely blind in this match. So maybe in terms of, you know, par with Hyunbin, but Pmgc definitely very to the macro decision making hot jukes for this team and for them to make sure they can claim this chicken dinner. Absolutely. Hey, speaking of macro, right? I love the way Arc did this game, right? I think they were really solid when it came to the third parties. You just see them kind of waiting in the shadows, picking their fights, trying to steal some eliminations here and there. I think they were definitely trying to hunt down more Neptura, but at the end of the day, getting a top 2 finish and putting some points on the board is big. Yeah, they've really got their heads on a swivel. I've been really enjoying watching them take opportunities against other teams in all 4 games we've had so far. It's been a 18 years boy, 2007 third parties as much as possible. I love an opportunistic team like that. So really nice to see them continue to do that, and then in the final zones go in against Alliance as well. Looked really, really good. It was the play that I hoped that they would make. Yeah, it's not going to get them the win, but it definitely gets them that top 3. It gives them that position. And what I love in particular is the confidence that they're doing those plays in. You see that style? That's almost got away with that save, just flying over the entire compound. And it almost did work out, but he did get punished at the end, but his teammates were able to at least redeem that fight somewhat for the rest of the squad. As you go for all of these circles, it kept shifting up northwest towards Zaki, which is very rare to see circles around this area in general, so I feel like a lot of teams were taken aback by these circle shifts. And so because of that, a lot of these southern eastern fights just broke out when teams really wanted to delay it as much as humanly possible, but they were just forced in making those fights happen in the first place. But WBG, so strong me aggressive Val. But so fight nesta more volume with the explosive bow Neptura. When you in CQC group break sound nah, fight kill. Chances are the shotgun is going to win, and in this case, that was definitely how it did go down. Yeah, unfortunately. So, Hardboy just going way out into the blue zone for that one. I love that from them. I think WBG had some fantastic rotations, particularly in the early game. The 2-2 split to rotate right around to the north side. I loved that from them. But as we go over our top 4 teams, because WBG were the top 4, we got some pretty cool rotations from these guys as well. Yeah, I mean, I'm looking especially, yeah, you can go from Orsk. They left it for free. Influence Rage, take it. That much, so you can have that one. That is okay. And very quick rotation from E-Arena then into BGS announcement kita tu. BGS January February dah especially because of the circles continuously. Even BMPSC no open for all baat tu. Safely make it in. One major issue here, Neptura, is this split to the west. I think the split was good earlier stage, but when you get to the late stage of the game, it keeps you in a very weak state, and I feel like that is the main core reason as to why they kept losing players left, right, and center. BGS qualified fight that was coming their way. Yeah, I think especially with the Rising Cup right, it's quite flat, so team tu mungkin mu di bah na. Quickly if you keep a large split like that, if you don't cover yourselves in some way. DRX able to just really spread out, as you saw over EA's position there. Once they were cleared, so really nice from them, and it gives them points. You know, it's not the most channel Instagram channel last season now just top 2 because those top 3 teams just keep running away with all the points. For DRX, this is a massive game. Especially in that mid pack area, is the first, you know, Kai sang vậy tao. influence rage not Bang cha cha hi mà nè.
finished, right? They still ended up sneaking 5 eliminations, so those ขัดหน่อย remains ขัดหน่อย in เจ้ back. มีเขาเสียง The จะทีม arena มอง putting up some serious points though, one again. So we definitely got one. ถึงรู้จะ prepare ที่ว่าโจเนเท This was the match. ไอ้ทัวร์นาเมนต์หัว where อี a กเพียง lot of อุ้ม those เมีย mid-pack ตี teams นะ could finally start catching those top 3. Oh, ดี definitely. ไฟส์เช็คเอา ปุย โบย จะ โลเฮ ที่ นะ กำฮิโลวีกันน่ะ Falling slightly behind. So it's Android good to na see, you know, gitempa a ng man full that is POV stepping niya. up to the plate. It is Hyunbin again. I keep calling this guy. He is the rising star, not just of South Korea, but I would say on the global scale. This guy, if you guys don't know, started his career in early 2024. He started last year, and he's almost played every global event, and he's been doing so well with GRX. I mean, GRX is one of the most consistent teams globally out there. So Hyunbin, I don't know when it's going to happen. พอเราไอ้ตัวมาบา I ตัว just ต้อง know คุริฟาย one โลก day ป่ะ he is going to be a global MVP. I'm telling you. ดูดอกโลก เราคนละสาว I mean, to think that he's doing this well and is this successful only Dia a pare year and a team half ki into mo his do ko lang career piya is tu a jo. crazy idea to think in 2 years where is he going to be as we Pmgc. look over in the leaderboards, and yeah, DRX's win pushes them all the way up into 5th place, right behind top 3. To be honest, they're only นี่ต้องอาจ 6 จะปากีสถาน points ทีม away เอาหนุ่ now, ม so ซีโร่ a จนนั้นนะ big สะ game. But yeah, as we were saying earlier, right, Why? a big game for everybody here. I mean, บางกลาเทศอาจจะ Brazil A1 stays in 6th eSports place, ซ้ำเนี่ย you know, you've got Arcred moving into 8th now as Bangladesh well. DRS team mo umlo ba ta Both of Bala those ya. teams now moving into the top 11. So some really good stuff here. A great game before we head over into the Miramar. I don't like saying, I know that Hot Trooks, he's definitely onto something. Hot Trooks, you're onto something because the top of the leaderboard, it's not moving. I don't know what budgeting It's for weird. the last few games now. It's just been. What if OG was in this group? Could they have performed better than? No man. I performed all the Zo group ba. Which makes sense. The point gap is very minimal, but the top is not budging. Hot Trooks. So your theory is. Green sang out na sa Zoki da every Joji. stage it feels like. It's kind of wild, you know, and I'm gonna do a theory in the future as well, right? Again, imagine if this is last chance, guys. Right, where God top like would 2 have forward, definitely everybody else is God gone. like in If there this is wa a successful here, all these teams, like, let's be real, right? We would be counting God like down the lobby อย่า right บอล now. คุริฟายเขาเลยตัวก็ละ So, ก็ไลฟ์ it just goes to show how That like deadly the that last team, chance yeah. coming up is. We are obviously still here in Group Red. We get to see Rangdom Karya again. It's pretty crazy how much that top of the leaderboards has not shifted, because prior to this game, they were in 6th place with 17 God like would points, have okay? definitely. They now have 31. So you're like, oh, they're moving up for sure. Ni Right, wal Nectar? tamay No, audience still in wa. 6th place. That is a crazy Unbak stat. ti Oh wa my hud na goodness. sa ato I na. don't think I had done the Wafo numbers in my lower. head enough. I had no idea. That is crazy. What's also really funny though is Wild still in number 1, Turney K still in number 2, and then all of a sudden with the win, DRX are just shooting up into 3rd and 4th place here with the top gunslingers, right? So even though, you know, we have a new team winning, new team doing all the things, those 2 players still on top here. So you still see that consistency coming through. And man, I don't think we've had a team, Max, be more consistent over a stage, at least so far, than we've had the top 3 teams be. They're not budging. They are. I mean, Sounds except for like they're the first time was not in what top 2. I feel like there's, which is crazy. They haven't been in top 2. December 5 ako nakipan. It's really kind of it's over. for Influence Rage. But no, E-Arena 2, Tony K, just a rising star from that region. I feel like ever since he got that in the pier area next to Farm against, I think it was Thunder Talk, where he should not have won that 1v1. This guy's been on an absolute killing spree, and he's doing it once again in this stage here for E-Arena. Sakura's been also doing amazing, especially on that Rondo game. So E-Arena, the running White Rabbits here. Thế cái đó hệ last chance I 12 games wo hui thi 12 matches wo. After that, they kind of fizzled out. 2 days wo cup they done 5 plus 6. To that same level on the first day of the stage. Yeah, and that's what it takes to be a champion, right? I think you have to get, you know, you get a little bit of circle love or a very fortunate position in one particular game, and you got to capitalize it. And the thing is that EA, I mean, they did it right off the rip here. That was like probably a rondo that we won't see for the rest of PMGC. That's how good it was, right? And the fact that they did it in game 1, they knew that, hey, this was so huge, Max. Let's continue with that momentum. Let's play it carefully. Let's get to some end games and put some consistent points, and let's shut down this slot right before we can let anybody catch up. And they're executing that strategy to perfection. I adore the shift, by the way, from earlier this year in Globals where we had Sanok to now having Rondo. Because Sanok, it was a bad game, but it's Sanok. You know, we were all saying that, oh, it's a Sanok.
whatever, who cares? But now when it's 1 and you have a bad game of Rondo, it's like, no, you could have so many possible points. The elimination points are just so high if you do get a big game because of the entire recall tower system. So yeah, E-Arena able to pop off right away then Iptro, get himself that massive chicken dinner with a ton of eliminations is definitely success very early on. Kara Esports yung organization. Yeah, it has a real. That's the first best time Pmgc possible game they could have had to just set the tone for the rest of the day. Kara You know, Esports it's like, okay, we're looking at the winner list. Ah. No back-to-back win, no second win coming in from EA just yet. But they don't need it. They don't need it. They're top of the leaderboard. They are looking very good indeed. But I want to shift over just very quickly over to Miramar, right? Because that's the next game coming up. Ayo, boy, it's a first time international slot. Excuse me. Wimbo and Regnum Karya in Picado. Kim dang hoy na reason siya kap di thona on. Ayo bang bang so. We've had many of these hot drops. Ozi hong kitile. Reason na India reason na kap me nga. T1 team ya. Because there's just this standoff. I really hope we don't get. 只excuse 變真係話依咪炸嘅嘢啲嘢吧。 Underdog team mo le tua. Underdog ta na BGIS tem kap ma. Ima cakap kalau qualify pa ya dari international stage la kap lawan. Yet team ni. Kuma T1 kap ta ga. Ozi ho di set line up change song hello so na. Like new lineup excuse song pi Taylor. Soon azan Gimbo kap uwa. I'm gonna call it kind of stupid. I know these two teams and how smart they are. I'm pretty certain like ว่าทีมอารียนที่ห้องจะเห็นทีมที่ว่ามาจะ gun power จะน่าใช่ last time มาที่ว่าคิกอัพตัวใช่ไหม I mean all clear heads should not avoid this at all costs, right? I'm just saying as a from a Game ki check bo ball le. Ni chanong ka kap do asilo. But at the same time, I mean, Regnum ว่าเทวันจะ excuse ว่างจะเรางงใช่ these players in between segments, right? We got to hear Silas get asked the question, right? Which team do you like, dislike? And he was straight up Xavier. I never liked them. He's like, I like the players, but I am so sick of this team's play style. I don't care for it at all. They're in the finals. They made it. national level อ่ะใกล้ถึงแล้วซะที่ว่าตามแบบนี้ใช่ก็หิวตามที่เลยแล้ว if you hate Xavier that much and you don't want to play against them, just fail to qualify. You won't have to play against them at all. You'll be out of that entirely. But no, it's quite interesting that they has kind of a vendetta against Xavier because they're one of the most consistent team when it comes to qualifying events. Even though I'm making it to PMWC earlier this year, PMGC casting okay. And let's see इस मैच में क्या होता है आरू गेमिंग वाच पार्टी ने बोले ईपी ही इस मैच का मिल रहा है पट पना को ना ngai dam gitu ओके बाय मेरी वॉइस कम थी क्या गाइस सॉरी अगर मेरी वॉइस कम थी तो मैं देख नहीं पाया थोड़ी बात कर रहा था मैं अब चलते हैं अपन अपने 5th मैच पे 5 4 ठीक है बिल्कुल स्पैम कर देना स्पैम कर देना ठीक है जैसे ही मैच खत्म हो या पर्स ऐसा चलो चालू करो ठीक है तो चलिए शुरुआत हो चुकी है आज के दिन का ग्रुप रेड का ये पहला मिरामार होने वाला है रैंगल में हमने देखा कुछ चीजें कुछ टीम्स के लिए बेहतर हुई लेकिन मैप बदला है सिचुएशन क्या बदलेगा क्या ओवरऑल स्टैंडिंग में रिजल्ट बदलेगा ये सब जानने के लिए हमारे आंखों के सामने काफी बेहतर है comeback is needed जाना चाहते हैं लॉस लियोरिस को एनी डे इजी रहने वाला इम्पोजर से चल के इम्पाला APG नहीं पाहो इंडियन होय मतलब पाकिस्तान होय जुम्मा सेरा और उसके नीचे जो कोई जाने की सोच रखता है बावां को नेपाल हो या इसके अलावा सारी तुम ही वया ना कवर किए जा सकते हैं hit ne APG पाहो टॉप 5 फिनिश करेंगे for miracle for miracle को me too min on ya na ya for miracle me too min on la mi khat pa kon APG ang ko on मैं मानता हूं कि VP owner किसी ने APG हो पोस्ट में का टेक जीवे था सच कह रहा हूं मैं इंडिया हो लो सो सपोर्ट करूंगा आई फील काफी टाइम हो गया है 4 मैच मनी बहुत है जो लगा कंप्लीट 5 मैच कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद VP को कुछ अब एक्स्ट्रा करना होगा वर्टिस प्रो ये वो टीम नहीं है जिस तरीके से खेलने के लिए जानी जाती है पर चलिए उसके बारे में बात करेंगे पर उससे पहले हासिएंडर सैन मार्टिन वहां पर एक ड्रॉप क्लैश हुआ है ये वर्सेस BG
इन दो टीम के बीच में। ये टेबल टॉपर्स हैं, बीजी काफी ज्यादा नीचे हैं, पर जो जोन है वो नदर एजेस पर टूरपर्स APG या deserve itu हुआ cuma करता था, वहां पर Itu हमने udah lewat, टॉपर्स Pak. को अब जाते हुए देखा है। गीक उनके WBG काफी yang lum set mungkin sana suk yang साकुरा को देख रहा हूँ कि उसी प्लेयर के पास वेपन नहीं है। चलिए है उनके पास APG lo WBG kira tu लेकिन sangka ये support जो so के hat साथ zo चल zo रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये फाइट उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। जैसा आपने ऑलरेडी बताया, टेबल टॉपर से बीजी बहुत संभल के रहने की जरूरत है। top sapa एक hi अच्छी di ko बात है कि nok अगर आप jedang ध्यान से देखें तो टॉप फ्लोर को सिर्फ ये लूट कर पाई है। बीजी बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर, pa फर्स्ट फ्लोर universal लूटते हुए MVP वो hi ऊपर आए। सिचुएशन बेहतर उम्मीद कर रहा था, लेकिन गॉड स्पेड केवल पंप Flex शॉट ने इनके सता साथ है। है. माइक्रोजी दोनों ही गन हम जानते हैं कि क्लोज फाइट के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। लेवल 1 का Sasuke हेलमेट भी है, hat juga हालांकि simpit tang वेस्ट नहीं है जो komen इन्हें गॉस करके जा सकता है इस क्लोज फाइट में, लेकिन मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। फाइट हाँ पॉसिबिलिटी इस पॉइंट पे बन रही है, लेकिन कोई भी जल्दबाजी ना करना इन दोनों ही टीम का मानना। पहला मेरा मार है, अच्छा करना चाहिए। I don't know why, but after hearing his conversation with his wife, एक और खराब मैच तो वो बिल्कुल I भी really इस want पॉइंट पे top अफोर्ड नहीं कर to win सकते। PMGC. और अभी तो जोन भी उनके पास है ना, तो यहाँ से जाने का कोई तुक भी नहीं बनता। जितना देर आप क्रॉस फायर बनाकर बैठ सकते हैं उतने देर तक आप बैठे रहिए। B2 से सेम उदाहरण सिचुएशन ये है, के लिए है, Zenos. उनको भी पता है हम टेबल टॉपर्स हैं, 57 पॉइंट्स हमने Hello. निकाल दिया है। अब यहाँ पर क्रॉस फायर Interview बनाकर ham बैठेंगे, pham khat इंतजार real so mai करेंगे, तो te हमें तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। वो एक अलग कहानी रहेगी कि यहाँ पर कोई तीसरी टीम आए, पर वहीं पर एक स्टन ग्रेनेड का यूज किया जाएगा। जी नहीं, इची उन्होंने कैंसिल कर दिया। वापस से वो स्टन ग्रेनेड उन्होंने खींचा है, क्या वो शॉट्स दे सकते हैं स्टन को कैंसिल करके? जी नहीं, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। और अभी भी गॉड स्पीड जो पोजीशन उनके पास थी वो उन्होंने बनाए रखी है, बिल्कुल भी हलचल नहीं करी। अननोन, याटखा, इची, ये तीन प्लेयर हैं जो बार बार अपनी पोजीशनिंग थोड़ा चेंज कर रहे हैं। गॉड स्पीड वो एक सिंगल जगह पर बैठा हुआ खिलाड़ी। PMGC love connect sa ho गाड़ी लेकर वो निकले, पर ये के एक प्लेयर हैं जो नीचे कूद चुके हैं। रावण, ये एक थोड़ी अलग तरीके की गेम प्ले, पर इसी के साथ थोड़ा जो चेंजेस है वो भी दिखाई देगा। कूजा वो आ चुके हैं अब ETSH में। और मेरा मान में ये डिसीजन लिया गया है, क्या ये पहले से प्री प्लान था या फिर जो ओवरऑल स्टैंडिंग में हालात चल रहे उसके अनुसार इन्होंने ये डिसीजन लिया है? खैर वो सवाल उन्हीं के साथ चला गया, बट इस पॉइंट पे एक भी हरकत नहीं कर रहे हैं। जैसा आपने बताया सर्कल का साथ है, लेकिन tu kala कितने ya समय outfit तक ki यहाँ bang पे PG ये tak wa 8 के 8 खिलाड़ी अपने आप को masa रोक के रख PMC on सकते ne हैं? जोकर अच्छी लूट इनके पास है, Yang वेस्ट kata हम wah. इनके पास भी नहीं देख पाएंगे। मिनी फोर्ट के Thailand साथ team ni यूटिलिटीज की dia ta संख्या बिल्कुल ही नहीं है, इसी के लिए single किया fight जा रहा है bola इंतजार। ki और kap यहाँ tu पे hit बस dia वो ta पेशेंस गेम चल रहा है कि कौन पहले लूज आउट करेगा। कि KFL की तरफ से वो पहला कॉल आ गया कि चलिए बहुत हो गया, यहाँ से हमें थोड़ा सा एडवांस करने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि BG बिल्कुल ऊपर नहीं आ रहे हैं। मैं Jangan tu एक्सपेक्ट कर like रहा हूँ somewhat the कि Thailand ये team की टीम domination रहेगी ki जिनकी dia तरफ ni से na वो इनिशियल मूव आने वाली है, क्योंकि वो मोमेंटम इनके साथ है। reason सवाल reason वही at आता है in कि dominate ni क्या tu jumpa तैयार है इस फाइट के लिए? लूट के अनुसार दोनों Chinese ही टीम के पास domination सिचुएशन इक्वल है कि पहला नॉक सब कुछ बयां करके जा सकता है। jim masang tu मैं Thailand अभी ho भी ya सोच रहा हूँ कि क्या RRQ किसी को भी Mega एक भी Conqueror ग्रेनेड नहीं मिला। मौली है वो एक ग्रेनेड GP था, बता स्टन ग्रेनेड था जो ऊपर थ्रो कर दिया। इची के Cái पास bắt lại á, मोलोटॉव chú. है, उसका उतना Chinese फायदा team तो है फायदा one नहीं sided मिलेगा, वाला क्योंकि जब जो. तक वो आते हुए देखेंगे वो Team अपनी tua पोजीशन buat चेंज ni कर na सकते हैं। equally. पर ग्रेनेड तो परफेक्टली कुक किया जा सकता है। कोई भी टीम दोनों में से नहीं है जिनके पास RRQ in la ग्रेनेड chung a मौजूद chu हो। पर ट्रू Chinese रिवर्स, team ho chu चलिए gun वो जो स्प्लिट था अब skills उन्होंने कम कर लिया है। जोन वैसे भी ऊपरी Sama. दिशा में है तो उनको ऊपर जाना ही था। सबसे पहले उन्होंने उस डिस्टेंस को कम किया है और लूट ठीक ठाक तरीके से मिल चुकी है। क्योलामाओ हेलमेट वेस्ट अभी भी लेवल 1 का है Pero boy, और एक piti mah. ग्रेनेड, एक मोलोटॉव के साथ। Pero boy एरिया अच्छा है क्योंकि अभी भी ये एरिया जोन के अंदर, pi और bata जिस तरीके से प्लेन पाथ गया था आप कह सकते हैं कि जो ऊपरी दिशा में टीम जाना चाहती थी वो बहुत आसानी से वहां तक पहुंच भी गई। बट पर हाइड्रो थोड़ा दूर, जेली उनके पीछे पीछे। पर जेली हैं जिनके पास रावण बिल्कुल लूट नहीं है, उनके पास वेस्ट Mong तक sa मौजूद sam नहीं na है। पर shotgun रेगनम meta वर्सेस adapt आईएनएफ zo की lo जो फाइट है वो शुरू हो गई। साइलस पिछले मैच में ही तो उन्होंने शुरुआत करी थी और यहाँ देखिए वापस उनको डैमेज बहुत पड़ गया। अच्छी खबर कि वो रीसेट कर चुके हैं, ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं। खिलाड़ी बैकलाइन में चले गए, बैकअप भी आ चुका है। लिल बॉय वो ट्राई कर रहे हैं कि कवर फायर दे सके, और क्या बेहतरीन Ito ma यहाँ fa पे di Lil Boy ko वो forward एडवांस nga किए, pai nga chu नॉक किए, कंफर्मेशन निकाला गया। पीछे जो इनके टीममेट थे वो दर्शक बन के रहे, क्योंकि उन्हें ही पता था कि यहाँ से अगर ज्यादा एडवांस करेंगे तो एक और नॉक और एक और कंफर्मेशन, इससे बेहतर है कि उठाते हैं व्हीकल को और सीधा कवर्स की तरफ अपने आप को लेके चले जाए। लिल बॉय कोई गलती इस पॉइंट पे नहीं, लेकिन हाँ नुकसान आईएनएफ की तरफ हुआ है। अब देखिए इरैंगल में इन्होंने अपना पहला स्थान गंवाया,
मेरा मार में आते के साथ इन्होंने अपना पहला खिलाड़ी गवाया। INF थोड़ा तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मुश्किलों में फंस गए धीरे-धीरे करके। पर ठीक है 48 पॉइंट्स हैं और जैसे हम कह रहे हैं ना कि 48 पॉइंट्स आपने निकाले हैं और कोशिश रहेगी कि इस मैच में थोड़े बहुत पॉइंट्स और अगले मैच में थोड़े बहुत पॉइंट्स एटलीस्ट 55 का मार्क आपको क्रॉस करना है, क्योंकि वो जो एवरेजेस की हम बात कर रहे हैं कि आपको 150 160 पॉइंट्स को क्रॉस करना होगा मेक श्योर करने के लिए कि हाँ आप टॉप 3 के अंदर बने रहें। और ये लॉबी इस तरीके से है रावण कि मुझे लगता है कि 150 क्रॉस नहीं करना चाहिए इस लॉबी के अंदर, क्योंकि 10 से लेकर अगर आप 16 तक देखते हैं 4 और 14 10 पॉइंट के डिफरेंस पर इतनी सारी टीम्स हैं और उसके बाद 20 से लेकर 33 तक आप देखिए जहाँ पर 9वें से और 5वें पायदान के बीच में इतनी सारी टीम्स हैं, तो लगभग बराबरी का गेम चल रहा है सारी टीम्स की तरफ से। तो इसीलिए वो जो कट ऑफ है वो हो सकता है कि उतना ऊपर ना जाए, पर अभी भी ये और उनके साथ साथ बीजी की जो टीम है बैठी हुई है। जब तक जोन नहीं हटता तब तक बैठे रहिए, इंतजार करिए। वैसे ये के पास एक मौका था कि यहाँ से वो डिसएंगेज करके निकल सकते थे, पर उन्होंने वो भी नहीं किया। हेलमेट उठा के जा रहे हैं अंदर लेके कि मेरे टीममेट को मिल जाए। मेरे ऐसे सिचुएशन में अगर आप कभी फंसे हो तो आपके माइंड में क्या चलता है? क्योंकि मैं तो अभी तक लूज आउट कर जाता और एडवांस कर देता कि ठीक है जो होगा हो तो होगा, बट मैं आपको काफ़ी ज़्यादा रेगुलर देखता हूँ इस तरीके की सिचुएशन में आप भी खेलते हो। अगर आप इस तरीके के हालात में फंसते हो तो आपके माइंड में क्या चलता है? देखिए मैं क्लासिक जब खेलता हूँ तो कुछ नहीं चलता, ई स्पोर्ट्स में खेलता नहीं हूँ, तो सवाल अभी भी वही है कि और आप ये सवाल पूछने लायक था। एक बार सोचो शर्म करने वाली बात है कि ग्लोबल चैंपियनशिप चल रही है और आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हो कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो क्या करता। नहीं मैं क्लासिक मैचेस की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है तो कि आप शर्मिंदगी आप वहां तक जा भी नहीं सकते, बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्लासिक मैचेस आप भी नहीं जा सकते, इसीलिए तो हम दोनों बैठकर यहाँ पर कास्टिंग कर रहे हैं। बट सवाल वही है कि भाई जोन के अंदर कौन कैसे पहुंचेगा, क्योंकि जो आर्क के प्लेयर हैं वो ऐसे जोन के अंदर जा सकते हैं और अलायंस जिनका पिछला मैच खराब गया था वो अब जोन के सेंटर पर पहुंचने वाले हैं, पर बीजी और अब तो इनको निकलना होगा। भाई एमओ की ऐसी ही कमी चल रही है और ये और घटाते चले जा रहे हैं। जोकर फाइनली यहाँ पे एडवांस करना स्टार्ट कर दिए क्योंकि ये इंतजार करेंगे नहीं और एक ग्रेनेड और उसी के साथ वो कनेक्शन। फाइनली पहले स्टेज का जो इंतजार था एक नॉक के साथ आया तो जरूर है, लेकिन रीसेट कराने का अगर मौका दे दिए तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। विंडो से जंप करना, सीधे नीचे जाना, यही इनकी सोच है। बीजी अब संभलने की जरूरत पड़ने वाली, यहाँ से ही आपको मौका देंगे नहीं क्योंकि उनके पास ओवरऑल स्टैंडिंग का मोमेंटम भी चल रहा है। स्प्रे कनेक्शन एक और खिलाड़ी के ऊपर, वो नॉकआउट स्पीड नहीं दिखा पाई अपनी स्पीड को, इसी के कारण बीजी एक खिलाड़ी को गवा चुके हैं, एक खिलाड़ी नॉक है और बचे हुए 2 प्लेयर्स के ऊपर पूरी रिस्पांसिबिलिटी। ये बहुत आसानी से इस फाइट को जीत सकती थी और उनको ये पता भी है कि वो बहुत आसानी से जीत सकते हैं इस फाइट को। वो बस इंतजार कर रहे थे कि बीजी जो नीचे टीम है, उनको पता नहीं होगा कि वो बीजी की टीम है, बस वो इंतजार कर रहे थे कि क्या वो नीचे फाइट करने के लिए आएंगे, ऊपर फाइट करने के लिए आएंगे। ऐसा हुआ ही नहीं और जब चार्ज किया ये ने तब तो सामने बीजी को कोई जवाब देने का मौका तक नहीं दिया गया। पर वीपी अगेन उन्होंने अपना पहला खिलाड़ी इस मुकाबले से गवा दिया है। एनआरजी वैसे भी वो जोन के बाहर है। इन्फ्लुएंस रेज वर्सेस रेगनम उनकी फाइट की शुरुआत हुई है जहां पर वुल्फ उनका एलिमिनेशन हो गया और रेगनम वो अपना ये दूसरा खिलाड़ी गवा रहे हैं। जी नहीं, पहला खिलाड़ी वो अपना गवा रहे हैं। इन्फ्लुएंस रेज उन्होंने अपना एक खिलाड़ी गवाया था। ये के प्लेयर्स हैं जिनकी एचपी कम है, बट 1 मिनट 18 सेकेंड्स और आप सोचिए कितना ज्यादा दूर जाना है उनको जोन के अंदर। एग्जैक्टली, लेकिन एक और फाइट इसी बीच से पनपता हुआ। ट्रू रेपर्स सीधा की के बहुत क्लोज जा चुके हैं। उनकी फाइट की भी पॉसिबिलिटी है इस दूसरे स्टेज में कि आमना सामना हो जाए, लेकिन यहाँ पे इसे अंत करना पड़ेगा। सर्कल का श्रिंक आ रहा है, ये शुरुआत अच्छी हुई लेकिन उसके बाद भी एडवांस नहीं कर रहे। अब तो सर्कल का भी डैमेज आने वाला और फर्स्ट एड इनके पास उतनी अच्छी है ही नहीं, इनफैक्ट है ही नहीं। वैसे में अब थोड़ा सा एडवांस करना एक मजबूरी सी भी बन चुकी है, लेकिन अभी भी कोई हरकत नहीं। बीच के खिलाड़ी कर रहे हैं इंतजार कि आप पहले, तो ईए के खिलाड़ी बोल रहे हैं आप पहले, ऐसे में पहले कोई भी एडवांस नहीं कर रहे। दूसरी तरफ लॉर्ड वो भी एक फाइट की शुरुआत की, पॉप शॉटगन के साथ वो एडवांस किया गया, डैमेज देना चाह रहे थे लेकिन अभी भी कोई भी कनेक्शन मिला नहीं है उन्हें। अब तो जोन के बाहर ही लगता है कि दोनों ही टीम तय बना चुकी है कि कोई भी जोन के अंदर नहीं जाएगा। चलिए क्रॉसफायर फाइनली बिठा लिया गया है, पर इसी के साथ साकुरा उन्होंने अननोन को गिरा दिया और जो तीसरे प्लेयर थे यादखा वो गिर गए और ये
उनका एक भी प्लेयर डाउन नहीं हुआ और बीजी वो एलिमिनेट हो गए। जैसे मैं कह भी रहा था कि ये उनको पता है कि वो इस फाइट को जीत सकते हैं, वो तो बस इंतजार कर रहे थे कि क्या नीचे वाली टीम आएगी रश करने के लिए, नहीं आएगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंत में ये ने कहा चलिए अभी फाइट की शुरुआत करते हैं। बीए चट मन लो वाला हो जो बाल कुछ दान और क्या बढ़िया तरीके से उन्होंने खेला है। ड्रॉप लोकेशन है वहां से ये चिल मोंग जो मोंग करना है कर लीजिए। ये का एम इतना स्ट्रांग है स्ट्रांग स्ट्रांग दान सारा जो क्रॉस फायर था वो बैठा का बैठा रह गया। 1600 मीटर दूर जाना है अब इनको जोन के अंदर, यानी कि एक और ईस्टर्न शिफ्ट आ चुका है, नॉर्थ ईस्टर्न शिफ्ट आ चुका है जोन का। Noya ko na kusuba tha utachunga game no ha. सेकंड में अगले सर्कल का श्रिंक आने वाला है। पूरा एरिया वहां पे कोई नहीं लूटा, जैसे में कुछ इनिशियल लूट वो वहां से करना चाहेंगे, व्हीकल उठाएंगे और बहुत तेजी से अपने आप को सर्कल में लेके आना, ये उनकी कोशिश हो सकती है। हम देख भी सकते हैं कि इस पूरे स्टार्टिंग में उनके हालात उस एचपी की कितनी ज्यादा नाजुक रहने वाली है। देखते हैं क्या वो पॉसिबल करके जाएंगे या फिर नहीं। बट अगेन सर्कल के अंदर जो मल्टीपल फाइट्स होने की जो पॉसिबिलिटी लग रही थी, कोई भी फाइट नहीं हुई, सब अपने अपने रास्ते निकल गए। दूसरी तरफ WBG वर्सेस DRX, ये बहुत कमाल की बैटल होने वाली है, जहाँ पे DRX पिछला मैच उनके लिए बेहतर था, WBG उन्होंने भी अच्छे मैचेस यहाँ पे दिखाए, सुख उन्हें इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। शुरुआत बेहतर हुई है Arena DRX te की, ututta देखते हैं कि और sausi. कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं WBG के ऊपर। और ये अगर यहाँ एलिमिनेट Gam होती है plus तो the street आज WBG और DRX इन सभी को फायदा मिलेगा। इनफैक्ट अलायंस और रेगनम फ्लैश यहाँ तक मैं मानता हूँ कि इन सारी टीम्स को फायदा होगा अगर ये यहाँ एलिमिनेट होती है। हालांकि जो प्लेयर प्ले जोन से नॉक हुआ था उनको वापस रिवाइव दे दिया गया। अगेन उनके पास Tier 10 proper 4v4 fight ले लिया उनको बैंडेजेस दे दिया गया धीरे ही सही, पर वो अपने आप को हील कर रहे हैं। और 1 मिनट 16 सेकंड का समय, इसके बाद जो चौथा फेज आएगा वहां पर आप बैंडेजेस से काम नहीं चला सकते, वहां पर आपको एक फर्स्ट एड की जरूरत पड़ने वाली है। देखना ये कि ये उनको कोई गाड़ी मिली भी या फिर नहीं, या फिर वो पदयात्रा करते हुए वहां से निकलने वाले हैं। बटू रिपोर्ट्स इसी बीच वो जोन के अंदर आ चुके हैं। थोड़ी देर पहले हमने इनके आसपास बहुत सारी टीम्स को देखा था, पर वो टीम्स भी जोन के बनते ही अलग चले गए। पर हर्ष उन्होंने गाड़ियों की आवाज सुनी है, बोर के वो प्लेयर हैं जो ट्रू रिपर्स के करीब आना चाहते हैं, पर जली उनके पास पहले से ही एक शानदार कंपाउंड मौजूद है। ट्रू रिपर्स रिस्क नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि पिछले 4 मैच में जो रिस्क के उनको रिवॉर्ड मिले हैं फिनिशेस के तौर में, अब बारी Tori ako men hilo Tori lang lo. Aning ayat lang ako. जरूर यहाँ से टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो आसान फॉर श्योर नहीं होने वाला। जिस तरीके का मंजर हमने अभी तक देखे, कंपटीशन आखिर में बचता ही नहीं, अर्ली एलिमिनेशन ही हमने बैक टू बैक रैंगल में देखे। ये कि जो कर फाइनली इतनी मुश्किलों के बाद जो एंट्री बनाने की कोशिश थी, लिल बॉय 1 नहीं 2 नहीं 3 प्लेयर की यहाँ पे मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। और ऐसे में कंफर्मेशन क्या यहाँ से आ सकती है, ये बहुत मुश्किल से इस एज पे पहुंचे और वहाँ पे INF मानो बस कर रहे थे इनका इंतजार। कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकालने की कोशिश की जा रही है, बट लिल बॉय बहुत कम एचपी थी अपोनेंट की, लेकिन उसके बाद भी उस फाइट को नहीं संभाल पाए। ये इतनी कम एचपी के बावजूद फाइट बैक करते हुए, हालांकि ज्यादा नहीं लो भाई ये रखा गया है। 2 खिलाड़ी ने भी ओवरऑल गवा दिया है और आखिरी प्लेयर को ढूंढ रहे कि कहां C2 वो बैकलाइन पे जा चुके, साइड लाइन से एक और टीम की एंट्री होती हुई। क्या चल रहा है मेजी सर्कल के इतने एज में, ये फाइट की पॉसिबिलिटी, कमाल का मुकाबला चलता हुआ। और वहाश को देखिए वो जोन के बाहर चला गया प्लेयर, उसको वहां पर बिल्कुल भी डर इस बात का नहीं है कि भाई वो नॉक हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, वो गए वहां पर फाइट लेने के लिए। और NC2 चलिए इसी के साथ उनका एलिमिनेशन, ये वो 62 के साथ मुकाबले से बाहर हुए। बट ट्विस्टेड माइंड और इन्फ्लुएंस रेज उनकी फाइट अभी भी हो सकती है। जी नहीं, इन्फ्लुएंस रेज वहां से निकलना उन्होंने सही समझा। NRG उनकी भी फाइट हुई है जहां पर रिवर्व उनको एलिमिनेट किया गया है। ट्रू रिपोर्ट्स वर्सेस WBG उनकी फाइट की शुरुआत हुई है, वहां पर हर्ष ने डाउन किया और गेम को थर्ड पार्टी करने के लिए आ गए। NRG वर्सेस ETSH उनकी फाइट एक अलग तरीके से चल रही, जहां पर NRG उनका एक प्लेयर तो जोन के बाहर डाउन हो गया और आर्थर वो बचे अब एक आखिरी खिलाड़ी। एक 1v2 सिनेरियो में फंसना बहुत बुरा हो सकता है, जहां पे आपके 2 खिलाड़ी आपकी आंखों के सामने और रिवाइव की गुंजाइश लगा के बैठे हुए, बैकलाइन से वो थर्ड पार्टी स्प्रेज आ रहे, रिवाइवल यहाँ पे देने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ के ऊपर अटैक करना, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल ही नहीं सकती। और इस बात को समझते हुए उन्होंने अटैक भी किया, हालांकि अब वहाँ पे रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जा चुका है। अब यहाँ से आर्थर के लिए बच के निकल पाना लगभग नामुमकिन। एलिमिनेशन होता हुआ NRG की एक अच्छी कोशिश, लेकिन अंजाम उतना बेहतर नहीं ढूंढ पाए। बट शिप जो डाउन हुए, बैकलाइन से जो थर्ड पार्टी आ रही है,
क्या अब उन्हें रिवाइव मिल सकता है? WBG के फाइट चले लॉबी फास्ट को नहीं ना लिया सच हो है इतना कि ये रिवाइवल एग्जीक्यूट करके निकल सकते हैं। और ट्विस्टेड माइंड वो ग्रुप ग्रीन चो वैसे स्लो भी पेस आना चो पसंद करेंगे फाइट नहीं इंगा बट चिचा WBG tak हर्ष ने bucin जिनको नॉक किया था मैं फाइट उसका खत्म ना फ्रैग फाइट उनको mun नहीं na मिला फाइट वो खत्म रिवाइवल एग्जीक्यूट हुआ हालांकि ऑर्डर उनका एलिमिनेशन हो चुका है इस मैच से वे सा dia कोई भी वे सा dia में हेलो क्या था वो ट्विस्टेड माइंड फाइट लेने के लिए वहां पर चले गए एक प्लेयर को डाउन तो किया गया पर बोर थोड़े समय पहले ट्रू रिपर्स के करीब थे अब वहां से निकल गए आंख उनके सामने मौजूद है ट्रू रिपर्स अभी तक उनके पास जोन का बढ़िया एडवांटेज है फ्रीक जी हाँ करीबी मामला हो सकता है कूजा वो डाउन हुए और कूजा इसी मैच में तो खेलने के लिए वो आए थे बट ट्रू रिपर्स वो भी थोड़ा आगे जाना चाहते हैं बोर का वो जो एक खिलाड़ी वहां पर है अपना sta वो फाइट होने वाली है बहुत ज्यादा आगे निकल के डैमेज दिया गया और हाइड्रो उन्होंने एक्सो को डाउन कर दिया एक्सो वो एलिमिनेट भी कर दिए गए क्या बढ़िया गेम प्ले चलता हुआ ट्रू रिपर्स का कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं और माइंडसेट बिल्कुल क्लियर फाइट तो जीतनी ही जीतनी है बैकलाइन क्या इन्फॉर्मेशन है कि कोई आने वाले हैं नहीं और जैसा आप यहाँ से अब देख चुके हैं कि अब वो आगे की तरफ पूरे तरीके से फोकस है सर्कल का शिफ्ट वो डिसाइड करेगा कि जोन इन खत रही फेवर है लंग TR10 बॉल चाल है करने का टाइम चाह रहा है उस पॉइंट पे और ट्रू रिपर्स बस एक एंगल डिमांड कर रहे हैं उस विंडो के थ्रू उस गेट के थ्रू जो कि फिलहाल डिजाइन किया गया है ये काफी अच्छी बात ट्रू रिपर्स अगले सर्कल का शिफ्ट का करने वाले इंतजार लेकिन ये इंतजार नहीं कर रहे बैट पर उन्हें गिराया गया काउंटर ग्रेनेड उतना ही ज्यादा बेहतर जो नॉक थे उनका कंफर्मेशन बनाया गया हार्ड बॉय क्या वहां पे उन्हें रिवाइव दे सकते हैं चलिए उससे पहले उन्होंने एडवांस किया बैकलाइन से ग्लोरी वो थर्ड पार्टी स्प्रे करते हुए कंधे में उठा के लेके जाना एक ऑप्शन मैं देख पा रहा हूं लेकिन उसके लिए वक्त के पास चलिए कोशिश की जा रही है हार्ड बॉय आसानी से उस सर्कल का एज ढूंढेंगे और रिवाइवल यहां पे मिल जाएगा जहां पर जली वहां पर एक और फ्रैग निकाला गया ट्रू रिपर्स ये दूसरा फ्रैग उनके खाते में जाता हुआ पर जोन ट्रू रिपर्स के करीब है पर क्या वो फाइट लेना चाहते हैं जी हां जली वो फाइट लेने के लिए चले गए आर के वो दो प्लेयर वहां पर मौजूद हैं अजम और कोविड की जली चली उनका एलिमिनेशन हुआ हार्ड बॉय और उनके साथ बैड बॉय ये दोनों ही प्लेयर हैं सामने की साइड पर जाता हुआ क्योलमाओ का एक ग्रेनेड डैमेज दिया जोन से भी उनको डैमेज पड़ा है साइकिल देता डाउन नहीं हो पाए ट्रू रिपर्स अभी भी उनको जोन के अंदर जाना बाकी रहेगा दो फिनिशेस निकाले हैं और अभी भी ini third party bola mount नहीं आया इनके पास ये जो इंटरनेशनल लॉबी आवाज से खत भी सर्कल वाले का भला पाइए मुझे ने दे बागी का घुमाई ले मैं देख रहा हूं एक बहुत बड़ा स्प्लिट रखा गया था जिसे अब कम किया जा चुका है सही वक्त में वो बनने के बाद जो सदर्न साइड का शिफ्ट आया है जिस एंगल में ये पहले थे उसी एंगल में वापस जाएंगे और आसानी से सर्कल का वो एरिया अपने लिए बनाएंगे प्लेयर वहां से बिल्कुल भी अभी मूवमेंट करने वाले हैं नहीं उन्हें पता है कि सर्कल का साथ है हीरो कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट पॉइंट यहां से जरूर निकाल के जाए बट ट्रू रिपर्स जिस पैटर्न पे नॉर्दर्न साइड के इलाके पे गए थे फिनिश निकालने के लिए सर्कल की तरफ और ये अप्रोच काफी ज्यादा बेहतर है जहां पे सर्कल एक बार फिर से मिलने के चांसेस रहेंगे लेकिन डाउन द हिल जाने की जरूरत पड़ेगी कोई फाइट ला कोई टीम न लाया न चाहे नहीं पर अभी स्काउटिंग अच्छी तरीके से करी गई है क्योलमाओ के द्वारा उनको भी पता है कि जो नीचे के कंपाउंड से वो खाली और सीधा स्लैम करना एक सही निर्णय रहेगा उनके लिए और आसानी से पहुंच जाने वाले तो इतना कुछ खास मुश्किलात नहीं होने वाली अभी भी 1.5 मिनट का समय और देखना है कि अब क्या सर्कल सदर्न एजेस पर कटेगा अगर सदर्न एजेस पर ये सर्कल आता है तो ट्रू रिपर्स अच्छे तरीके से उसका फायदा उठाना जानती है जली अब वो तीनों प्लेयर्स का पर्सपेक्टिव देख सकते हैं गाइड कर सकते हैं पर मैं देख रहा हूं इन्फ्लुएंस रेज को कि अभी भी सेंटर ऑफ द सर्कल मौजूद है पर आज वो ट्रू रिपर्स को छोड़कर जहां पर गए वहां पर डीआरएक्स के प्लेयर मौजूद है साइशे वो डाउन हो गए बैड बॉय डाउन बैड बॉय का एलिमिनेशन हुआ और अब हार्ड बॉय एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से और डीआरएक्स उनको हार्ड टाइम देता हुआ ये खिलाड़ी अब ऐसे में एक ग्रेनेड मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ जी हाँ ऑलरेडी वो ग्रेनेड निकाला जा चुका है थ्रो भी काफी अच्छी है क्या वो टाइमिंग बन सकती है क्या वो प्लेसमेंट बन सकती है लग तो रहा है कि ये कनेक्शन बनाएगा स्प्लैश डैमेज के साथ यहाँ पे काम चलाना पड़ा बैक लाइन से और भी थर्ड पार्टीज आते हुए डीआरएक्स एक ऐसे मुकाम पे फंस चुके हैं जहाँ पे रास्ता ये तो बचे कैसे और ये हार्ड को एकदम से स्लामिन इनकी तरफ से व्हीकल से अटैक किया जा चुका है और उसके बाद गन पे स्विच करेंगे क्या कंफर्मेशन निकाला जा सकता है जी नहीं हार्ड बॉय ट्राई काफी अच्छा था उनकी तरफ से लेकिन उसके बाद हिलबिट के ऊपर भी वो थर्ड पार्टी डीआरएक्स 10वें स्थान पे एलिमिनेशन ये भी कंफर्म मन abang वही लो शायद उन्होंने भी सोचा नहीं था कि इस तरीके से कोई आएगा थर्ड पार्टी करने के लिए या फिर उनके ऊपर स्लैम करने के लिए पर बीपी
आखिरी प्लेयर बचा हुआ है उनका, वो क्या करना चाहते हैं, वो भी एलिमिनेट हो गए। जी हाँ, वो भी एलिमिनेट हो गए। इतने सारे मौके उनको मिले थे कि वो किसी भी रिज लाइन पर रुकते और इंतजार करते, पर ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। पर ड्रू रिपोर्ट्स Orang charge ko lalaya ho jaye pi ngai to ba. ज्यादा टीम्स अब इस लॉबी के अंदर बची नहीं है। फाइनली पांचवे मुकाबले में ड्रू Pengal nei रिपोर्ट्स du mun zo sa kill be khila do. पहला प्लेसमेंट पॉइंट मिलने वाला है। इसके आगे और भी जाया जा सकता है। 3 प्लेयर्स के साथ हैं। इन्फ्लुएंस रेज 2 के साथ रेगनम काफी ज्यादा दूर हैं वो। मैं देखना चाहूंगा कि फ्लैश 33 के साथ चारों प्लेयर्स उनके बचे हैं। रावण अलायंस उनके चारों प्लेयर्स इस लॉबी के अंदर है एंड ट्विस्टेड माइंड्स वो भी जोन के अंदर। सर्कल का एडवांटेज मिल चुका है। वैसे मैं अयंगदा क्यों को चंगा सीखी है वो इन्फॉर्मेशन। चलिए हम यहाँ पे फुटस्टेप के माध्यम से उन्हें पता चल चुका होगा कि सामने कुछ खिलाड़ी रैंडमकारी वो बैकलाइन पे कर रहे हैं बस इंतजार, और उनके पास भी वो 3 खिलाड़ी का एडवांटेज है। अलायंस वो भी बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ कर रहे वो सर्वाइवल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट। बट चलिए नाम लेते हैं, उनकी फाइट की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआती झटके के ऊपर चीजें बहुत निर्भर करती है। हमने देखा है कि इनिशियल नॉक कितना इंपैक्ट, और जिसमें ये उम्मीद करके हम नहीं चल रहे थे, काफी बेहतर वो नॉक निकाला जा चुका है मौली, ताकि वो स्लो डाउन कर सके उस कॉर्नर से, लेकिन उससे पहले ही वो एडवांस कर चुके थे। अलायंस अपने 2 खिलाड़ियों को गिरते हुए देख चुके हैं। ऐसे में यहाँ से बच के निकल पाना लगभग नामुमकिन सा लगता हुआ, जम करके वो कंफर्मेशन ढूंढना चाहते हैं, पर स्विच और उसके बाद शॉट, ये अनएक्सपेक्टेड शॉट जिसके लिए तैयार नहीं थे। अलायंस उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मुकाबले से 8वें स्थान पे। और वो वाइल्ड थे जिन्होंने वो फ्रैग निकाला, रेगनम को वो फ्रैग मिला है। पर मैं देख रहा था कि वहाश वो जो शॉटगन से 1 HP पे उन्होंने वो नॉक निकाला था ना, वो खूबसूरत था। मजेदार गेम जो ट्विस्टेड माइंड्स का अभी हमें देखने को मिला। 15 तक वो टीम पहुंच गई। थ्रो रिपर्स एक और टीम जो 12वें पायदान पर है 13 पॉइंट्स के साथ। इस मैच के बाद ये तो तय रहा कि वो बीजी को पछाड़ने ही वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी 14 और 13 2 पॉइंट्स उनके पास हैं, इतनी मुश्किलें नहीं होने वाली। पर ट्विस्टेड माइंड्स वो भी जोन के अंदर आ चुके हैं, पर एफएल वो तो जोन के अंदर है पूरे 4 प्लेयर्स के साथ। पर गीक उनके ऊपर वो प्रहार है, ग्रेनेड डाला गया, और शायद उनको पता भी था कि वहां पर अकेला प्लेयर है। ग्रेनेड डालने के बाद अब खुदाई चालू होगी कि वो प्लेयर गया कहां पर WBG हीरो आखिरी बचे हुए खिलाड़ी रावण अभी भी जोन के अंदर है। वो प्लेयर पॉसिबिलिटी रहेगी उन प्लेसमेंट पॉइंट के लिए। WBG हमने देखा है कि अच्छे मैचेस बहुत अच्छे निकालते हैं, बट क्या साधारण मैचेस में भी वो डिसेंट प्लेसमेंट निकाल के जा सकते हैं। टॉप 7 भी आना आसान था नहीं, लेकिन जो सर्कल का एडवांटेज मिला है वो उनको रास्ता दिलाते चले जा रहा है कि ठीक है कुछ और प्लेसमेंट इजी ते पन ना हो होई सदर्न साइड में एक पैटर्न की तरह स्प्लिट करके रखे, अलग-अलग कंपाउंड्स में अलग-अलग दिशाओं में नजर रखे, और व्हीकल बड़े अच्छे तरीके से पार्क किया गया था। सारी बातें एक तरफ बट अगेन एक स्लो डाउन जहाँ पे कोई किन्हीं के सामने जाएंगे नहीं, और हम 6ठे स्टेज से 7वें स्टेज में जाने वाले मेजी, और केवल 7 ही टीम है। एक बार फिर से वही मंजर जहाँ पे इनिशियल ज्यादा फाइट्स हमें देखने को मिले नहीं, फिर एकदम से वो फाइट बैक टू बैक, और 6ठे स्टेज तक आते आते केवल 7 टीम सर्वाइव कर रही है। पर अब सर्कल मुझे लगता है कि सारी ही टीम से फेवर करने वाला है। चलिए जी हाँ, खाली WBG के हीरो हैं जो बाहर हैं, और ट्विस्टेड माइंड्स एक बार फिर से वो स्लैम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर टीम फ्लैश मौजूद है, सामने का जो रेज है उसे भी हथियाने की कोशिश करी जा सकती है, पर उन्होंने शॉट्स दाग दिए, यानी कि बोस वो भी बैठे रहेंगे, दूसरे खिलाड़ी जूस वो भी वहीं पर हैं। शॉट देने की कोशिश करी गई दोनों तरफ से, पर गाड़ियां वो डैमेज हो चुकी है। पर अभी ट्रेन में गाड़ी गंग चला स्लैम ने ची लो माइंड क्या अगेन वो स्लैम करने वाले हैं, जैसे हमने स्लैम करते हुए अलायंस के ऊपर उनको देखा था। अभी के लिए रेगनम 3 प्लेयर्स के साथ वो भी है। इन्फ्लुएंस रेज वर्सेस ट्रू रिपर्स की अभी तक वो फाइट हुई नहीं, पर हीरो WBG के वो किस तरीके से जोन के अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि अभी भी 42 के साथ हैं। यहाँ पर भी एलिमिनेट हुए तो मात्र एक ही प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिलेगा। और WBG अच्छी खबर ये है कि उनके नीचे की जो 2 टीम्स थी वो एलिमिनेट हो चुके हैं, पर फ्लैश एंड रेगनम ज्यादा दूर तो वो भी नहीं है। 34 एंड 33 एक बड़ा मैच उनकी तरफ से आया। WBG टॉप 3 से बाहर हो जाएंगे। पॉइंट ला नो दिन चांस होई ना तो चुनी जोन को न फेवर था वो जगह तक ख्वाब रखे हुए अडुंगु वाला कोई मचा उनके ऊपर डैमेज कुछ हद तक मिला हीरो को। क्या अभी भी वो कोशिश करेंगे फिर से वो अगले कंपाउंड की तरफ पहुंचने में हुए कामयाब। ट्रू रिपर्स ध्यान इनका भी उस ओर जाता हुआ, स्मोक का इस्तेमाल वहाँ पे
हीरो ने करने की शुरुआत कर दी है, कोशिश कर रहे हैं कि LWG pang sot mongi. ताकि कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट निकाल के वो जा सके। ग्रेनेड उनके तरफ फेंके जा रहे हैं की तरफ से, आसान फोर श्योर नहीं है बट हीरो मानो सही में हीरो बनते हुए अपने टीम के लिए वो अभी भी फाइट बैक कर रहे हैं। लेकिन दूसरे एंड पे रैंडम कार्य उन्होंने फाइट की शुरुआत की है, तो इससे जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे उनकी मुश्किलें बढ़ी और स्प्लिट करके जो रखा गया था वो थोड़ा सा भारी पड़ा। बैकलाइन से शॉट्स आ रहे हैं, एफएल वो अब ग्रेनेड करना स्टार्ट कर दिए। आए जरूर से वो पूरे अच्छे नंबर्स में, लेकिन लॉर्ड कुछ अलग ही करने की कोशिश भी थी जिसके कारण वो हल्के फुल्के डैमेज उनके ऊपर भी। पर आप सोचिए ट्विस्टेड माइंड भले उन्होंने अपना एक खिलाड़ी गवाया हो पर 3 प्लेयर के साथ सही सलामत वो जोन के अंदर पहुंच गए और हीरो अब यहां पर गेम के साथ 1v2 की बैटल लेनी है। दोनों साइड से वो शॉट्स मिस होते हुए और यस डैमेज दिया केविन को पर उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हीरो। उनका एलिमिनेशन WBG 4 पॉइंट्स निकाले इस मैच से। टीम फ्लैश वर्सेस ट्विस्टेड माइंड्स की अब फाइट होनी है जहां पर फ्रीक वो डाउन है और जैसे मैं कह भी रहा था कि भले उन्होंने अपना एक खिलाड़ी गवा दिया हो पर तीनों के साथ एटलीस्ट वो जोन के अंदर पहुंच गए। रिवाइवल एग्जीक्यूट होगा। टॉप्स आगे बढ़े थे पर वो ग्रेनेड उनके बहुत करीब आया और ये ग्रेनेड अंदर गया भी नहीं। उनको लगा कि वो प्लेयर अंदर कंपाउंड के गया पर ऐसा हुआ नहीं है। टॉप्स शायद उनको भी कॉल आ चुका है कि भैया आप दूसरे साइड पर आइए। पठरू रिपर्स मौजूद है। पठरू रिपर्स जोन को बेहतर हो वही तान इन्फ्लुएंस रेज। अच्छी खबर रही कि इन्फ्लुएंस रेज थोड़ा और सेंटर में निकल गए और अब आप सोचिए कि इसके बाद फाइनल सर्कल आने वाला है यानी कि इन्फ्लुएंस रेज उनके पास ज्यादा मौका होगा चिकन डिनर निकालने का। lại đấy bạn xem rồi sẽ khen đây là thật đây là cọ ngài tơ lực in le tơ le जी हाँ रावण चले गए। 아예 나 제가 찔라 내기 리포지션 도 와야 다. अभी भी इसी मुकाबले में 아니 देखो जिस स्पॉट नो लो वाला है जी जो बोलने की आदत मेरी जाएगी नहीं बट जैसा मैं बोल रहा था कि INF वो सेंटर में ट्रैक्शन भी बन सकते हैं क्योंकि एक तरफ से ट्रू रिपर्स बैकलाइन से एफएल अगर दोनों ने मुश्किलें बढ़ाई तो फिर जाके उनका एलिमिनेशन फॉर श्योर हमें देखने को मिल सकता है। बट गेक धीरे धीरे इन्होंने व्हीकल के साथ बिल्कुल से आगे जाने का डिसीजन लिया। व्हाट इतना ज्यादा फ्रीडम तो आपके पास है नहीं। इस सर्कल में स्मोक कर सकते थे, विजन ब्लॉक कर सकते थे, लेकिन इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा देरी हो गई। एक और टीम का खात्मा टॉप 5 टीम हमारे आंखों के सामने आ चुके हैं लेकिन चिकन की पॉसिबिलिटी हाई मान लो जो मुश्किल। और वो विन थे जो चलती गाड़ी से दोनों प्लेयर को गिरा गए। क्या बढ़िया स्प्रे उन्होंने दागा। हालांकि इन्फ्लुएंस रेज कोशिश तो उन्होंने भी करी थी पर ट्विस्टेड माइंड्स अब उनका आने वाला है यहाँ पर प्रहार फ्लैश के ऊपर। वहीं पर रेगनम थोड़ा सा शांति का परिचय देते हुए पर अब फाइनल सर्कल शुरू होने वाला है 8 सेकंड के अंदर जहां पर इन्फ्लुएंस रेज उनको फायदा हो सकता है। रेगनम ट्विस्टेड माइंड को पहले लड़ाई लड़नी होगी। एफएल उनको यहाँ पर फाइट करनी होगी। विन का एक ग्रेनेड फ्रीक वो यहाँ पर डाउन कर दिए गए। विन का एक और ग्रेनेड। ट्विस्टेड माइंड वर्सेस रेगनम अभी भी वो फाइट होनी बाकी रहेगी। साइलर्स उन्होंने आते हुए देखा उन प्लेयर्स को वापस वो पीछे निकल गए। विन का ग्रेनेड फ्रीक वो एलिमिनेट हो गए। लॉर्ड वो डाउन और अब ट्विस्टेड माइंड्स वो एकमात्र प्लेयर्स Buổi के tối साथ con rốn in twisted mind बस बचा ही ये बच कैसे रहे बस इस बात में मैं हैरान परेशान। लेकिन फाइनली वो कनेक्शन यहाँ पे ढूंढा गया। एलिमिनेशन एक और टीम का टॉप 4 हमारे आंखों के सामने। एफएल स्लोली अब एक तारीख के ऊपर अटैक करने वाले वाइड देख रहा जा चुका है। कंफर्मेशन भी यहाँ पे ढूंढने में हो जाएंगे कामयाब। बैकलाइन से स्मोक के सारे बचे हुए खिलाड़ी बस क्रॉस करना चाह रहे हैं लेकिन वो क्रॉस ना करके जाए इसका ध्यान रखा जा रहा है। ट्रू रिपर्स भी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए इस फाइट में। हर्ष बिल्कुल अलग खेल रहे की और हाइड्रो एक तरफ से मानो रैंडम कार्यों को यहाँ पे रोक के रखना चाहते हैं और उसके लिए अच्छे वो मॉलीज क्या कनेक्शन बना के जा सकते हैं। आखिरी वो मॉली थी जिसका इस्तेमाल किया गया। हाइड्रो बहुत ज्यादा ओपन में हो गए थे सही वक्त में कवर में, नहीं तो एक गलती बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती थी। ये दो खिलाड़ी धीरे-धीरे हर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगा कि वहां पर वो स्टन ग्रेनेड का यूज करने वाले पर वो स्टन ग्रेनेड का हाइड्रो ने यूज किया नहीं। पर अभी भी डीवीएस उनके पास है। लूट की कोई कमी नहीं है। अपने आप को हील भी वहां पर कर लिया गया। बूस्टर्स लगा दिए पर एफएल की फाइट होने वाली है। खिलाड़ी लो वहां पर डाउन में हर्ष उन्होंने वो फ्रैग वहां पे निकाला। उन्होंने उस प्लेयर को डाउन किया था। आईएनएफ को इस मुकाबले से बाहर हो गए। इन्फ्लुएंस ने 4 फिनिशेस निकाले और उनका एलिमिनेशन हो चुका है। पर ट्रू रिपोर्ट्स क्या अभी भी कुछ चीजें बची हुई है इस मैच में दिखाने के लिए। विन उनका एक और ग्रेनेड रेगनम के बहुत करीब गया है। लॉक्सी उनको डैमेज पड़ता हुआ ज़्यूस उनका वो शॉट लॉक्सी को डाउन हो गया। साइलेंस उनकी अपनी बहुत ज्यादा कम है। ट्रू रिपर्स वो फाइट करना चाहता है। हाइड्रो वो आगे बढ़े। चिकन ये एफएल पे फुल स्क्वाड वो इस मुकाबले से बाहर है। ट्रू रिपर्स वर्सेस फ्लैश टीवी को
शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं है, क्यू को गिराया जा चुका है, कंफर्मेशन का इंतजार वो करेंगे, लेकिन बचे हुए 2 खिलाड़ी उनके पास प्लेइंग एरिया भी अगर आप देखें तो उतना ज्यादा रहने वाले हैं नहीं। ये ग्रेनेड काफी ज्यादा डैमेज देके गया हर्ष को। हाइड्रो वो एक एंगल लेके बस इंतजार कर रहे हैं अपने टीबीएस के साथ, लेकिन क्या ये 2 खिलाड़ी 4 पे भारी पड़ पाएंगे? बहुत मुश्किल। इनिशियल डैमेज यहाँ पे जरूर दिया गया हाइड्रो की तरफ से, लेकिन वो नॉक के लिए काफी होगा नहीं। जब करके वो कनेक्शन बनाना चाह रहे थे, लेकिन हाइड्रो उन्हें भी गिराया गया। नाइस ट्राई की थे ये जवान से एलिमिनेशन ट्रूपर्स का और सेकंड डिनर लेके गए एफएल। एफएल ते ही team जो गन स्किल्स ना नाइस ट्राई चंगाई किट भी REG ते जो एलिमिनेट गेम वाला वा जो ने दे क्या तो टाइम वेस्ट हुआ है गेम वाला जो सर्कल चलाई ला जो शॉट ना हम पता चा ला वा ओले utilities नहीं लो जो बोई था जो REG ते लाई utilities फाइट था आ फ्लैश वा ओले आंत फाइट हो चुकी उपाय मतलब बढ़िया गेम बढ़िया नाइस ट्राई we got this chat we got this यूटिलिटीज की कमी पर जितना था बढ़िया यूज किया भाई बहुत गन स्किल्स वांग खत्ते सांग ओजी ते सांग नजी उनते ते वे माओ वा लेट्स गो चैट लेट्स गो मी का वांग पाई दो अमृत गेमिंग वाईटी। अच्छा ये ओवरऑल का कह रहे थे, अरे शिट थोड़ा सा मिस हो गया। चैट सब्सक्राइब करें। टेबल जनरेट चल गया। Flash. And in their first ever appearance in the PUBG Mobile Global Championships, Team Flash get their first chicken dinner on the first day, Max. That's got to be so huge for this team. Definitely, they're going to be ecstatic about a finish like this here, especially able to wrap it up in style versus the likes of True Rippers. And not an easy position to maneuver your way through, right, Niptra? Going through this graveyard, which, as Blank said, you just got to hope you can find the right spot where all the players are all hiding. Is like battleship game here. And they were able to find it for some of the players eventually, and that was going to be the end of the influence raid. But yeah, Flash, they knew they had the man advantage. They had full control of the push-up, so they can't deny the points away from you. And those 2 extra points are going to be looking real good. Yeah, really excited about this team, honestly. It's not uncommon to see a team that's, you know, fresh out the gate, ready to go into Pmgc their first season in to get a win. But often we see that on day 3, you know, after they've had a few days to really understand what works, right? But for a team to come in game 5 and get a big win, look at the eliminations we're seeing. Look at Win going for the win, 1,000 damage, 7 eliminations. Like, this is a 12 elimination win for them on their first day at PMG. Is really, really nice. And as you said, Max, it's just looking really good. Their momentum was really good at stage. They had a very zone with, but they kept their head on a swivel, were able to angles and get that one. It was I don't know if it would, I would say it was a difficult zone per se. They were in the city for a very long time, but I would say they used the zone to its full potential. They had the northern control, there's a little bit elevated too, so they had even more oversight on a big majority of the fields of teams trying to push in the circle itself. So until that point, they had a ton of eliminations because they were the gatekeepers of Cruz del Valle, and they were Miru, Tesamjen. Миний дэлхийн авраг болоод хүрээдэг ирээ заа юу? Paano? India te lang si sense ano. Ci video ang TR spam. Sige se final хайрхийг авсан. Тийм үү. Хэс монтэй. Авраг авч ирлээ авлаа. Баярлалаа. Тэгээ 3 удаа яг ногоон групптэй орсон. Дараагийн тэмцээний хизээ яриа.
Finischen Nahrung soyunmaz saronbilmiyor. Хэрүү санаж Миний хэд дэлхийн аврал болоод хүрээд ирээ зэн. Ихтэй шүү за. За хайртай шүү. Амжилт. За. Баяртай. इमोशनल कर दिया भाई क्या सपोर्ट देने ले और क्या चाहिए अभी तो जीतना ही पड़ेगा भाई Team rotations here for this game, looking at the squads, trying to center up. Big northern shifter against next to Kruznevaye. And Flash, as we talked about already, Nitro, that northern side is a bit elevated. It's a bit of a plateau. Wow, the game is in a cup. Pro DRX. Guess what? None of them survived. So efficiently by Team Flash. Final kayo na yung hindi po yung video cho. Zone, right? I mean, you see. TR, they're really moving all the way around the zone, trying to find a good spot, finally get in onto the south side, and that also works really, really well for them. But it's just that final clash between those two that, you know, Flash were just able to just push forward and really corner TR in that zone. So nicely done, and that's going to be a 22-point game on the board. That's a pretty good stat for your first win at Pmgc. Oh, they're going to be stoked about that one for sure. But True Rippers, just to go on that one before I wrap up my point on this compound, is they actually had a really good game plan, which is playing the southern edge of Cruz del Valle. And they're just kind of hunting teams away from them. And at one point, they even pushed away Influence Rage in those graveyard positions, which are not great to defend. And sure, it didn't quite work out. They don't get the win, but I think that was the right way to play a city finish, which is just make sure to push teams away from you as you clear the edge. And that makes it a little bit safer for you to keep your players alive while taking as little risk as humanly possible. Yeah, and I'm glad that True Rippers were able to put some points up here because, I mean, that's going to be the last team for Team India to try to make it on into the grand finals. And they needed those points because we're seeing some big point sponges here at the top. With that win from Flash, they were in 7th place prior to getting these 22 points. You put up a 22-point game, you're moving up the leaderboard. So I'm gonna be really looking forward to see where they're ending up. But I got a big feeling here, Max, that this particular group is going to be very top heavy. So if you want to make it into, let's go and take a look at those leaderboards. And yes, sir, indeed. Woo! All the way up to 3rd place here, Max. Yeah, 3rd place. Look at that. Team Flash making it happen here. One chicken dinner, of course, 16 placement points total, having a great moment here on this first day for Group Red. Weibo, though, getting pushed out of the big 3. Quite unfortunate for them. Still 43 points, raking them up to 40. So, as you said, Hodrix, it is quite... The gap is not impossible to close. You can still make it up, even if you're at the bottom of the rankings. There's still that potential. And actually, looking at True Rippers here, such a good performance, in fact, Niptra. They're out of the bottom 5. They're in the middle pack. This is looking good. True Rippers definitely looking very strong compared to what we saw in it originally from Orangutan. Yeah, really nice right off the bat in the first day. I just hope that they continue this kind of consistency throughout the few days because we've seen it in teams before where they have a really खेलना उतना चाहिए जिसमें ये मेरा अपना वो है चाहे 12 घंटे हो चाहे 13 घंटे हो चाहे 5 घंटे हो 10 घंटे हो जितना एक प्लेयर अपने दिल से मतलब एक होता है ना कि जब आप स्क्रीम्स खेल रहे हो आपकी एक कैपेसिटी होती है मेंटल कैपेसिटी कि आप it will get harder के 5 सेकंड बाद है ना जेली गया भाई यूटिलाइज करने देखो ना यारो किलफीड पड़ा भाई लड़के किलफीड भी पढ़ रहे आसपास के फाइट्स के अवेयरनेस भी रख रहे और इंटेंट भी दिखा रहे कि जाके थर्ड पार्टी करे ऑल दो सिली मिस्टेक अगेन अपना गाड़ी से अलग प्यार है भाई तुमको एक ही चीज बोलता हूँ अपने इंडियन प्लेयर्स का गाड़ी और उनका अलग मोहब्बत है भाई वो मोहब्बत ओजी में भी दिखी वो मोहब्बत इधर भी दिखी गाड़ी चलाने की सिली मिस्टेक हुई देखो कैसा मर गया उसके मुंह पे चला गया यार अगर यहाँ पे मरता नहीं ना कसम से सेफ रुकता ना नेट डाल के खत्म दे 2 किल मिलते अपने को यूटिलाइज हो जाता ब्रो वो थर्ड पार्टी यूटिलाइज हो जाता समझ रहेगा 2 किल ले लेते चारों फिर बाद में यूटर्न मार दे इंटेंट है भाई इंटेंट है वो देख के खुशी हो रही इंटेंट है यार वो देख के खुशी मिल रही भाई थोड़ा हाईलाइट शुरू से देखो पहले 3 मैच एक पॉइंट लेके फिर बाद में ऐसा इंटेंट दिखाते ना तो दिल में तसल्ली होती पब्लिक
कि ये लोग कुछ करने गए, समझ रहे क्या? पहले के 3 मैचों में अगर 3 पॉइंट आए, कोई भी घबरा जाए भाई कि अच्छा करना है, परफॉर्म करना है, थोड़ा स्लो खेलते, ये करते हो करते है भाई, है जेली की दुनिया है, थोड़ी अलग है दुनिया। जरा देखिए, जरा स्प्रे वे किसी का खतरनाक। आ आ आ आ अय्यो दीवार पब्लिक, अय्यो रे ऐसे फूटा रे ने, कितना गाली दे रहा रहेगा रे ने खुद को क्लुग। अय्यो पापम रा। हाँ भाईगन, हाँ दे दिए ना, गरम है भाई, एफएल खतरनाक टीम है रे भाई। क्या बात है हाइड्रो, एफएल है रे भाई। उय हाँ लेट के देख रहा भाईगन, ले क्या बात है कियो, एंटी रे एंटी यार के पॉइंट्स अभी दिखाएंगे। 62 पॉइंट। इसमें भी ट्विंस है लॉल। वापस इंडिया नहीं आ रहे, तुम समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर बाय एनी चांस टॉप 3 नहीं होता है तो एटलीस्ट वो टॉप 11 तो फॉर श्योर रहेंगे, वो लास्ट चांस जाएंगे। इंडिया वापस नहीं आ रहे, ऐसा बोल रहा हूं, समझे मेरा बात, समझे तुम क्या बोल रहा हूं? But there's a lot of teams that are having good, consistent performances here. One, again, is Influence Rage, Max, right? They had 3 top 2 finishes, right? Then they go out with 5 eliminations and come back with another good, solid performance here. Influence Rage is doing really, really well. Yeah, but not top 2, so I'm disappointed. Sorry, if I don't see Influence Rage top 4, 2, yeah, you're right. They're washed. No, I'm no, they did struggle a little bit because I think it's not them playing a bad game here. It's just unfortunately they fell victim to the game plan of True Rippers, which actually, I want to take on a pick on True Rippers. I feel like they were playing a bit too aggro at the start of the day. They were playing a bit just very aggressive, but there wasn't really a game plan behind it. As compared to this game, Hot Jukes, where guess what? Actually, a game plan that was set up really well. Sure, they still don't win the game, but for me, it shows potential that this squad, macro-wise, has that potential. So very happy with True Rippers. But before I throw it to you, Hodrix, to send it to the game, San Martin, I better not see it. Okay, E-Arena, Burmese Ghouls, I don't care what you do. That fight happens, I give you 1 Joker. You got it. You wasted it. I see it happen again. You guys are trolling. I better not. Well, we better not see it, that's for sure, because there's so many spots wide open. Let's see if you can go ahead and make those movements. Well, we got the last Miramar of the day, guys. Day number 1 about to wrap up. Let's go ahead and take it to our casters, John Allen and Blank, for one more time. Thank you very much, Hot Dukes. Thanks to Max and Nat as well for giving us all the lowdown, all the goodies as we head on in. And nothing bad is going to happen at the start of this match, Blank. I could already feel it. There's nothing bad. Nothing bad at all. I hope so. I'm praying so. Kind of worried just slightly. This playing path, though, it passes right over San Martin. Very dangerous zone, indeed, that we don't really want to have to talk about, and hopefully won't have to at all during this match, because things will change, surely. Yeah, they must do, right? Right? Yeah. No? Maybe. Let's see. Schools are out.
Oh, they're out quite close to each other, Black. They're all out quite close to San Martin. There's also another team. They're likely going for Picardo, but we don't need to worry about them. Please don't do this again. At least don't drop on the same building. At least don't drop on the same exact building. Okay, Burmese schools are going a little bit further. Look at that. They're split. They're around. Oh, Blank. I think our prayers may or may not have been answered, but for now, Ichi's a little bit far away from San Martin. Busy kita wang je. Samse unte lah. Time baseball pita atau je drop clear. It would be hilarious. Burmese schools is like, well, we can't hard drop San Martin. We'll just hard drop Picardo instead. Funnily enough, they are quite close to silence. They were right. But yeah, they're on more of a split this time around, which I'm grateful for. I like any team that sees something go badly and decide to switch things up afterwards. So Burmese schools, in my heart, they are now forgiven. Discord link in toggle. Oh, that's nice. Wait. Very friendly indeed. They're welcome. Got zero. The western side we go then. Well, Inboxing got Twisted Minds. We're both going a little bit further down towards wanting the wave. Number kanila. Shocking day for VP, hasn't it? It's not been great. No, it's VP definitely not been great. It looks like that VP close to all they get here. There's been one or two moments where they've chimed in and had a decent showing, but yeah, it's been messy. It's been pretty bad for them. Damn, they're pulling a team secret, dude. They really are. They really are. I mean, to be fair, they do have company down towards the bottom end of the tables, right? It's not. No, it is bad. I mean, you got the Boars, you got Nuclear Zone, you got ETSH. A little bit further ahead, you've got Burmese Ghouls, and right now they're the bottom 5, right? And that is exactly where you don't want to be. The 11th place bubble is 18 points as it sits right now for Twisted Minds after 5 games that we've had. That's just shy of a 4-point average. So I think that's 3 points, if I'm not mistaken. I think I am mistaken. I'm not going to try and do it again though. It's a fairly low average, so you know, one big game is all it takes right now to get you out of the bottom 5. That will get harder as time goes on. Malloy, not the last of Virtus Pro, but you're certainly going to feel like it right now. He's got a pump action shotgun, no helmet, no armor, no meds, and very close to no hope. Steps out, opens. Hello. Sino jawab? Tuwagin. Oi. Hey, ha. 1v2. 1v3. 1v4's got a ball. Dangerous. Oh, that would have been so bad for Ark if they had not been able to get through with that third player. Glory was going to be snuffed out there too. Kind of sick though, to be fair. Circles also are fight too much over. Doing it in style. I can see Momong team Hova. The lead bars are fully in. There is not much reaction going on in that reactor at the moment. Chilobi ay tian ba ti auto bang so di white kill the no. What did you say? Carbon boron control rods, I believe. Typical. Yeah. What was the old one? I'm not sure. You talking about? I don't know. Are you talking about one of the nuclear reactor meltdowns that we've had over the history of them? I'm not entirely sure. Yeah, the RBMK, that was lead. Oh, okay. Well, yeah, that didn't go so well. No, it didn't. Anyway, let's not talk about that too much. Hey, look, it's interesting history, and hopefully they're going to be able to recover from their meltdown and see if they can get up towards the top spot. Bring out some of that plutonium power, you know, for Nuclear Zone. What they need? Reverb on the reverse, up the hill. SH making it happen. This is the safest way to do it as well. So fair enough. Can't believe I'm analysing how sticky a car's wheels are to the side of the mountain, but here we are in PUBG Mobile. Yeah. That's where it all takes place. You love to see it. Spider cars. Clambering up all sorts of mountains.
I mean, that's what E-Arena were able to leverage, right? With the buggy, which is generally sticky of the vehicles. Was able to get up to a super high ground, isolated position. Hey. Sakura was able to sit on and rain from up on high. Rain hell from above. Terrible time for everyone else. Well, that's what afforded him that opportunity. DRX moving in, close to the blue zone, leaving Torre Hamada. Top 1 ako na top 8 chan ko ya tang points ko TBC je ki difference lo hir cha. Second day ting la ball hoi wang cha. 40 seconds on the clock. Second day ting decide. Decide. Each and ham. I think decider khatang te. From one game to next. Ye tiao hun. Especially here in group where was hin ball hoi mo bai the ye se je ye lai. Chụp mày vậy ta. WBC FL INF FL này nó không chụp mày thế INF không sẽ thế đấy. WBC bằng consistency cái gì. Team tha hoi first time mà rồi ta mua cho first second day ball hoi lo third đi gọi chụp. Experience team WBC thì họ WBC DRX WBC le REG không hi main te so no matter what happens for Burmese goals it is very sportsmanlike to do. INF không thôi. I mean, lâu rồi chứ ETS cho NRG. NRG match ngọ 5 point. Consistent nữa phải là point match cái nào point khác. I don't know if I'd call that sportsmanship. But I do get where you're coming from, and I think I generally I've seen people ruin. Cho bọn này nó mà nè, India te. Nhiều sẽ bị lâu cho. Nhiều sẽ gì đâu. Hiện là cái China pe người đi. Ni chỉ sẽ để hồ thế vậy nè. Don't let that one go. That'll allow E-Arena to continue unchallenged, or at least for the time being. Zedwolf, he's been knocked from quite a distance away here. Flash has put the beam on. Difficult position to go for the rescue towards. He's very, very low, not quite able to get that flush. The smoke's there. While they're still taking shots, they are still trying to slow it down, but it's not going to work. A huge south shift. I was too preoccupied with these players out in the field, but Blank, a massive shift down to the south. Yeah, absolutely, over towards where currently Regnum Kai is playing. This is a very, very good circle for them to get on with. I do sort of agree with the death. Không có gì này FL tiền rồi tao. Cái kill đâu open na vào. Pmgc 2026 champion. Cái là cái đòn đá để ta. And I think someone should do that. Ozzy tiền là building. Ozzy tiền là mi tum chi wa ta lại. Cái heal tiền nhong. Hilarious even if you didn't. And I would not make fun of you for it. I feel like that's Kitsune's new name. Oh, so Smoke got saved. He needs a new name. Yeah, no. You know what? I was making a joke. You're being mean. You're being mean. Well, contender kat itu FL lah. Nah, so agak ball dah nang tu. Smooth mana tu? So dah bang. Kat nang let tu dah. Dia kita bang ke team dah. Dragged their forces back together though. Because they know that teams are going to start to crunch in. Threat across the way. In Vietnam. Weibo Gaming now as well from Boars. Maybe not quite as much of a threat, but still a presence that you do not really want to cross if you can help it. And they will be able to consolidate to the east side of Montenuevo, out west of Power Grid and Picardo. All the other teams are going to try and find their home. There was a lot of teams further to the north, up towards Crater Fields, which means that this north side is going to be much more packed, and you can see that on the map. You guys can see actually over on the map feed, which is available on various, I believe, various platforms, but definitely on YouTube. And you can take a look at where all your favorite teams are at all times. But we can see right now on our map that there's a huge grouping of teams towards that Power Grid corner of this circle. It's a difficult one as well because this is sort of valley of death type of deal right now. Allah jangan garis to actually have some kind of position to play that is safe. That buggy is salvageable. It's fine. Yeah. Bit awkward getting that one caught. Slightly delays the rotate. Not that it really matters. There's not many. Ôi này cái gì nào lại em game. Anyway, ahead of you is Weibo on that front side.
Burmese Ghouls get themselves a central position. Tira ahead of theo the cái mỏ arena as cả well, sĩ so cái they mỏ can do a little cao bit more bố on this match. nàng But nhát cái đạo once again, it is none other than the Flash. Dayon Esports hay cái team ông lâu nhà cái này. It will get a little bit claustrophobic Dayon with the Esports other up. teams looking their way, but they can maintain this. It remains in circle for a Bút long cái time. team cái team đi They kiểu do have a good chance from this spot. Next circle coming in in a couple of roar seconds. roar कोई भी चंगा था 10 roar now. की ज़्यादा है We'll see it pop. It Vì does vãi cái continue chỗ to thả sit vút vào. right on top of Burmese Ghouls of Regnum Kaya. Influence Rage in the arena Roar out on that Amitabh eastern Bachchan के side. शुरू So, था Suryavansham. what can Team Flash do on that southwest edge to keep up with the pack at the top? Weibo though with a more difficult rotate, and they're going to try and send it straight on into the west side. Shots already laying down into them from Dua DRX. da e ho store ki ti al bi ko ya ka mo In pan front de of them, e ka so ka su ya ka Weibo mo having ya a ka mo tough time, che and that is going to be exactly why they walk into the wall. फ्लैश को देखना चाहूंगा कि बाकी रहेगा 80 मीटर दूर का वो इलाका पर अलायंस वर्सेस ट्विस्टेड। जैसे मैंने कहा भी था, अलायंस वो जोन के बाहर से आ रही थी और ट्विस्टेड वो जोन के एजेस पर झुके हुए थे, वो जोन के साथ जाना चाहते थे, पर पैकेट बिल्कुल क्लियर था नहीं, अंदाजा उन्होंने लगाया नहीं और उसका नुकसान हुआ, एक खिलाड़ी उनका गायब हुआ। पर ये जो बकी आपस में टकराई है मजेदार पर टीम अलायंस 36 Trong skin हम लोग है ना, अभी भी सोचता हूं कि मतलब डाउनलोड लो कर सकती थी, Easy शुरू अच्छा अच्छा किया था, पर लॉर्ड वो तो फंस गए, बहुत ओपन में फंस गया वो प्लेयर। और अलायंस क्या वो थोड़ा पीक करेंगे, हालांकि डैमेज लॉर्ड को आओ कहीं की और से बंग पड़ से रहा है। हेलमेट स्किन की बंग से मुश्किल रहेगा इस पॉइंट पे, स्कारल स्किन की बंग से पास है, उसके लिए वो टाइम चाह रहा है कि थोड़ा सा वो वक्त मिल जाए ताकि स्मोक करके वो अपने आप को रीपोजिशन कर सके। जैसे तैसे करके वो अपने आप को बस संभाल रहे हैं। अलायंस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है नहीं इस फाइट के लिए, क्योंकि सर्कल को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है इस पॉइंट पे, और नॉर्दर्न साइड की तरफ वो खाली इलाका जहाँ पे इत्मीनान से वो अपने आप को लेके जाएंगे। एनआरसी एनआरजेड उनके बीच में एक भिड़ंत होती हुई इनिशियल नॉक निकाला गया, बट डीआरएक्स क्या यहाँ पे मौका रहेगा? जी हाँ, वो इनिशियल नॉक यहाँ पे निकाला गया, कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकालने में हो जाएंगे कामयाब। डीआरएक्स के आंखों के सामने से तो आप रोटेट करके नहीं जा सकते, वो मिड रेंज के भी स्प्रे बहुत घातक साबित होते हैं। और वहां पर वापस उन्होंने गाड़ी नहीं मांगा तम तो न लाए इंटरनेशनल लॉबी है, और इसकी वजह से अलायंस के जो प्लेयर हैं डैमेज बहुत पड़ गया स्टार्ट के, दोनों ही प्लेयर्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ा है। पर डीआरएक्स जैसे हम कह भी रहे हैं कि मिनी का बढ़िया यूज किया गया। बारी है अगले सर्कल की शिफ्ट की, और देखते हैं कि क्या ये सेंट्रल शिफ्ट आने वाला है, लगभग सेंट्रल लूप शिफ्ट। सारा फिन हा यंग हामन ट्रू रिपोर्ट्स ज्यादा दूर नहीं है, आर्क की जो टीम है वो भी ज्यादा दूर नहीं है, पर बैड बॉय एनआरजी के थोड़ा ऊपरी दिशा में जा चुके थे। बोर उनके पास एक कंपाउंड है जो जोन के अंदर है, बाकी जो दो खिलाड़ी वो जोन के बाहर। सुख को आप देखें जोन के बाहर डैमेज लेता हुआ वो खिलाड़ी, पर टीम फ्लैश नहीं के किले ये तो हन्नम इस मैच का तो फायदा उनको आईआरसीटी को नुंगा को ना एडवांटेज है, और उन्हें पता भी है कि प्लेयर्स कहां पर हैं। थोड़ी देर पहले उनके ऊपर से ही टीम निकल कर गई थी, अभी भी 9 पॉइंट्स के साथ है डीआरएक्स, और उनके साथ रेगनम 40 टोटल पॉइंट्स के साथ। देखो ची बात ले एआरसीटी हुन मतलब ची दी है, सामने भी वो चैलेंज आता हुआ सर्कल के रूप में भी, एआरसी के रूप में भी, डब्ल्यूबीजी सब एआरसीटी सोल में सक्की बले डब्ल्यूबीजी अपने खिलाड़ी को गवाते ही चले जा रहे हैं बचे हुए दो प्लेयर के साथ। अब थोड़ा पैसिव होने वाले, वो जो हम डिमांड कर रहे थे, जो सोच रखे हुए थे डब्ल्यूबीजी आसानी से डे 1 में टॉप 3 में अपने आप को रखेंगे। हाँ, उन्होंने अपना काम कर लिया है, लेकिन उस तरीके का नहीं जो हम सोच के रखे हुए थे। अब इसका फायदा बॉटम की टीम थोड़ा सा जरूर उठा सकते हैं, क्योंकि बचे हुए खिलाड़ी भी प्ले जोन के बाहर है और उनकी एंट्री ना हो सके इसका ध्यान रखा जा रहा है। बहुत बुरी तरीके से डब्ल्यूबीजी गेट भी पूरे करवाने के लिए, लेकिन ये क्या कर बैठे, एकदम से सामने जाना, इतने ज्यादा ओपन इनिशियल डैमेज, बहुत ज्यादा कमाल का शेप, उन्हें भी मौका मिलेगा नहीं। ETSH हो वहां तो ETSH उनका भी एलिमिनेशन, बट जेली उन्हें गिराया जा चुका है। मुश्किल है kita tim ची यार कंपटीशन हम दे इंडिया संग खो चे दे क्या वो सही सलामत जोन के अंदर गए? डब्ल्यूबीजी वो सुख थे जो जोन के बहुत दूर थे और जोन के अंदर पहुंच नहीं पाए, एलिमिनेशन हो चुका है उनका। पर ट्विस्टेड माइंड अब डब्ल्यूबीजी और डीआरएक्स के बीच में फंस चुकी है। हीरो क्या उनके पास फर्स्ट एड बिल्कुल भी नहीं है, अभी तक उन्होंने अपने आप को हील नहीं किया, ऑर्डर उनका एलिमिनेशन हो गया। डब्ल्यूबीजी जो अभी तक इतना बढ़िया खेल रहे थे, 43 पॉइंट्स, और इस मैच में शून्य के साथ उनका एलिमिनेशन हुआ। पर एनआरसी वर्सेस ट्रूपर्स उनकी फाइट होती हुई सामने से ग्रेनेड जाता हुआ, आर्थर डैमेज उनको बहुत ज्यादा दिया गया। हर्ष एक और ग्रेनेड के साथ क्योलमाओ, उनके हाथ में एक और ग्रेनेड है, पर वो वॉल को क्रॉस करके नहीं जा पाया। पर क्योलमाओ वो क्रॉस करे या ना करे, पर बाउंस होकर उनकी तरफ वो ग्रेनेड गया, प्लेयर डाउन हुआ। एनआरजी देबे लो क्यों लमाओ चंग से वो भी
मारेगी फाहिता Solo का solo ले वांग energy ते भी मौजूद है पर जोकर उनकी तरफ से जो डैमेज पड़ता हुआ पर इसके साथ एपीके वो डाउन हुए फाहिता एक काफी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से क्या यहां पर हर्ष Itu वो डाउन नहीं कर पाए और अब आई तो वो एक आखिरी खिलाड़ी Kadin. नामुमकिन रहा और इसी के साथ ट्रू रिपोर्ट्स Aki nga akim zilo pa dia zona pa posting. shit yung na siya last place team ang fight ka solos स्प्रे कहाँ से आ रहा था? Pmgc. एडवांस काफी अच्छा इनिशियल नॉक भी siya काफी wa ज्यादा energy te mi zosin ki chep na man wa Indian ten ka solo ईए की तरफ से वो कंटीन्यूअसली डैमेज Ozi te abang ni tao मैच से बाहर pening knock we tong mini knock tao wa सर्कल की तरफ बढ़ पाना Chang chang a ras pau chu ki bu ye chu. wa it khat in le ji le Treat a lot lo chu. वो एंट्री भी मिलने वाली फर्स्ट एड जरूर वहां पे अप्लाई की गई है इतना टाइम तो है कि वो आसानी से रिकवर कर सकते हैं लेकिन Individually assign ti pau bu ji chu. लेके जाना I dang lo. बहुत ज्यादा मुश्किल इस खिलाड़ी की इस फाइट को जीता So, गया mga इस che. मोमेंट को जीता गया लेकिन इसके बाद भी प्लेसमेंट पॉइंट की जब डिमांड team sang ana ma moment sim de pa ha ge le si den team Highlights na. Mere reel ti min thang एग्जीक्यूट हुआ नहीं 3 फ्रैग्स इस मैच से लेकर गए 25 के साथ ट्रू रिपर्स और 1v4 ga ball tem ne na top min ga ball pa sa min thang pa ne ta so tabang he चलिए कम से कम वो बॉटम Gel si si वो बॉटम पर रहेंगे 8 पॉइंट के साथ एनआरजी dok in na we ne thum ga se एलिमिनेट हो गए बॉटम ge ne kha sa mi thum an so अब गीक बची हुई है जो ट्रू रिपर्स को पछाड़ सकती है ट्विस्टेड माइंड्स वो 21 पॉइंट्स के साथ हैं ये दो टीम है जो शायद ट्रू रिपर्स को पछाड़ने की कोशिश जरूर करे बीजे तो खैर बहुत नीचे है 15 के साथ बोर 12 के साथ है और ट्विस्टेड माइंड उनके ऊपर वो प्रहार अभी भी चलता हुआ जोन के अंदर ट्विस्टेड माइंड तो वैसे भी नहीं पहुंचे हैं कोशिश रहेगी जोन के अंदर जाने की पर उससे पहले ही खिलाड़ी गिरा दिया गया और साइलस जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत है एमवीपीज की ट्रॉफीज बहुत है इस तरीके से वो निकलने आपको वैसे भी नहीं मिलते ब्लू जोन के बाहर step mine te lung se चलिए उनके पास एक एंगल तो देखिए दो टीम कंटीन्यूअसली करने वाले लॉर्ड प्लेसमेंट पॉइंट यहाँ से नहीं मिलने वाली है यहाँ से आगे जाने का भी रास्ता आपको मिलने वाला है नहीं तो ऐसे में करेंगे तो करेंगे क्या फिनिश पॉइंट भी वहाँ से देना नहीं चाहेंगे अपोनेंट को वो प्ले जोन के बाहर ही अपना फिनिश दे बैठेंगे बैंडेजेस अप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब फर्स्ट हिट की संख्या समाप्त हो चुकी है मिनी 14 के साथ वो ट्राई लेकिन ये पीक देना एंगल मतलब आई डोंट नो लॉर्ड आप चाहते तो एक फिनिश नहीं दे सकते थे लेकिन वो फिनिश पॉइंट भी रेग्नम कार्या के पास जाता हुआ और रेग्नम के लिए तो ये खुशखबरी है 42 पॉइंट्स उनके पास हो चुके हैं और WBG इस मुकाबले से बाहर है यानी कि अगर टॉप 8 के अंदर आती है रेग्नम तो वैसे भी एक पॉइंट उनको मिलेगा ही मिलेगा यानी कि अब गीक बची हुई है जो ट्रू रिपर्स को पीछे छोड़ सकती है बीजी वैसे भी बहुत नीचे 15 के साथ 9 पॉइंट का डिफरेंस है टॉप 2 वांग नो 10 पॉइंट का डिफरेंस है ट्रू रिपर्स में और बीजी में पर वहीं पर डीआरएक्स इस पर्टिकुलर मैच में अभी तक उन्होंने 4 पोजीशन के हम खेल लो डैमेज पड़ा से अजून पामा को डाउन किया है गत्ता जो कोशिश कर रहे थे कि आज के दिन पर ये को 50 के ऊपर लेकर जाए मुश्किलें बढ़ रही है पर इन्फ्लुएंस रेज वर्सेस ये की करीबी मामले में ये फाइट होने वाली है साकुरा जोकर का नहीं हिंते ना DRX ten से फट लेकिन नो डैमेज नहीं दे पाए पर फेडरल उनका वो दूसरा ग्रेनेड जोकर होंगे डाउन और लिल बॉय एचपी बहुत कम हो चुकी है उनकी ट्राई पे यहां पे अभी भी चल रहा है फाइट बैक करने की कोशिश में साकुरा पहले मैच में हाउ वन बैक देखने को मिला लेकिन उसके बाद से गायब हो गए थे लेकिन बाउंस बैक आप देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे की जा रही है NC2 उन्होंने ट्राई जरूर किया लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हो पाए और अब इकलौते खिलाड़ी लेकिन बैकलाइन से एक और थर्ड पार्टी आती हुई आईएनएफ इस फाइट को जीतने की कगार पे लगभग पहुंच गए मेजी लेकिन क्या इस फाइट को जीतने के बाद उन्हें आगे जाने का रास्ता मिलेगा चीने इनिशियल डैमेज लॉ सही वक्त में डाउन द ग्राउंड हुए 1 सेकंड का डिले होता तो मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाई जा सकती थी आईएनएफ उनका एलिमिनेशन जरूर हम देख पाएंगे बहुत जल्दी कि लॉ इकलौते खिलाड़ी और उनकी एचपी भी ज्यादा नहीं है फाइनल ग्रेनेड और इसी के साथ पहले और दूसरे स्थान वाली टीम इस मुकाबले से हो चुके हैं बाहर जी और गीक वो टीम है जो अभी तक खाता नहीं खोली है एक मन बंग उनके पास फ्रैग रहेगा पर रेग्नम वो डीआरएक्स को ऊपर सीधा स्लैम करते हुए वुल्फ ने वो पहला नॉक निकाला साइशे वो डाउन हो गए साइलेंस वो डाउन हो गए वुल्फ वो भी डाउन और रेग्नम फाइट करते हुए नी लाइक कोशिश करी है यूनबिन डाउन सो इजी वो डाउन कर दिए गए आईजीएल QXC अब आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे पर रेग्नम के आखिरी प्लेयर को तो देखिए वो कहां मौजूद है प्लेयर यानी कि रेग्नम
वो जोन के बाहर आएगी फाइट एग्जीक्यूट करने के लिए और अलायंस अब उनकी आएगी ये थर्ड पार्टी, वो सारे फ्रैग्स जाएंगे उनके खाते में। क्या अभी भी यहाँ पे बाउंस बैक करने के चांसेस हैं। M249 इस खिलाड़ी के पास मौका जरूर है, लेकिन डाउन द ग्राउंड फाइट में 2 खिलाड़ी मुश्किल जो नॉक थे उनका कंट्रीब्यूशन निकाला गया, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए मुश्किलें यहाँ पे जरूर बढ़ाई जा रही है। बैकलाइन से इनके ऊपर वो थर्ड पार्टीज आ रहे हैं। बस मैं देखना चाहूंगा कि वो नाम किनका है। एफएल वो वहाँ पे इंटरेस्टेड थे इस सर्कल ऑन बाल थर्ड पार्टी बॉल जो उन्होंने वहाँ पे फायदा उठाया, लेकिन सबका इन सब चीजों का फायदा डीआरएक्स को भी तो हुआ है ना। 6 फिनिशेस हो चुके हैं, एलिमिनेशन नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छी खबर कि उन प्लेसमेंट पॉइंट के लिए जा सकते हैं। हाँ मुश्किल जरूर है यहाँ से उस अगले स्टेज की तरफ बढ़ना, क्योंकि सर्कल के बाहर से DRX Abazon Sanghin Nokti Chana One SPI Game Sama और अभी आप So सोचें 23 global मिनट का गेम 7 Ball टीम man और और सांगना 18 चंगचंगा ही मो खिलाड़ी तो नो बचे हैं लॉबी के अंदर। और अभी ये छठा जोन है, 1 मिनट 40 सेकंड का समय लगेगा, पर गए भी तो कहाँ गए QXZ बॉस के सीधा नजरों में। DRX इसी के साथ उनका एलिमिनेशन, इस मैच में उन्होंने 6 फिनिशेस निकाले 44 के साथ। अब आप क्लोज देखिए कितना मैटर जा चुका है, 44, 45, 43। इस तरीके से 4, 5, 6 नंबर की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। पर अलायंस उनके आखिरी बचे हुए खिलाड़ी जिमी और उनके सामने फ्लैश के वो प्लेयर वेन, जिनका आज का दिन बहुत बढ़िया है और उन्होंने आवाज सुन ली है कि हाँ वहाँ पर वो खिलाड़ी मौजूद है। पर क्या जिमी को पता है कि प्लेयर वहाँ पर DRX in खेलते रहता है उनकी फाइट की शुरुआत हुई, क्या ये गाड़ी फंस गई थी, थोड़ा समय लग गया। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर आर्क के जो प्लेयर है वो पहले से ही मौजूद, और जिमी अभी तो वो जोन के अंदर पहुंच गए, पर फ्लैश के प्लेयर्स भी देख सकते हैं, आर्क के जो प्लेयर है वो भी उनको देख सकते हैं। Ay kolli Ngay last chance tinga umukha liao Kile to liao kai जोन के अंदर last chance जा top 2 इतनी मong काय दे 2 ही थे लो top 7 हुआ next से ले इंडिया क्लियर लो दी हुई बचते बचाते अपने आप को तो पीने में तंग जान दे एक अच्छे एरिया पे लेके आ चुके और यहाँ से हिलचीन दी है वाली है। व्हाट्स पार्टी दूसरी है अच्छे के ऊपर पोजीशन लॉक करूं, लेकिन ये व्हीकल ब्लास्ट का इंपैक्ट भी एलिमिनेशन के लिए काफी होने वाला है। बैकलाइन पे चले गए, वो कवर इतना ज्यादा बेहतर कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट पॉइंट यहाँ से वो अभी भी कमाना चाहते, लेकिन ये जो ग्रेनेड क्या उतना ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पे मिलने वाला है? जी नहीं, कुछ हद तक वो डिस्टेंस कम रहेगी। एक और ग्रेनेड फेंका गया, क्या ये कनेक्शन बना के जा पाएगा? चांसेस जरूर थे, लेकिन प्लेयर बहुत ज्यादा बैकलाइन पे और बिल्कुल सर्कल के सेंटर पे आके बैठे हुए हैं वो। जहाँ बड़ा जिमी है जिनको फायदा ज्यादा होगा। बीजी की गॉड स्पीड वो अभी भी डाउन है, रिवाइवल बाकी है। बीजी का बढ़िया ग्रेनेड आता हुआ और स्नोमिक्स वो डाउन हुए, पर बोर के जो प्लेयर हैं वो भी डाउन हो रहे हैं। एक्सो वो भी गए, स्नोमिक्स वो भी गए, गीक के अभी भी 2 खिलाड़ी डाउन है, रिवाइवल होना बाकी रहेगा। पर गीक वो जोन के बाहर, बोर के अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं हैवलिक। देखते हैं कि अननोन क्या उन्हें स्पॉट कर सकते हैं। पर बीजी इस मैच में उन्होंने वो 6 फ्रैग्स निकाले और अगर यहाँ पर भी एलिमिनेट होते हैं तो 2 जो प्लेसमेंट पॉइंट है वो भी मिलने वाला है अलायंस के जिमी। चलिए उनका भी एलिमिनेशन हुआ और आर्क, ये मैच आर्क के लिए भी बढ़िया है। रावण 8 टोटल फ्रैग्स निकाल चुकी है वो टीम। अगर सेकंड के प्रोस्पेक्टिव से अगर थोड़ी सी कन्वर्सेशन इंडिया टीम ऑन लाइट अच्छे से ले टारगेट करना चाह रहे हैं, आसान फॉर श्योर नहीं होने वाला, लेकिन कोशिश तो यहाँ से जरूर करना चाहेंगे। 5 टीम हमारे आंखों के सामने, अननोन इन्हें कहीं ना कहीं अंदाजा तो मैच आवाज दिया टेच मोठी है करना चाह रहे कि जब वो एडवांस करे, जब पूरा नोम ता फाइट चाहिए थी बार तो पीछे से शॉट से परेशान ना करे। फ्लैश आगे आ चुके हैं, लेकिन क्या उन्हें पता है कि मैंने उनके आंखों के सामने चलिए बहुत ज्यादा देर बट शॉट हल्का सा वो पिक्सल और वो अपने आप को कवर में लेके जाने में हुए कामयाब। ग्रेनेड इस खिलाड़ी के पास नहीं है, अगर एक ग्रेनेड होता तो उस खिलाड़ी को डाउन करके भी जा सकते थे। यहाँ पर बोर तो देख लिया है वो जो आखिरी खिलाड़ी है और बीजी कोशिश करेगी कि यही बोल पा हो अननोन उनकी वेपन वहां पर फंस गई या जॉयस्टिक अटक गया यार, वहीं खड़ा रह गया और बीजी जो ये फाइट अननोन बहुत आसानी से सिंगल आके कोई हार गए। वो चिकन के पीओवी से भी तो बात कीजिए, मतलब बीजी लग रहा था कि सबसे बेहतर होने वाले नंबर्स के साथ सर्कल का एडवांटेज भी जो चल रहा था, लेकिन अब एक खिलाड़ी को गंवाने के बाद कॉस्ट तो करेगा जब वो थोड़े से आगे बढ़ेंगे, जब सर्कल का अगला शिफ्ट आएगा। एक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, आर्क उनकी आंखों के सामने बचे हुए 2 खिलाड़ी। हार्ड बॉय वो बिल्कुल बैकलाइन में खेल रहे हैं ताकि वो अच्छा कवर फायर दे के जा सके। इन्हें जरूर लग रहा है कि उस हाइट में कोई है, बट उस एरिया पे कोई है नहीं। जो भी है
दूसरी ओर और इसी कंफ्यूजन में थोड़ा डिले हो सकता है। सर्कल का अगला स्टेप एक बार फिर से सेंट्रल साइड को फेवर करता हुआ, तो जितनी भी एजेस की टीम थी अब उन्हें आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है। और गीक के पास थोड़ा हिस्सा अभी भी है, क्योंकि वो जो कूप उनके पास है वो उनको जोन के अंदर पहुंचा गया। पर आग के प्लेयर जो 8 टोटल फ्रैग्स के साथ बैठे हैं, अगर उनके पास सही मात्रा में ग्रेनेड्स हुए तो गीक को परेशान कर सकते हैं। हालांकि गीक ऑलरेडी 25 पॉइंट्स निकाल चुके हैं। अगर यहाँ पर भी एलिमिनेट होते हैं तो 3 प्लेसमेंट पॉइंट उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि वो गोल का आखिरी प्लेयर अभी भी कैसे जिंदा है। उनको तो सबने स्पॉट किया था, वो वहां पर बचे मेरे हुए पास हैं। स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं ठीक लोग उन्होंने काफी ज्यादा मिस करे। अभी भी 2 ग्रेनेड्स हैं, पर गॉड स्पीड 600 का डैमेज इस पर्टिकुलर मैच के अंदर पूरा मैगजीन चाहिए खा लो चंखा फ्रैग जो उनके खाते में गया। काफी ज्यादा बेहतर यहाँ पे उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा और अपने नाम करके जा सके। बट अभी भी बैकलाइन पे वो कुछ ग्रेनेड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कब से ये खिलाड़ी सरवाइव कर रहे हैं इस मैच में। गॉड स्पीड वो भी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है, बट उन्हें अभी तक पता चला नहीं है, जो कि काफी अच्छी खबर। बट अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। प्ले जोन आपको मजबूर कर रहा है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़े। विन के पोजीशन से अगर आप वाकिफ है तो आपके लिए बेहतर, नहीं तो सरप्राइज सीधा आपको एलिमिनेट करने के लिए काफी रहने वाला है। चलिए वो ओवर की भिड़ंत हुई जहाँ पे विन ने कोई भी गलती नहीं की। फ्लैश के पास एक और फिनिश पॉइंट जाता हुआ, अब टॉप 4 के बीच में कहानी बची हुई है उस चिकन डिनर के लिए। जहाँ पर बीजी की कितनी बड़ी वापसी रावण, कहाँ ये टीम कितना नीचे थी, 14 या 12 पॉइंट के साथ थे, और इस मैच में ये जो 7 फ्रैग्स उन्होंने निकाले हैं। विन कंडीशंस देखे जाएं तो ठीक के विन कंडीशंस क्यों नहीं है भाई। 26, 30, 2.2%, 2.2%। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अकेला खिलाड़ी बचा हुआ है विन। आप ऐड करके बताइए रावण, कितना परसेंट चांसेस हैं कि गीक चिकन डिनर लेकर जाएगी। गीक यहाँ से 56% चांस है कि चिकन डिनर लेके जा सकते हैं। बट लेट्स सी, क्योंकि डाउन द ग्राउंड से हाइट की तरफ जाने की जरूरत पड़ने वाली है, तो फॉर श्योर वो थोड़ा डिफिकल्ट इनके लिए होने वाला है। अगर वो हाइट ना होता तो फिर चांसेस बन सकते थे। इनफैक्ट व्हेन वो एक सरप्राइज एंगल लेके इंतजार करेंगे। गीक धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश में लग चुके हैं, लेकिन आर्क उन्हें जैसे ही पता चलेगा, वो फुटस्टेप मिलते ही फिर वो अटैक करने की शुरुआत करेंगे, ताकि वो उस हाइट के एडवांटेज में अपने आप को लेके ना आ पाए। बट वेन फाइनली वो एंगल बनाएंगे, स्प्रे करके अपनी पोजीशन रिवील कर दी है। गॉड स्पीड वो भी थर्ड पार्टी कर सकते हैं, थर्ड पार्टी की भी गई, और यही वो चांसेस इनके हाथ से छूटते हुए, क्योंकि डाउन द ग्राउंड से हाइट की तरफ बढ़ना कभी भी आसान नहीं होने वाला है। बट अच्छी बात है को वहाँ पे रिवाइव मिल सकता है, बट ये ग्रेनेड बहुत ज्यादा क्लोज था। कुछ हद तक अगर वो इम्पैक्ट बनता तो वो कंफर्मेशन के लिए काफी होने वाली थी। बट अपने आप को भी बचाना है, अपनी टीममेट को रिवाइव भी देना है, और साथ ही साथ एंगल में आने से रोकना है। आर्क उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी है ग्रेनेड के साथ। के ऊपर लग तो रहा है कि इम्पैक्ट क्रिएट हमें जरूर देखने को मिलेगा। मैं मानता हूँ अगर बीजी बस शांति से बैठी भी रहे ना तो भी ये चिकन डिनर लेकर जाएगी, क्योंकि सेंट्रल हिस्सा उनके पास थोड़ा ज्यादा है। गॉड स्पीड क्या कर रहे हैं वो, अपने प्लेयर को अभी तक उन्होंने रिवाइवल दिया भी नहीं है, और याका गो डाउन हो गए। और बीजी आना चाहिए था, वो चिकन को मिस कर गए, और बीजी वो एलिमिनेट हो गए इस मैच से। ये थोड़ा एक अलग जो गेम है वो अभी तक देखने को मिला है। पर हार्ड बॉय कैसे इनको करेंगे डाउन, सामने से आता हुआ ग्रेनेड, और गीक के दोनों प्लेयर डाउन। 방초 바임로 지노야 कोना पुष्टो चिल्ली थी लगी मैच में बना हुआ चिकन डिनर एंड ओवरऑल बीजी तेशन चिकन ड्यू तो अच्छा बीजी ते चिकन वेट आउट है ना खाते नहीं कि फाइट से ngáo है ना थर्ड पार्टी वो तो इजी था cũng sụ vạ vào lên over commit ta ta cho lại lại chứ. Bye bye, good night. See you. Bye. Chat, make sure to hit the like and subscribe button.